ठीक है, यूट्यूब पर ऑडियो भी चेक कर ले एक बार। चेक कर। हेडफोन से ही है, इसी से ऑडियो।
विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम भारत की वैज्ञानिक विरासत, प्रौद्योगिकी, कौशल को प्रदर्शित करने के साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में समर्थन खोजने की दिशा में एक प्रयास है। विज्ञान के इस महाआयोजन का समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारतीय स्वायत्त संगठन विज्ञान और भारत सरकार की दूरदर्शन विज्ञान और फरवरी तक चलने वाले विज्ञान सर्वत्र जितने के तहत 75 स्थानों पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में एक मेगा एक्सपो और पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। 23 फरवरी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतिहास से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 24 फरवरी को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 75 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के तहत ऐसे प्रमुख नवाचार या आविष्कार को याद किया जाएगा जिसने वैश्विक विज्ञान या भारत के विकास में अपनी छाप छोड़ी है। 25 फरवरी को स्वदेशी और परंपरागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचार और अभी छुट्टी में है उसके सामने आसाम में ठीक है विशेष करने वाले पारंपरिक ज्ञान प्रणाली पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 26 फरवरी को बदलते भारत के और साहित्य से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 27 फरवरी को भविष्य का भारत भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अगले 25 वर्ष के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 28 फरवरी को इस विज्ञान सप्ताह का समापन समारोह विज्ञान भवन में आयोजित होगा। कार्यक्रम की जानकारी www.vigyanpujyate.in पर उपलब्ध है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत माईगॉव पोर्टल के साथ मिलकर निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, कविता लेखन, पोस्टर, लघु फिल्म और ऑनलाइन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्विज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता चलाई गई थी। इन प्रतियोगिताओं में देश भर से बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एक प्रयास है 75 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का जश्न मनाकर युवाओं को प्रेरित करने का, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिबद्धता को मजबूत करने का, अगले 25 वर्ष के भविष्य की रणनीति तय कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयासों का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक संगठनों सहित हर भारतीय को उस दिशा में अग्रसर करने का। विज्ञान के इस महाआयोजन में शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भागीदार बन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित होने के इस अवसर का लाभ उठाएं और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम से जुड़ें। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय वैज्ञानिक संस्थाएं एवं विभाग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए विभिन्न मंत्रालयों कैमरा दीजिए।
22 फरवरी को किया जा रहा है। कैमरा ऑन कर दीजिए सर। एक चीज बता, वहाँ लाइट मार दे ऊपर, रिफ्लेक्ट खराब हो जाएगा। कहाँ मारे? एलईडी पे इस साइड से कॉर्नर से मारना चाहिए। इस साइड से एक ही ना मारेंगे, इस साइड से तो मारिए रहे, दोनों साइड से नहीं उसको बंद कर दीजिए, एलईडी तो मजे नहीं आएगा भाई साहब। प्रणाम सर। A very good morning and beautiful morning to all of you present here. I welcome you all on the second day of ongoing Science Week, Vigyan Sarvatra Pujyate. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। आज उद्घाटन सत्र के बाद आज दोसर दिन विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम। आई हमरा सब संग अपन बहुमूल्य संवाद स्थापित करबाक लेल उपस्थित छथि डॉक्टर अजय कुमार, जे वैज्ञानिक भी छथि RIMS ICMR पटना से अयलथि है। ई हमरा लोकनि के रोल ऑफ ICMR इन नेशनल हेल्थ सर्विस अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में ICMR के भूमिका पर अपन विचार हमरा सब संगे साझा करता। I welcome you, sir. I welcome you, sir, on the stage. Please join us. Dr. Ajay Kumar. We are fortunate enough to have with us Dr. Ajay Kumar, scientist B, RIMS ICMR Patna. Please join us, sir, on the stage. Please give him a big hand. हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी सर स्वागत कर रहे छथिन डॉक्टर अजय कुमार के। अजय कुमार ICMR पटना से अयलथि है और अपन आई सत्र छै अपन बहुमूल्य विचार से हमरा लोकनि के साझा करता। अपने सबके बहुत बहुत प्रणाम हमरा तरफ से। मिथिला की धरती पर हम एलो हन और भाषा में कनी अगर त्रुटि हुई तो क्षमा भी प्राप्त छी। हमें ICMR के भारत के सबसे बड़ा स्वास्थ्य रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। पटना में RMRIMS पटना के राजेंद्र प्रसाद के नाम से इंस्टीट्यूट खुलल गए, तो ओते हम कार्यरत छिए। और आज के जो टॉपिक है हमरा बतबै छै कि भारत में ICMR के की योगदान रहल, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में बहुत लोग हमें जाने में ICMR RT-PCR रिसर्च क्या रहल छै, लेकिन ICMR के आज नया सिस्टम नहीं, बहुत पुराना 100 साल से ऊपर भए गेलै। पिछला 75 साल में की योगदान रहल है वह हमरा के बात करे छै या सुने। देश के सबसे बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और बिहार में वह ICMR के और इंस्टीट्यूट है। ICMR को 20 से ज्यादा इंस्टीट्यूट है पूरा देश में। बिहार में एक लौता इंस्टीट्यूट है पटना में कालाजार पर रिसर्च करे। कालाजार में बहुत मतलब बिहार के लिए अभिशाप बीमारी है, पेशेंट बहुत मतलब अगर इलाज नहीं होने तो मर
लेकिन ओकरा ले आईसीएमआर बहुत बड़ा अपन योगदान दल के बिहार में काला जाल खत्म करे के, तो बहुत सारी बात है, हम एक एक क्या करते चर्चा कर। हमारे भाई के बोले के मुद्दा यह है कि आईसीएमआर के योगदान की रहे पूरा भारत के स्वास्थ्य संगठन के मजबूत करे के। सबसे पहले हम अपने के जानकारी दें कि आईसीएमआर 100 साल से पुराना संस्थान है। 100 साल पहले 1911 में स्थापना हुई और तहिया से निरंतर अपन काम किया रहा है देश के स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करे। टोटल 26 को नेशनल इंस्टीट्यूट है, जबकि आईसीएमआर आरएमआरआईएमएस पटना बिहार के इकलौता इंस्टीट्यूट है। अपने गोरखपुर में है, एनआईवी पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अभी जे कोरोना के जो वैक्सीन बनले, कोरोना के वैक्सीन जो भारत में जो बनले, भारत के साइंटिस्ट के बने के कोरोना के वैक्सीन, वो वैक्सीन जो रहे भारत के वैज्ञानिक बने के और आईसीएमआर के, और आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे वायरोलॉजी के रिसर्च इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक के साथ कोलैबोरेशन कैंप बने। मतलब अभी ओकर योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार में तो आरएमआरआई छबे करे कालाजार पर रिसर्च करेले, तो ये सब बहुत दिन से देश के स्वास्थ्य सेवा में मदद कर रहा है। तो मेजर एकर एक्टिविटीज आईसीएमआर के बीच है कि देश में काम क्या रहा है, ओकरा तनी हम प्रकाश डाल दै छी। तो जते भी नेशनल प्रोग्राम होय छै, चाहे कैंसर के होय, चाहे टीबी के होय, चाहे एचआईवी के होय, चाहे जे भी बीमारी के, सब में के पॉलिसी जे छै आईसीएमआर बनबै छै। आईसीएमआर के पॉलिसी मेकर के बात सुनल जाय छै भारत सरकार। ओकर बाद छै जते भी न्यूट्रिशनल डाटा आबै छै, कुपोषण के इंडिया में कते कुपोषण के रेट छै, कोन क्षेत्र खाइ चाहिए, कते एनीमिया छै, कते आयरन डेफिशिएंसी छै, जते भी सोसाइटी में सब आईसीएमआर डाटा बनबै छै और भारत सरकार के दै छै। ओकर बाद जते भी रिसर्च फंड होय छै मेडिकल कॉलेज में, जेना अपने के दरभंगा मेडिकल कॉलेज भेल, तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डीआरडीएल वायरस लेबोरेटरी के नेटवर्क छै पूरा, एतो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आईसीएमआर सेटअप केलकै। जते भी मेडिकल कॉलेज है उस सब जगह पर वायरस जांच के यूनिट आईसीएमआर बनते हैं, जे कि अभी कोरोना में बहुत यूज भेले। यह बीच में जना अभी जो हमने साइंस के टीम के रहे हैं, पिछला विगत 75 साल में की खोज खबर भेले आईसीएमआर के द्वारा। यह देखे छै जेना 1947 से 57 के बीच में की भेले, कोई टाइम में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस सर्वे है। वैसे पहले सर्वे दे रहे कि पूरा देश में कते टीबी के मरीज है, कौन दवाई चल रहा है, की भए रहल छै, सर्च पहले 1952 में आईसीएमआर स्टार्ट करके भारत सरकार के परमिशन रहे। वैसे की भेले डाटा मिलले कि देश में कते ट्यूबरक्लोसिस के मरीज छै, यानी टीबी अभी भी की छै बहुत बड़ा समस्या छै पूरा दुनिया। भारत के कहल जाए कैपिटल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पूरा देश दुनिया में जते टीबी के मरीज है वही में कम से कम 25% भारत में है। तो ओकर डाटा आईसीएमआर मतलब निकाल लगे 1955 में से अभी तक भी सर्वे चल रहा है। फिर ब्लड ग्रुप हमें जाने छिए ए बी सी डी, ए ब्लड ग्रुप में छै, बी ब्लड ग्रुप में छै, या ए बी होय छै, ओ होय छै। लेकिन आईसीएमआर 1952 में बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज की, जे स्पेशली मुंबई या साउथ इंडियन रीजन में पाई जाए छै। तो यो बड़ा योगदान है खोज में। और अपने के याद है कि 62 के टाइम में कोलेरा की महामारी है, बिहारों का असर भेले रहा, बंगाल के तो बहुत असर भेले रहा। तो कोलेरा पर रिसर्च करे आईसीएमआर 1962 के टाइम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंटेरिक डिजीज, ये कोई आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट है जो कोलेरे पर काम करे छै। बंगाल में कलकत्ता में
स्थापित करे मतलब जे एरिया के जे बीमारी छै वो एरिया के अपन संस्थान खोल दल छै वहां के लोग के रिसर्च भी होते और वहां के लोग के इलाज भी होते। मेरा बिहार के काला जाम है मेन बीमारी पहले के टाइम में ओकरा ले रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में खोल दल के हर जगह पर लोग पेशेंट के आए छै वजह से ओकर इलाज हो छै। नहीं थे 62 में काला कोलेरा के इंस्टीट्यूट वजह खोल दल के। अगर 1964 में डॉट्स जे टीबी के मरीज के इलाज चले छै डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के तो 1964 में भारत सरकार के प्रपोजल दल के आईसीएमआर ई तरीका से टीबी के इलाज कर सके छी वो प्रोग्राम में ले। एकर बाद इंसेफ्लाइटिस दिमागी जो बुखार जो होय छै अभी मुजफ्फरपुर में केस हमेशा आबैत रहे छै तो ओकरो ले जे चांदीपुरा वायरस के रहे 1967 में पर खोज करल गेलै त ई रहे 1970 तक के कर खोज रहे। फिर 70 से 80 के बीच में की भेलै ओकरा बारे में भी छै ओइ टाइम में भारत में वाइटर के केस ज्यादा रहे गेंगा बीमारी बहुत हुई रहे तो बहुत लोग को पता नहीं रहे कौन चीज के कमी के कारण होय छै। अब हमें एडवर्टाइजमेंट में देखे छिए कि आयोडीन युक्त नमक खाना है नमक में आयोडीन कते चाहिए की मात्रा चाहिए 1972 और 73 के टाइम में आईसीएमआर ही बदलते भारत सरकार के ओइ से की भेलै वाइटर के जे केस छै गेना बीमारी के केस छै बहुत कम भए गेल पूरा देश में जो एक बहुत बड़ी समस्या रहे। फिर डिहाइड्रेशन हो रहे जना कोलेरा भेले या हैजा भेले कुछो भेले कि वाटर लॉस बॉडी तभी हमें ओआरएस पिए छिए ओआरएस के घोल के बारे में प्रपोजल 1975 में आईसीएमआर निकल के भारत सरकार ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी उसको बोले छी ओआरटी अब है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भए गेलै ओआरएस घोल के कंपोजिशन में कते मात्रा में आयन रहते कते मात्रा में ओकर कंपोजिशन रहते सब आईसीएमआर बदल के 1975 से चीज मतलब भारत सरकार ओकरा इम्प्लीमेंट करके सब जगह अभी देखियो सर्दी गर्मी के टाइम में कोनो लू लगे छै या कुछ पेट खराब हो छै तो ओआरएस के घोल चलबै छै ये आईसीएमआर के देन रहे भारत सरकार के। फिर वह दरमियान बहुत और भी इंस्टीट्यूट खोललकै जना मलेरिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट छै दिल्ली में नया इंस्टीट्यूट भी खोल रहल छै वह बीच में लेप्रोसी जे छै कुष्ठ रोग के इंस्टीट्यूट छै आगरा में छै पूरे भारत में जते भी कुष्ठ रोग के बीमारी के दवाई या कोई पॉलिसी चले छै वो आगरा में छै वो बोले जाय ओकर सब पॉलिसी आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट छै नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च मलेरिया के जते भी शोध होय छै भारत में आईसीएमआर के द्वारा ओकर दिल्ली में संस्थान छै मलेरिया भी देश के बहुत बड़ा बीमारी छै वो ऊपर रिसर्च भए रहल छै 70 से 80 के बीच के अगर आईसीएमआर का योगदान फिर 80 से 90 के बीच में भी आईसीएमआर का योगदान की रहेगा मेजर में सबसे बड़ा योगदान दे रहे अपन बिहार में 1981 ईस्वी में राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये हमारा इंस्टीट्यूट से जहां पर कार्यरत है 1981 में भारत सरकार के द्वारा आईसीएमआर के कहला पर वजह स्थापित करल गई है कि बिहार रीजन में काला जाल के बहुत बड़ा समस्या है और वही टाइम में ऊपर बहुत दवाई नहीं रहे थे आपका इलाज नहीं हो रहे थे बहुत टाइम की कमी रहे वो इसको स्पेशल ओकरा ले इंस्टीट्यूट खोल देल गेलै बिहार के जनता और बिहार की सरकार या बिहार के जे भी छै युवा वर्ग के सब रोजगार और ओकर इलाज सब चल रहा है तो आईसीएमआर में योगदान ओकर बाद 1986 में एचआईवी इन्फेक्शन भारत में सबसे पहले जहां मतलब पायल गेलै चेन्नई एरिया में साउथ इंडिया में वो एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में आईसीएमआर डाटा दल के भारत सरकार ओकर बाद भारत सरकार भी जान ले कि ओइ हिसाब से एचआईवी के कते एड्स के कते मरीज छै ओइ ओकरा ले एक अलग इंस्टीट्यूट भी खोल देल
नेशनल रिसर्च एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट छै नारी के पूनम छै वो एड्स पे काम करे छै मतलब या की देख रहल छियै कि हर बीमारी के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट बनि रहल छै स्पेसिफिक वजह कार्य करे आईसीएमआर का मतलब सही में बहुत बड़ा योगदान छै भारत के स्वास्थ्य सेवा के मजबूत करे में एकरा कहल भी जाय छै कि एनआईएच ऑफ यूएसए अमेरिका के एनआईएच छै नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जहां सब प्रोग्राम देखे छै पॉलिसी के आईसीएमआर इंडिया के एनआईएच छै कोई भी मेडिकल कॉलेज में रिसर्च होता है या कहीं भी रिसर्च होता है कोई भी गवर्नमेंट के प्लान में इंप्लीमेंट कुछ लागू होते हैं तो आईसीएमआर के सजेशन से जरूर ओकर बाद ह्यूमन रिसोर्स की टीचिंग में भी मदद करे छै जेना जेआरएफ छै एसआरएफ छै पीएचडी करवावे छै हमहु आईसीएमआर के सजेशन से पीएचडी के लिए एचडी होय छै कि साइंटिस्ट भी डेवलप करे छै जे एमएससी पीएचडी के लिए विज्ञान से ओकरा कोर्स भी लावे छै ओकरा फेलोशिप दै छै छात्रवृत्ति दै छै एसडी होय छै विद्यार्थी लोग के मनोबल रहे छै कि रिसर्च करबै रिसर्च में इंटरेस्ट आवे छै योगदान दोनों तरह से भए रहल छै कि साइंटिफिक कम्युनिटी के भी बढ़ा रहल छै और बीमारी के भी घटा रहल छै वह कड़ी में एक और इंस्टीट्यूट बनल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये हैदराबाद में छै न्यूट्रिशन मतलब जे भी हमें खान पान में कमी से की होय छै ओकरा अलग न्यूट्रिशन के इंस्टीट्यूट बनल है वह इंस्टीट्यूट में बतलकै कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो छै आयरन के कमी से अब की चीज खाए चाहिए के कारण एनीमिया हमरा नहीं होता है तो वो जो पता चलले ओकर बाद आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आयोडीन के कमी से शरीर में की रोग होय छै 1984 1994 में तो वो जो बताइल गेलै न्यूट्रिशन के अलग इंस्टीट्यूट खोल लेलकै शोध कार्य सब बदले होते ओइ चीज के लिए ओकर बाद एक और इंस्टीट्यूट खोललकै 1999 में एपिडेमियोलॉजी जते भी सांख्यिकी कार्य होते जते भी मतलब डायरेक्ट मरीज से जुड़ल कार्य छै ओकर डाटा उठाबै छै ओकर डाटा के स्टोर करै छै कियाकि बहुत तरह के इंफॉर्मेशन होय छै सब आदमी एक जगह नहीं स्टोर कय सकै छै ओकरा अलग इंस्टीट्यूट खोल लेलकै जते भी नेशनल सर्वे होते कोई भी चीज ओकर सारा इंफॉर्मेशन सारा डाटा बैंक जे छै ओते रहते तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी कोई दिन कुछ चेन्नई में छै मतलब हर चीज के की कह देते अलग अलग कह देते हर विभाग का अलग और जो चीज की इंफॉर्मेशन मिले चाहिए प्रोजेक्ट चाहिए डायरेक्ट है विभाग में जैसे वजह से इंफॉर्मेशन गेन किया मतलब अपना आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत सरकार और आईसीएमआर में बहुत बड़ा योगदान है वह कड़ी में अगर जब 2000 अले 2000 से पहले तो रहिए अपना दोसर सेंचुरी में के बाद आई गई 20वीं सेंचुरी में कालाजार के बिहार में जो कालाजार है पहले बहुत हार्ड ओकर ट्रीटमेंट रहे बहुत ओकरा 14 दिन के सुइया लगवावे पड़े रहे ये एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन आवे छै और बहुत नुकसानदायक छै मरीज को ले बहुत तरह के दिक्कत है तो ओइ में ओरल ड्रग जे टैबलेट की तरह खाए के पहला दवाई एले 2002 में कालाजार मेल्टीफोसिन नाम के दवाई है टैबलेट की तरह लोग खाई सके छै कालाजार का खत्म भए नहीं छै पहला मतलब आईसीएमआर ही भारत सरकार के दलके ओकरा फिर प्लान में भारत सरकार इंप्लीमेंट कर देलकै आजकल जे भी डॉक्टर छै मेल्टीफोसिन लिखे छै टैबलेट की तरह खाई छै नहीं तो पहले बहुत दिक्कत हो रही 14 दिन के हॉस्पिटल में रहे 14 दिन पर डे इंजेक्शन लग वह कड़ी में भी भले कि 2003 में पोलियो पे रिसर्च भेले आ पोलियो के जे फ्री इंडिया के जे टारगेट है भारत सरकार 2003 में लगभग पोलियो खत्म भए गेलै इंडिया से और बहुत बड़ा योगदान है आईसीएमआर के और अभी हाल फिलहाल 2009 में टीबी के जांच करे ले ट्रूनेट मशीन भी बनल के आईसीएमआर लेकिन हर पीएचसी जते भी ब्लॉक लेवल पे पीएचसी छै पीएचसी में अपने विजिट करे होबे तो बहुत तरह के मशीन नहीं रहे छै कुछो नहीं रहे छै ओते सुविधा नहीं रहे छै लेकिन आब जे छै ट्रूनेट एक मशीन लेल के आईसीएमआर
की होय छै कि सस्ता भी होय छै, तुरंत जांच रहे छै टीबी के, नहीं पहले टीबी की जांच करे बड़ा-बड़ा लैब या बड़ा-बड़ा जगह जाय होय रहे, जे कॉस्टली भी लगे रहे, मरीज के टाइम भी लगे रिपोर्ट आवे में। अब हर पीएचसी में सेट कय देलकै मशीन, आ WHO जे विश्व स्वास्थ्य संगठन छै ओकरा से मान्यता प्राप्त मशीन छै। और अभी कोरोना में भी यूज भेले ट्रूनेट से, ट्रूनेट पीसीआर छै, आरटीपीसीआर जहां-जहां नहीं रहे है तो ट्रूनेट पीसीआर से रिजल्ट कर त जांच के वैल्यू बढ़ गेलै, संख्या बढ़, जते जांच होते ओते अच्छा छै, तो उहो में आईसीएमआर के योगदान रहे। फिर 2010 के बाद के की स्टेटस है आईसीएमआर के, जते भी नया इन्फेक्शन एले, जेना अपने के ओरल इन्फेक्शन के दूर करे ले, जेना भी निपाह वायरस या फिर लीची वाला मुजफ्फरपुर में जावे है, ऊपरो आईसीएमआर के टीम आवे छै, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से, वो जो अपन सब शोध कार्य करे छै। ओकरा में की केलकै कि भारत में या एशिया रीजन में बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब जे होय छै, बायोसेफ्टी लैब, बायोसेफ्टी में 3-4 ग्रेड होय छै, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो पूरा एशिया रीजन में मतलब सबसे पहले पुणे में डेवलप करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी 2013 में BSL-4 कैटेगरी में सबसे सोफिस्टिकेटेड लैब है। वायरस के एक तो वायरस होना तो खतरनाक होय छै, आ ओकरो में ओकरा अगर ढंग से लैबोरेटरी नहीं होते रहते, बाहर सैंपल बन देते, इन्फेक्शन और फैल जाए। ओकरा ले स्पेशल बायोसेफ्टी लेवल 4 टाइप के लैब जे कि अपने के अमेरिका और यूरोप कंट्री में मिलल, वो भारत में पहली बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थापित करल गेलै। और उहे साल में 2013 में जेनवैक वैक्सीन छै इंसेफ्लाइटिस के, जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बच्चा के देल जाय छै वैक्सीन, भारतीय निर्माण के, मतलब भारतीय में बनल गेल, भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा आईसीएमआर के द्वारा खोज करल गेलै। वो 2013 में खोज भेलै, मतलब प्लान में भारत सरकार के प्लान बनायल गेलै। अब 2013 में ही भेलै, सरकार के पॉलिसी जे छै आईसीएमआर जे भी कहै छै सरकार के सुनै छै, लेकिन अगर मतलब अभी तक एते योगदान छै, अपने पहले कह दो कि 100 साल के बड़ा संस्था छै, एकर उम्र 100 साल से बेसी भए गेल। अच्छा, नेशनल वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी (VRDL) पूरा देश में चालू छै। जेना अपने करो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में छै VRDL के लेबोरेटरी छै, जो वायरस के पूरा जांच आईसीएमआर ही दलके, पटना एम्स में आईसीएमआर दलके, आरएमआरआई आईसीएमआर, मतलब सब जगह वायरस लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी सब जगह जाते हैं। कम से कम 30-35 को नेटवर्क है पूरा देश में, जबकि बिहार में 4-5 जगह, मुजफ्फरपुर में, गया में है, दरभंगा डीएमसीएच में है, सब आईसीएमआर के देश छै। ओकर बाद छै आईसीएमआर अपन एक रिसर्च जर्नल भी निकालै छै, जते वैज्ञानिक भेलखिन या जते विद्यार्थी भेलै जे रिसर्च करै छै वो अपन शोध कार्य छापै छै कोनो जर्नल में। तो ओनाहिते आईसीएमआर भी अपन एक जर्नल निकालने छै, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इहो बहुत पुराना जर्नल छै, एकरो बहुत मान्यता प्राप्त जर्नल छै, एकरा में रिसर्च छपै छै पर वैल्यू, मतलब लोग बुझे छै कि अच्छा कार्य भेलै, वो जर्नल निकालने छै। ई सब जे योगदान छै जे मतलब कहे के मतलब छै कि जे भारत के मजबूत बनबै छै वर्ल्ड के हेल्थ सोसाइटी, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, कारण पड़े छै हेल्दी अगर कंट्री रहते, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, तो ओकरा में योगदान आईसीएमआर के जरूर छै। और अभी हाल फिलहाल में कोरोना में तो सब लोग आईसीएमआर के पहले तो बहुत कम जाने रियल में, हम क्या हमें आईसीएमआर पिछला 10 साल से जते भी बिहार में सर्वे के सॉरी आईसीएमआर की छै, आरएमआरआई की छै, लेकिन कोरोना में एक हमें हाथ पकड़ के सब जगह पूरा बिहार में जते भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है हमारे पास ट्रेनिंग लैब के आरटीपीसीआर के, आरटीपीसीआर सब जब को जानबे नहीं करे आरटीपीसीआर की होय छै। कोरोना में मैनेजमेंट जे छै, कोविड-19 में मैनेजमेंट पूरा देश के मतलब एक ड्राइवर छै, ड्राइवर की तरह आईसीएमआर संभाल लके, नहीं तो
मैंने हमें फेल भए जाइ छियै ऐसन भयंकर बीमारी रहे पर डे 10 लाख टेस्ट पे रहे आईसीएमआर अचीव रिकॉर्ड पर 10 लाख टेस्टिंग पर डे करे रहे किया कि 38 को आईसीएमआर के संस्थान छे सब संस्थान में अगर होय रहे जांच तो ओहि हिसाब से टेस्ट वॉल्यूम बढ़ गेलै ओकर बाद 1500 अलग प्राइवेट लैब के भी मान्यता दे देलकै पहले प्राइवेट लैब नहीं रहे अपने को मालूम है पहले सरकारी विभाग की जांच होय हुआ धीरे धीरे प्राइवेट लैब के सेटअप मिल तो कोरोना के मैनेजमेंट में आईसीएमआर को बहुत बड़ा योगदान है सबसे बड़ा योगदान जो अपने के वैक्सीन लगल भारत बायोटेक के सब वैक्सीन तो लगे नहीं हो गए भारत बायोटेक के जो वैक्सीन रहे कोवैक्सीन ओकर निर्माण में जड़ में आईसीएमआर ही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में जो है खोजे पड़ी वायरस के की करल गेलै कल्चर करल गेलै भारत में पहला बार कल्चर कोरोना वायरस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेलै क्योंकि ओजे बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब है वो लैब कहीं और छबे नहीं करे तो वह लैब में कल्चर तैयार करल गेलै और प्राइवेट कंपनी जो है भारत बायोटेक ओकरा साथ सरकार के समझौता कए के वैक्सीन तैयार करल वह वैक्सीन अभी भारत के गर्व है इंडिजीनियस मतलब अपन देश में अपन बनाए वैक्सीन पूरा दुनिया के भी डल गए तो ओकरा योगदान में आईसीएमआर बहुत बड़ा योगदान रहले आज दुनिया के मंच पे भारत के सीना टाइम के बोले छे कि हमर वैक्सीन लग रहल छै हमर वैक्सीन अफ्रीका के ले हमर वैक्सीन कनाडा के ले हमर वैक्सीन बहुत जगह के एमे आईसीएमआर के योगदान छै ओकर बाद इहो निर्धारित कल कते कम समय में वैक्सीन सब जगह जाए आई वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में कोई दवाई मार्केट में नहीं ले कोई वैक्सीन नहीं ले अपने तो पढ़वे विज्ञान के विद्यार्थी कोई वैक्सीन के निर्माण में कम से कम 5 से 10 साल लगे रिसर्च करे में पूरा पेशेंट पे ट्रायल करे में लेकिन आईसीएमआर और अपन मजबूत टीम के कारण सबसे कम समय में पूरा देश के वैक्सीन कर ले तो ओकरो बहुत बड़ा योगदान है कि शॉर्टेस्ट टाइम जते कम से कम समय में पूरा जनता के देल गेलै वैक्सीन ओकर बाद टेस्टिंग ऑन डिमांड ये अगर पहले की केकरो टेस्ट इच्छा होए न होए टेस्ट करवावे रहे केकरो फैसिलिटी मिले रहे नहीं मिले हाथ पीछे अब सब जगह आर्टिफिशियल फैसिलिटी आ गई आईसीएमआर की मदद से और एयर की गेल के आईसीएमआर कोविड-19 में के कोविड-19 जैसे महामारी फिर ना आवे लेकिन बीमारी के तो कोई जानकारी भविष्य में जाने नहीं कौन बीमारी है ओकरा मैनेजमेंट करेगा एक रजिस्ट्री तैयार कर पूरा देश में सर्वे तुरंत जो भी बीमारी होते हैं पूरा डाटा तैयार है कोविड-19 के मैनेजमेंट से बहुत कुछ सीखल के आईसीएमआर ओकरा नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री के जे रजिस्टर मेंटेन होय छै डाटा बैंक तैयार करके तो ई सब भए गेल अपने आईसीएमआर के पूरा अचीवमेंट पिछला 75 साल में ई केलकै विगत 2 साल में कोरोना महामारी में जेना देश के बचेलकै ओहि में आईसीएमआर के बहुत बड़ा योगदान रहले वह आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट जे हमें पहले भी कहलो पटना में आरएमआरआई है राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भारत सरकार के प्रथम राष्ट्रपति रहथिन उनके नाम पर वो इंस्टीट्यूट के मतलब स्थापना भेले वह कड़ी में वो इंस्टीट्यूट के की योगदान रहले विगत 2 साल में या विगत अपने के 10-20 साल या 25 साल में उत्तर तरी हमें क्या लोग इंस्टीट्यूट से लो आईसीएमआर के आईसीएमआर के बारे में बताया गया लेकिन अपनो बिहार में आईसीएमआर इंस्टीट्यूट है ओकरो की कार्य भए रहल छै बिहार के स्वास्थ्य सेवा के मजबूत करे में वो अपने मालूम होय चाहिए त आशुए में अपने कहलो कि बिहार में काला जार एक बहुत बड़ा बीमारी छै एक अभिशाप छै तो उ बीमारी के लिए इंस्टीट्यूट खोलल गेलै रहे तो मेन एकर काम छै रहे रिसर्च या ओकरे मतलब कार्य करे वह में केना ओकर कार्य करल जेतै केना ओकर बीमारी के खत्म करल जेतै लेकिन कोरोना में यो बहुत बड़ा योगदान देलकै अपन बिहार के इंस्टीट्यूट जे बिहार में फर्स्ट आर्टिफिशियल डायग्नोस्टिक सेंटर जे भी रहे अपने सुने भी होबे कि सैंपल दरभंगा के सैंपल पटना में ले
पटना कदो आवे रहे, पटना आईसीएमआर में ही आवे रहे। बाद में फिर एम्स पटना भेले या फिर आईटीएमएस पटना में पीएमसी। सबसे पहले पटना जे भी सैंपल आवे पूरा बिहार के तो आरएमआरआई आईसीएमआर के आरटीपीसीआर फर्स्ट एवर बिहार में कोरोना के जांच के आरटीपीसीआर शुरू भेले वो आरएमआरआई आईसीएमआर के लैब में। ओकर बाद हमरो इंस्टीट्यूट जे छै आईसीएमआर आरएमआरआई वो नेशनल और स्टेट लेवल पे सर्वे भेले बिहार में कोरोना वैक्सीन के बाद। की होय छै कि दवाई के बादो सर्वे होय छै, दवाई देला के बाद कते मरीज ठीक भेले या कते नहीं भेले या की प्रोग्रेस छै ओकर सर्वे में भी हमर इंस्टीट्यूट भाग लेलकै। पूरा बिहार से सैंपल गेले, ब्लड सैंपल कलेक्ट भेले रहे, पटना गेले, वजह से फिर दिल्ली गेले, दिल्ली पूरा जांच भेले तो पता चलले कते एंटीबॉडी बनले। कोरोना के महामारी में ये नहीं विज्ञान पढ़लक सब एंटीबॉडी और आईजी और आरटीपीसीआर सब जान गए तो कते एंटीबॉडी बनले ओकर जानकारी अब हर कोई जाने छै। ले चाहे जे हमरा वैक्सीन पढ़ले कते एंटीबॉडी बनले, एंटीबॉडी छै कि नहीं छै वो जानकारी है आईसीएमआर स्टडी करके तो हमारे इंस्टीट्यूट पार्टनर के रहे। ओकर बाद हमारे इंस्टीट्यूट जे छै सब जगह के स्टाफ के रखते हैं। बिहार सरकार के कॉलेज है या हॉस्पिटल है सब में ट्रेनिंग दल के मेडिकल ऑफिसर के या टेक्नीशियन के जे भी एले ओकरा आरटीपीसीआर केना आरएनए निकालै छै, डीएनए करै छै, पीसीआर केना करै छै, केना रिपोर्ट बनबै छै, केना डाटा मैनेजमेंट करै छै, हर तरह के ट्रेनिंग हमर बिहार में आईसीएमआर आरएमआरआई के। ठीक है। और सबसे हमारे इंस्टीट्यूट के सबसे बड़ा योगदान रहा बिहार में एक वैशाली मॉडल। वैशाली जिला है पटना के नजदीक में तो वैशाली मॉडल, वैशाली सबसे बड़ा ईपी सेंटर केंद्र है कालाजार। उधर कालाजार के मरीज बहुत आ 2015 से और 20 के बीच में हमारे इंस्टीट्यूट एक मॉडल तैयार करके केना कालाजार के खत्म करे छै ओकर नाम देल गेलै वैशाली मॉडल। वो एरिया में केस रहे 50% घट के भए गेलै 15 से 10%। तो मतलब केना घटलै कोन तरीका से पूरा भारत सरकार के बतायल गेलै। और वैशाली मॉडल पूरा देश में चलबै छै, जहां कालाजार है वो सब जगह के वह मॉडल से ट्रीटमेंट मतलब वह मॉडल से पूरा खत्म करे के योगदान मतलब देल जेतै। वैशाली मॉडल अपने आप में मतलब सुपरस्टार मॉडल कहलायल गेलै और ऊपर योगदान आईसीएमआर इंस्टीट्यूट चैम्बर आरएमआरआई वह दल के। और हम लोग का इंस्टीट्यूट जो है ओपीडी हॉस्पिटल भी है जो कालाजार के या प्लस जे भी अदर बीमारी हो छै रोज 5 डे ओपीडी चलै छै जहां की पेशेंट आबै छै अपन इलाज करै छै, डॉक्टर सब रहै छै मेडिकल के अपन देखाय के दवा और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है भारत सरकार। ई सब योगदान जो है भारत के स्वास्थ्य सेवा में आईसीएमआर के बहुत बड़ा योगदान है। हर तरह सपोर्ट करे छै और अपने से भी हम चाहे कि आईसीएमआर के बारे में जानकारी ओकर रिसर्च कार्य की होय छै, गवर्नमेंट को कजो काम का खास करके जो विज्ञान के छात्र छथिन, जे बायोलॉजी के छात्र छथिन, जे रिसर्च इंटरेस्टेड छथिन वो आगू आईसीएमआर के पोर्टल पे वेबसाइट बहुत तरह के बारे में जानकारी छै कि केना कार्य भए रहल छै, रिसर्च भए रहल छै, देश के केना सुदृढ़ कए रहल छै नेशनल हेल्थ सर्विस में। जे पहले भी हम कहलहुं कि एनआईएच छै भारत, जेना अमेरिका में एनआईएच है तो भारत का एनआईएच आईसीएमआर, यहाँ से पीएचडी भी होय छै, यहाँ से ट्रेनिंग भी होय छै। हमें चाहे छै कि साइंस के बच्चा के जे भी छै 2 महीना के ट्रेनिंग के लिए पटना भेजू यानी कुछ सीखी नया जी ऐसे हमरो विकास होते और बिहार के जनता का, बिहार के स्टूडेंट के भी विकास होते। इतने सबसे अपन विराम लेके चाहे छी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अजय कुमार जी के जे अपन विषय और खुद क्रमबद्ध तरीका से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमरा सबके संग साझा केलनि। आब हम आमंत्रित करै छियनि
अपन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जे आबि कऽ अतिथि लोकनि के स्वागत करथिन। उद्घाटन सत्र के बाद आज से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के शुरुआत आगाज कयल जा रहल अछि। विज्ञान, संचार, लोकप्रिय और विस्तार हम स्वागत करना चाहे छी। कार्य के उद्घाटनकर्ता, वक्ता, अध्यक्षता करैत सब सम्मानित माननीय मंत्री पदाधिकारी के संगे हमर कुलपति, कुल सचिव और विज्ञान संकाय के अध्यक्ष के जे काल्हि विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन कलक और समारोह में जतेक लोग रहत उनकर सभक हम पुनः एक बार स्वागत करें। आजुक वक्ता में अजय कुमार जी, परिचय में डॉक्टर प्रोफेसर विजेंद्र शेखर झा जी जे विज्ञान संकाय के अध्यक्ष है, हमारे कोऑर्डिनेटर सुजीत जी और मंच के संचालन करे नेहा जी, सत्येंद्र जी। इस सभागार में आजुक कार्यक्रम में उपस्थित जतेक माननीय शिक्षक, वैज्ञानिक, छात्र छात्राओं, मीडिया कर्मियों, महाविद्यालय के कर्मचारियों एवं अन्य महाविद्यालय से आयल तमाम प्रधानाचार्य और शिक्षक सबके हम स्वागत करें। जे हम स्वागत कर चाहब कि आज से जे कार्यक्रम शुरू भ गेलै 23 से लऽ 27 तक देश के विभिन्न वैज्ञानिक के अपना अपना क्षेत्र के संगोष्ठी, कवि, लेखन और प्रतियोगिता सब में प्रतिभागी लोग जे में सम्मिलित हेता आई के मंच से हम सबक स्वागत कर चाहब और स्वागत करै छी और हम धन्यवाद दै छियै और उनको स्वागत कर चाहे छियै माननीय निर्गंठ जी के जे एहि कार्यक्रम के सफल संचालन ले दिन रात मॉनिटरिंग कर रहल छथि और तमाम विभाग जे एहिमे सम्मिलित है उनकर सब पदाधिकारी के, उनकर सब माननीय मंत्री के आज के दिन एहिठाम से हम सबक स्वागत करै छी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। We have with us today respected Dean Faculty of Science, Professor B.S. Shaji. I would like to request him to come on the dais and introduce and elaborate the topic Vigyan Sarvatra Pujyate. Sir, please. Young and energetic principal of CM Science College, Darbhanga, Professor Vigyan, dignitaries of the teachers of the college from different localities of Darbhanga, dear students and all other participants or persons present in the hall whom I cannot name, paucity of time. I am seeing some of my favorite students here. I may not come up to your expectations as I used to be in class, because the whole night I have not slept. But from this college, in the last evening, I reached my residence at about 8 p.m. But in the morning,
at 8:30 when I left my residence, and you all know I live alone. So, due to monkey menace, the electricity supply at my residence was disrupted. And once I reached there, then the tenant was standing, said there is no water. So I used my contacts, and the electricity department was kind enough to send 2 electricians at about 9 p.m. But they could not rectify it due to late hours. Then there were certain engagements. There were certain tracing engagements whose disposal at my level was required today itself, due to some pressure from the government to the university. So I had to prepare that report the whole night, and at about 5 I could finish that. Then I called the electrician and got the things in order. So you can very well see, I may not come up to your expectations. Then right now, after delivering this lecture, I have another lecture to deliver. I will be connected to Midnapur University, West Bengal, where a very interesting talk is there to be delivered by me, playing with genes. So even I have not prepared for that. The PowerPoint that I have read is still in the department. I have spoken to some of my colleagues to get the screen in order, and once I reach from here, I will immediately join here. So the whole things I cannot cover up, and as this mega festival is expected to be carried in some 19 languages. Last evening I spoke about that. So I would like to make my address multilingual. Some portions may be in English, some portion may be in Hindi, maybe in Maithili, our mother tongue, so that it may be understandable to all of us. Let us see. But I am sure I will not be able to come up to your expectations because of the paucity of time and my busy schedule and the tiredness with which I have been faced with for the last few days. So, under these backdrops, let me now start what I have been asked to do. Your principal just a day before yesterday, late in the evening, he requested me to introduce the theme. You know my association with him. I am as good as his elder brother. I have the right even to scold him, to physically punish him, and so he has the right to take advantage of the relationship which exists between us. So I would not deny his request. So this mega festival, this Science That Day, which we celebrate every year on February 28 to commemorate the great discovery of Indian scientist C.V. Raman, the Raman effect. He discovered that Raman effect on this 28th day of February as late as in 1928. And after 2 years, he got the Nobel Prize. So the theme, Vigyan, Sarvatra, Pujyate, it means, literally, if it is translated, it means science is revered, worshipped all over or everywhere, and the events and this message should be spread across the society. So this is with what ambition the Autonomous Unit of Science and Technology, the Vigyan Prasad, has arranged and is conducting these programs. This is a week-long mega festival being celebrated at 75 different locations across the country, and there are 2 locations in our state, one Patna
Bihar, the credit has gone to this college to take this event and to organize this event under the aegis of LNMU. So for that I thank the college management. And then then the exhibitions will be spread over across 75 locations in the country with an objective or aim to showcase and pay homage to India's achievement in 75 years of independence. So, taking the say history of science in India, you will have to go back to pre-independence days and then the post-independence era. Then this festival, week-long festival, aims to highlight the work being done by research and development organizations from across the country and their ideas for the road ahead to 2047, 25 years after this event. What will be the roadmap where the science and technology will take us or lead us? So this is particularly this mega festival has been arranged with a sole aim to transform India, to make the India self-reliant. भारत को हम आत्मनिर्भर बना विदेशी टेक्नोलॉजी तकनीक पर मुझे आधारित इस कंट्री को नहीं रहना पड़े। हमारे कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट हो तकनीक, हमारा पेटेंटिंग हो, हिंदुस्तान विश्व के पैमाने पर शक्तिशाली विज्ञान का केंद्र बने। इन सब उद्देश्यों से इस मेगा फेस्टिवल का को गति दी गई है। आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि प्री इंडिपेंडेंस डे कि इंडिया के जो साइंटिस्ट, वैसे साइंटिस्ट पोस्ट इंडियन एरा में नहीं हुए और उन दिनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कोई आधारभूत संरचना किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आज की तुलना में अत्यधिक कम थी। उन लोगों ने अपने प्राइवेट डोनेशन से अपने बच्चों के परिवार के भरण पोषण के कॉस्ट पर अपने सैलरी को लगा करके काम किया और जैसा काम किया वो विश्व में अपने आप में बखूबी है। और some of the intellectual giants of pre-independence era, उन लोगों ने, अगर हमको कहा जाए उनमें से कुछ लोगों को नाम लेने का, तो ग्रेट वेदनाथ साहब, देन दिस कौन थे, जानकी अमल, श्रीनिवास रामानुजन, देन सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र बोस और एक थे प्रफुल्ल चंद्र राय, येलापट्टा सुब्बा राव। ये लोग प्री इंडिपेंडेंस एरा के, they were the pre-independent era's giant scientists from India, and they made their contribution when there were very few opportunities for research in Indian colleges and universities. Homi Jehangir Bhabha, you know, whose publications in nuclear and cosmic ray physics spanned both pre-independence and post-independence era. इन लोगों का जो था क्या उसकी तुलना में मॉडर्न एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के साइंटिस्ट का वो अचीवमेंट नहीं हो सका। उसके प्रति क्या कारण है मैं उस पर आऊंगा। आज का अगर आप दिशा देखें तो नॉट इवन एनी इंडियन यूनिवर्सिटीज इज अमंग द फर्स्ट 200 टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ, हमारे देश का कोई कंट्री 200 यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं है। इवन ब्रिक्स कंट्री जो है आपका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और क्या है साउथ अफ्रीका, ये नेशंस जो है इसमें भी हमारा रैंकिंग जो है सो ये 45 ऑफ द टॉप 100 प्लेसेस चाइना ने लिया है एंड इंडिया स्टैंड्स और रैंक्स 30। तो हमारे यहाँ सुविधा बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी फंड किया है, लेकिन उन प्री इंडिपेंडेंस एरा के लोगों में जो डिवोशन था
वो आज के लोगों में नहीं है। भौतिकवादी युग हो गया, सेल्फ सेंटर्ड वो लोग हो गए हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। और इसको अगर हम सोचें कि ऐसा क्यों हुआ है, आप देखेंगे अगर हिस्ट्री ट्रेस करेंगे साइंस के ग्लोबल लेवल पे, तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि ऑलमोस्ट ऑल साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑफ साइंस गोइंग बैक टू द ग्रीक्स, और दे आल्सो राइट देयर एक्सपीरियंस फॉर जनरल पब्लिक। तो वो वेस्टर्न कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी पब्लिक के लिए लिखते हैं, साइंस को मास में ले जाते हैं, अपने जमीन से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं तो केमिस्ट्री के लोग विद्वान है, मैं तो केमिस्ट्री भूल गया, लेकिन आप देखिए हमारा माइथोलॉजी कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, अगर कोई गॉड होते होंगे, साइंस डजंट बिलीव इन दैट, बट इफ एट ऑल इट इज सो, इट सो हैपेंस, तो ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? रचयिता। विष्णु को कहा जाता है उसको पालने वाला, पालन करता, और शिव को कहा जाता है संहार करता। क्या है? कौन कौन चीज है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के बिना किसी चीज की संरचना नहीं हो सकती, ब्रह्मा का रूप। इलेक्ट्रॉन दैट कीप्स द एनी ऑब्जेक्ट और एनी मैटर इन शेप, तो इलेक्ट्रॉन उसको बनाए रखता है और न्यूट्रॉन से नाश हो जाता है। तो हमारा कल्चरल हेरिटेज को अगर हम कंपेयर करें तो साइंस से उसको हम बहुत अच्छी तरह से स्पिरिचुअली कोरिलेट कर सकते हैं। समयाभाव में उसमें घंटों बोला जा सकता है, मैं उनको छोड़ कभी मौका मिलेगा और आपके बीच आऊंगा तो जरूर बोलूंगा। अगर इंडिया में मुझे लगता है कि मात्र 2 साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने पब्लिक के लिए लिखा अपने एक्सपीरियंस को, और वो है जगदीश चंद्र बोस और सीवी रमन। इसके अलावा ये दोनों जो है ये प्रेजेंटेड देयर फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ देयर रिसर्च। इनके अलावा कोई इंडियन साइंटिस्ट अपने रिसर्च के फिलोसॉफिकल बेस को समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किया। और इंडिया का साइंस का हिस्ट्री इट डेट्स बैक टू, पता नहीं आप लोगों को मालूम है होगा, समझते हैं फिजिक्स के लोग होंगे यहाँ, आज से 2500 वर्ष, सॉरी 2500 नहीं, अब 2600 वर्ष, 2587 वर्ष पूर्व, 2587 वर्ष पूर्व एक कन्नाडा वैशेषिका एक टेक्स्ट है फिजिक्स का, वो हिंदुस्तान में आज से 2587 वर्ष पूर्व ही उसको लिखा गया। और प्री इंडियन एरा के साइंटिस्ट के लिए वो बेस हुआ करता था, और वर्ल्ड ओवर में इस किताब को लोग पढ़ते थे। आज के लोग इस किताब के नाम भी नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने संस्कृति से अलग होते गए। हमारे पूर्वजों ने विदेशी ने मुझको क्या दिया? जो किताब आज से 2500 वर्ष पहले हिंदुस्तान में जबकि विज्ञान और प्रावैधिकी का कुछ भी विकास नहीं हुआ था, उस वक्त हिंदुस्तान के ये वैशेषिका के किताब में इसको उद्धृत कर दिया गया और वर्ल्ड ओवर के लोगों ने उसको पढ़ा। हम उसको पढ़ने से अब 2 ही जगह वो किताब है भी हिंदुस्तान में। तो ये सब कारण रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में मेजर इंस्टीट्यूशंस आपको जैसे CSIR, BAE, BST, DRDO, ICMR इत्यादि बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए जिन्होंने इंडस्ट्री से, यूनिवर्सिटी सिस्टम से इंटरैक्ट करके बेस्ट टैलेंट को लिया अपने यहाँ, और इसीलिए कुछ काम भी हुआ। यूनिवर्सिटी सिस्टम से गवर्नमेंट की अपेक्षा थी कि हमको 60% साइंस के ग्रोथ का आउटपुट मिले, लेकिन वो नहीं मिला डिस्पाइट बेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। ये हम लोग के लिए सोचने की बात है, इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की इसमें जरूरत है। इसके बाद
ठीक है, there has been a tremendous scientific achievement even after post independence. And in other words, हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका क्रक्स क्या है? How best we can combine the Indian tradition with the scientific advancement. That is the crux of this festival. इस फेस्टिवल का यही क्रक्स है। और चूंकि मुझे विषय को प्रवेश करने के लिए कहा गया है, तो मैं बताऊं, समय मिलता तो I could have prepared the PPT and have spoken here for 2-3 hours. I would have enjoyed that. But due to some engagements and the scarcity of time, I will be leaving shortly. So I will not be covering all those things. But I would like, or I would try, I would attempt my best to touch all those points which may give some sort of message and create some sort of awareness among the people and students present here and joining online. They can spread those messages to the society. So basically there are 4 themes proposed by SNT for this week-long mega festival. First is the Annals of Science. ये फरवरी 23 आज के दिन, ये 22 को इसकी शुरुआत हुई होती है, 28 को इसका कल्मिनेशन होना है, वैलिडिक्टरी फंक्शन होना है। तय कर दिया गया है 23 तारीख को हम किस थीम पर 75 सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया बात की जाएगी, 24 को किस थीम पर बात की जाएगी, 25-26 को किस पर बात किया जाएगा, 27 को क्या होगा। इस तरह से इसके थीम्स बनाए गए, जिसमें पहला थीम जिसका संबंध आज की गोष्ठी से होगा, आज जो दिन भर परिचर्चा चलेगी उससे होगा, वो है एनल्स ऑफ साइंस। दैट विल focus on brief history of science in India, and this will trace how an individual's contributions help India establish modern S&T system. शुरू के दिनों में जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हुआ कुछ हमारे साइंटिस्ट का, वही that paved the way for establishment of R&D centers in the country. साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का विकास का बुनियाद, फाउंडेशन स्टोन उन इंडिविजुअल प्री इंडिपेंडेंस एरा के लोगों के द्वारा रखा गया। इस पर परिचर्चा जो लोग बोलेंगे वो बतावेंगे विस्तार से, मैं जस्ट टच कर रहा हूँ। और 75 फिल्म और 75 साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स एंड 75 लेक्चर्स by eminent scientists and technocrats are to be screened across 75 locations today on Annals of India, that is covering the brief history of development of science and technology in India. And then, as you know, pre-independence काल में साइंस के लोग जानते हो 1930 और 35 के बीच में भारत में 3 मेजर साइंस एकेडमीज का स्थापना हुआ। उस स्थापना का के लिए स्टिमुलेंट, प्रेरणा, इंस्पिरेशन का सोर्स प्री इंडिपेंडेंस डे के साइंटिस्ट रहे, लाइक जेसी बोस, जीवी रमन। जेसी बोस को तो फादर ऑफ इंडियन साइंस कहा जाता है। उनके कंट्रीब्यूशन को तो आप भूल नहीं सकते। क्या फिजिक्स, क्या बॉटनी, क्या फिजियोलॉजी, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो उनको कहा जाता है पहला इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंसा का गठन, इसके बाद इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, इसके बाद नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये 3 एकेडमी 1930 से 1935 के बीच में भारतवर्ष में स्थापित किए गए और अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडियन नेशनल कमीशन फॉर हिस्ट्री ऑफ साइंस, एंड दिस वाज सेट अप बाय इंसा। और इसी क्रम में हिंदुस्तान से सर्वप्रथम साइंटिफिक पत्रिका जर्नल इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस IJHS 1966 ईस्वी में पब्लिश हुआ और दैट वाज द फर्स्ट journal published by the Indian Academy. So, to promote research on various aspects of ancient, medieval and modern science,
from a variety of historical perspectives. फर्स्ट चैप्टर का विकास एनल्स ऑफ साइंस में कैसे धीरे धीरे विकास होता गया, उसके मैं कुछ बिंदुओं को करता हूँ। इस थीम के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हर एक हम में से हर एक भारतीय को, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, किसी भी फील्ड का हो व्यक्ति, उसे एक किताब पढ़नी चाहिए। डी सुब्बा रैयप्पा के द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उसी वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप खुद ही प्रेरित हो, आपको प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, रियल कुछ इनोवेटिव जेन्युइन वर्क किया जाए, उस किताब को लोगों को पढ़ना चाहिए। इसके बाद दूसरा थीम मुझे लगता है कि है माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स मतलब कि हम हिंदुस्तान के क्या मेजर अचीवमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है जो इसको एक विकसित देश या के श्रेणी में लाके खड़ा करने की दिशा की ओर अग्रसर है। वो माइलस्टोन्स है जो 25 तारीख को उसके बारे में शायद किया गया है, उस पर परिचर्चा होगी। मुझे ये लगता है शायद 25, ठीक है, 25 को ही, हाँ 25, सॉरी 24 तारीख को माइलस्टोन्स ऑफ मॉडर्न इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात होगी। 24 तारीख को फिर इसी 75 सेंटर्स में इसी सब पर बात होगी। मैं कुछ माइलस्टोन्स की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। याद कीजिए 1975 ईस्वी जब आर्यभट्ट, जो हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, भारत को जिस पर गर्व, उनके नाम पर सर्वप्रथम एक फर्स्ट सैटेलाइट into space was launched or sent. Probably, if I remember the day, it was sometimes, probably it is 19 April 1975. 1975 ईस्वी के 19 अप्रैल को आर्यभट्ट हमने, ये पहला माइलस्टोन था इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दूसरा माइलस्टोन आया सैटेलाइट टीवी का, उसका नाम दिया गया ए साइट फॉर सोर आइज। और आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में मेट्रोपॉलिटन, इवन दिल्ली में, बॉम्बे में कहीं टीवी नहीं आया था, तो हिंदुस्तान में 2400 विलेज को, 6 स्टेट्स में 2400 विलेज को सेलेक्ट किया गया। और उस 2400 विलेज में एट ए टाइम 2400 ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटी टीवी सेट लगा है रूरल एरिया 6 स्टेट्स में। उस वक्त लॉन्ग बिफोर द अर्बन पॉपुलेशन और द अर्बन इंडिया एक्सपीरियंस टीवी, अर्बन इंडिया, एंड दिस प्रोजेक्ट वाज डिजाइन्ड एंड अंडरटेकन बाय आवर ग्रेट एजेंसी इसरो। तो ये दूसरा हमारा माइलस्टोन 75 में ही हुआ। इसके बाद 78 में सबसे बड़ा माइलस्टोन इंडिया में आप देखिएगा, इंडिया में 78 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आप कल्पना, हम लोग 78 में 76 में एमएससी कर चुके थे। और मैं 78 में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग के लिए, कल मैं बताया था, मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी गया, तो हम लोगों को लगता था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजी में क्या इंजीनियरिंग होगा, कुछ लोग नहीं जानते थे। दैट वाज द इनिशियल स्टेज। तो 78 में क्या हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, आपको याद होगा, मैरी लुइस ब्राउन वाज बोर्न इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड कितना विकसित देश है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसके जस्ट बाद पूरे विश्व में ठीक से 67 दिन बाद, just 67 days after the first test tube baby was born in UK, उसके ठीक 67वें दिन में हिंदुस्तान में बेला अग्रवाल ने टेस्ट ट्यूब बेबी का, आप जानते होंगे उस डॉक्टर का नाम, ग्रेट क्या नाम था उनका, सुभाष मुखोपाध्याय, उनके केयर में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका दुर्गा नाम रखा गया, वो बेला अग्रवाल थी, उसके से हुआ। तो फर्स्ट बेबी, सेकंड बेबी
वर्ल्ड ओवर में टेस्ट ट्यूब देने का श्रेय हिंदुस्तान को जाता है। तो दैट इज आवर अनदर माइलस्टोन। मैं जस्ट कुछ को टच कर रहा हूँ, सारा कुछ टच करने में 3-4 घंटे लगेंगे और डिफरेंट जगह इस पर आज पर चर्चा होगी। लोगों को कनेक्ट होना चाहिए, चाहे घर पे हो कहीं हो, और थोड़े साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। फिर 1978 में हमारे देश में ड्रॉट आया और कुछ स्टेट्स में, और ऐसा ड्रॉट आया कि लोग वो तालाब उन दिनों सॉरी क्या कहते हैं कुआं उस पर निर्भर करते थे। दैट ऑल्सो वेंट ड्राई। तो हुआ क्या कि एक आपको याद होगा, उसको जान कहते हैं हम लोग हिंदुस्तान का मार्क 2 पंप्स, 16 पंप्स। वो वर्ल्ड ओवर में उसकी ख्याति हुई, यूनिसेफ ने उसको अपनाया और दैट वाज डिजाइन्ड बाय ए वेरी इलिटरेट इंडियन मेथड। ये हमारा मार्क 2 पंप्स अनदर माइलस्टोन हुआ 78 में। 83 ईस्वी में आपको मालूम होगा कि साउथ पोल से 2500 किलोमीटर साउथ पर हिंदुस्तान ने एक इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन एंटार्क्टिका में बना, जिसको कहते हैं गंगोत्री प्रोजेक्ट। तो वो हमारा अनदर माइलस्टोन है। 84 ईस्वी में आपको याद होगा राकेश शर्मा, द फर्स्ट मैन फ्रॉम इंडिया टू ट्रेवल टू स्पेस, राकेश शर्मा। उनको जब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूछा था, और लोगों को सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत आज अंतरिक्ष में, तो जब उनसे पूछा गया कि आपको ऊपर से भारत कैसा दिखता है, उस व्यक्ति ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तो ये हमारा अनदर माइलस्टोन स्पेस का है। इसके बाद 1989 में फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि उसका भारत ने खोज किया, लॉन्च किया, और हम शक्तिशाली देश बनने के क्रम में ये विज्ञान का एक दूसरा अन्य अहम भूमिका रही 1989 में। फिर 1991 में हिंदुस्तान में बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं, वो समझ रहे होंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हिंदुस्तान में अगर उसको किसी को श्रेय जाता है तो सिंगल मैन डॉक्टर लालजी सिंह उनको जाता है। सो दैट वाज अनदर माइलस्टोन in 1991 in the field of molecular biology. The coming 50 years, कम से कम 50 आने वाला वर्ष मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, चाहे वो फिजिक्स पढ़ते हो, जियोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, अल्टीमेटली उनको आना है मॉलिक्यूलर। So this coming 3-4 decades belong to molecular biology. इसके बाद 1991 में एक आपको याद होगा परम सुपर डुपर कंप्यूटर का हिंदुस्तान में हुआ डिजाइन। वो हमारा होममेड सुपर डुपर कंप्यूटर था। ठीक है, बहुत विशाल था, जो कुछ भी था, लेकिन वो हमारा पहला था। दिस इज अनदर माइलस्टोन। 1995 में आप देखिएगा, जो भी जियोलॉजी के छात्र को तो जरूर ही जानना चाहिए, और टीचर को इंटरेस्टेड लोग को होना चाहिए। टाइगर थ्रेटेंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। और आप जानते हैं कि जैसे 2 आदमी के हाथ में तो प्रिंट है, किसी 2 आदमी के हाथ का सेम प्रिंटिंग नहीं होगा। डीएनए प्रिंटिंग में तो इसी तरह हम करते हैं, नो 2 इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड हैव द फिंगर सेम टाइप ऑफ फिंगर। इसी प्रकार से जितने भी बाल हैं, टाइगर है, उनमें जो पैचेज होते हैं पीला ब्राउन टाइप, वो पैचेज आप देखिएगा तो जितने भी बाल होते हैं सब में अलग अलग होता है। लाइक अगर दिस फिंगर, तो उसको उसकी गिनती, जब उसकी संख्या कम होती जा रही थी तो उसकी गिनती लोग नहीं कर पाते थे। कभी कैमरा लगा करके, टेलीस्कोप लगा करके गिनते थे, वही बाल फिर दौड़ के दूसरे साइड में जाता था, उसकी गिनती फिर दोबारा हो जाती थी, तो करेक्ट पिक्चर नहीं मिलता था, और यह समस्या पूरे विश्व को थी।
तो हिंदुस्तान ने ही कर्नाटका के एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही विश्व को यह दिया कि कैसे टाइगर को हम गिन सकते हैं, क्योंकि उसमें उसको तो सामने जाके गिनिएगा आप कहाँ जाएंगे। तो दूर से ही उसका एक्यूरेट मैपिंग हो, उसका काउंटिंग हो, उसकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है। और आप जानते हैं कि टाइगर की संख्या अगर घट गई तो हम आप नहीं बचेंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। टाइगर क्या है? हर्बीवोर्स है। तो अगर टाइगर नहीं रहेगा तो हर्ब्स को कौन खाएगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो टाइगर की संख्या को बचाना पूरे विश्व के लिए ये एक अहम मुद्दा है। इसके लिए सबसे प्रथम टाइगर ट्रैकिंग डिवाइस इंडिया के ही कर्नाटका के जूलॉजिस्ट के उल्लास करण को जाता है, जिन्होंने कैमरा ट्रैक तकनीक दिया, जिसमें एक कैमरा जो होता है वह दैट इज इक्विप्ड विद मोशन सेंसर्स, और उसके डेटा को हम गैदर करते हैं एंड देन वी प्रोसेस, वी अप्लाई statistical tools over that, and then we get the accurate number of tigers. So this way, counting tiger counting is a credit to be given to the great Indian zoologist of 1995. जब भारत को ही असरे जाता है। This is our another milestone. 1998 में, अब आइए, मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ, मिस करता हूँ due to paucity of time. I have another lecture at 12:30. Then 1998 में कल्पाकम में न्यूक्लियर प्लांट 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई, इसकी स्थापना हुई 1998 में। आप जानते हैं हमारे और पूरे विश्व के, I never treated Atal Bihari Vajpayee as the politician. He was a statesman. He was not at all a politician. He was a statesman. He belonged to the whole world. तो उन्होंने दिखाया पोखरण 2 करके, और वो हमको पोखरण 2 डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वेस्ट हमको विश्व के 6 शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर में लाया। तो ये हमारा सबसे बड़ा 1998 का माइलस्टोन हो। इसके बाद इंडिया 2000 में आकर के इंडिया ने रिवॉल्यूशन ला दिया। वेस्टर्न कंट्री को लोहा मानना पड़ा इंडियन यंग के ब्रेन्स का, और जब बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हुआ, कॉल सेंटर्स में रात में बैठ करके यहाँ के इंडियन यंग्स प्रॉब्लम को सूट आउट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, ग्रेट ब्रिटेन के, कहीं जहाँ ये दिन होता है तो यहाँ 2 बजे रात होता है, वो इंडियन यंग्स ने किया और उससे एक रिवॉल्यूशन आया। बाद में इसको उन लोगों ने भी टेकअप किया, लेकिन वो अपने मैन पावर को हायर करेंगे तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, और इंडियन मैन पावर, इंडियन इंटेलिजेंस, जो सॉफ्टवेयर स्किल जिसको ज्यादा है उसको कम पैसा है वो हायर करें। लेकिन हमारे देश के नौजवानों को बहुत रोजगार मिला और हमारे देश को खाती मिली। सो दिस वाज आवर अनदर अचीवमेंट। इसके बाद 2008 में आइए, चंद्रयान 1 फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन हमारा हुआ। 2009 में आप जानते हैं क्या आया था, वो आईएनएस अरिहंत आया 26 जुलाई को आया आईएनएस, जो आपको स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ये हमारा आया। 2014 में साइंस को जब हम प्रमोट किए और सोशल अवेयरनेस, साइंस के प्रति लोगों की जगी। देखिए एक बात तो तय है कि आप तब तक इग्नोर करिएगा, इंडियंस का ये कल्चर, किसी चीज को जो साइंस प्रोहिबिट करता है कि इसको हम नहीं करें वो आप कीजिएगा, लेकिन जिस दिन डॉक्टर कह देगा इस एडिक्शन को आप छोड़िए नहीं तो आप 10 दिन में बढ़ जाइएगा, वो आप कुछ करो। तो चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो कोई भी नशा हो। तो इसी प्रकार से जब पोलियो का विस्तार होने लगा तो जागरूकता फैली, और 2014 में आप देखे होइएगा कि WHO को इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री घोषित किया गया। ये करना पड़ा कि ये हमारा दूसरा अचीवमेंट था। देन 2014 में आई GSLV D5 रॉकेट साइंस। ये जो है सो ये 25 साल लगा इसको डेवलप करने में। एक ऐसे रॉकेट को डेवलप करने में 25 वर्ष लगे। 2014 से बैक जाइए 25 साल। उतने दिनों के श्रम के बाद
2014 में GSLV-5 रॉकेट लॉन्च किया गया। दैट वाज द फर्स्ट रॉकेट developed by India that could launch satellite successfully in orbit. ये हमारा दूसरा माइलस्टोन था। इसके बाद ये देखिए एक इम्पोर्टेंट 2016 में क्या है, लीगो इंडिया। सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। हमारे बिहार में टैलेंट है, लोग अवेयर नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। एज ऑफ द अर्थ टू फोस्टर कटिंग एज रिसर्च, लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये लीगो इंडिया में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2016 में, जो कम ही विकसित देशों में भी है। तो ये तो था है इसका दूसरा थीम स्टेप जो कल होगा, जिस पर परिचर्चा होगी। परसों यानी कि फरवरी 25 को स्वदेशी पारंपरिक इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। भारत सरकार चाहती है कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया है उसमें स्वदेशी रूप से हम विभिन्न बीमारियों का इलाज किया करते थे। यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स, यहाँ हर्ब्स, ये बहुत ही है। आप कोई एलोपैथिक दवा लें, से फॉर एग्जांपल डायबिटीज, जस्ट टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर, इफ यू टेक any allopathic medicine, that may, no allopathic medicine has fully cured diabetes, but that checks the level of blood sugar, but that has side effects, and that opens the door. If you are continuously on insulin or diabetic drugs for a longer period, there is every susceptibility of your kidney and liver getting affected, even the cardiovascular diseases. तो हमारा जो स्वदेशी है, अगर हमारा जो हर्ब्स है, स्वदेशी पारंपरिक ऐसा इनोवेशंस हो जो उसका सब्स्टिट्यूट बन सके विथ नो साइड इफेक्ट्स, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। हमारे जो रिसोर्सेस है, हर्बल रिसोर्सेस है, उसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। कम कीमत में, जिस दवा की कीमत जेनेरिक दवा डॉक्टर्स नहीं प्रेस्क्राइब करते हैं, जिस दवा की कीमत 1 रुपये 20 पैसे होती है, वही दवा जो डॉक्टर लिखते हैं डिफरेंट फार्मा के बनाया हुआ, वह 40 रुपये और 50 रुपये में एक टैबलेट मिलता है। तो दिस इज हाउ द कंपनी और द मैन्युफैक्चरर्स चिट बाय ब्राइबिंग द डॉक्टर्स, एंड इफ वी आर नॉट अवेयर and due to lack of awareness we don't go for generic drugs. So this message should be spread कि हम पारंपरिक इसमें शोध करें। 3-4 जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स, ये जो है ये आपको 26 और 27 दोनों तारीख को इस पर प्रोग्राम होगा। 26 को साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, 75 प्रोग्राम्स ऑन फिल्म, थिएटर एंड लिटरेचर फ्रॉम 75 डिफरेंट लोकेशंस होंगे, और 27 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स होगा, जो रोड मैप तय करेगा कि आज के 25 वर्ष बाद यानी कि 2047 में भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिशा और दशा क्या होगी, वह तय करेगा। एंड दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। इसके लिए हमारी और आपकी भूमिका अहम हो जाती है। For this we will have to reach out to the masses in the rural India to identify young research scholars and women scientists with potential, along with entrepreneurs, startups that can bring new ideas and to achieve the goal of a आत्मनिर्भर भारत। ये जो रोड मैप है इसको दिशा तय करेंगे हम ही आप, और हम ही आप यंगस्टर के। तो हम आप अगर हो जाएंगे साइंस के प्रति उदासीन, साइंस के बिना कुछ नहीं होता है। जियोलॉजी के टीचर मुझे कोई बता दो, सारे लोग आप लोग पढ़ते हैं कि किसी हार्मोन का रेगुलेशन जो होता है वो फीडबैक मैकेनिज्म से होता है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। एक भारतीय अनपढ़ महिला को जो किसी विदेश में मेड का काम करती थी और
अपने बच्चे को लेकर के आती थी, छोटे जो शिशु उसके गोद में था, न्यूली बॉर्न बेबी, उसको लेके काम करने आती थी। और जो आदमी जिसके यहाँ वो काम करती थी वो ग्रेट इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वो उस लेडी को देख करके फीडबैक मैकेनिज्म दे दिया। तो साइंस क्या है? ये ऑब्जर्वेशन की बात है। सिस्टमेटिकली अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को आप एनालाइज कीजिए, वही साइंस है। कहा ही जाता है कि मनुष्य के अवलोकन एवं अनुभव से प्राप्त विश्व के वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आप उसको एनालाइज कर उसने क्या देखा कि वो बच्ची को गोद में लेके आई थी और झूला पर रख दी और खाना बनाने चली गई। जब वो खाना बनाने चली गई, जिसके यहाँ काम करती थी अपने लैंडलॉर्ड के, तो वो खाना बना रही थी, बीच में उसका बच्चा रोने लगा। That was a feedback to mother. भाई आपके बच्चा को भूख लगी। She immediately switched off the चूल्हा and then she ran away to her child, और उसको उसने एक बोतल दूध का दिया। ठीक है, ये क्या था? पॉजिटिव फीडबैक। और इसके बाद कुछ देर उसको बच्चे को पिलाई। दूध पिलाने के बाद कुछ देर के बाद कितना भी चाहिए कि बच्चे को फोर्सफुली दूध पिला दे ताकि हम काम करें, कुछ में नहीं चिल्लाए। The boy or that baby refused to accept further milk. That was a negative feedback. इसको भाई आप नहीं जोड़ते, हार्मोन का एक्शन ऐसे ही होता है। इस तरह से क्लास में पढ़ाइए, सारे बच्चे समझेंगे। उसको क्लास में भ्रमित करते हैं, यू कैन नॉट बी एबल। किताब में तो सारी बात लिखी है, आप उसको अपने रूप में आप कैसे ढाल करके बताते हैं ताकि वह सबों को समझ में आए। और फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसी से आया। तो वो तो देखा, ऑब्जर्व किया, उससे आया और इसके बाद एनालाइज किया। वी ऑब्जर्व एवरीथिंग, एवरी डे एवरीथिंग, बट वी कीप ऑन keeping ourselves busy on mobile, even if we are on work, whenever that creates some expense also. But we never observe the nature. A biologist, a scientist should be a good observer and analyzer. तो ये इसके लिए ये आवश्यक है, ये करना। और अंत में समय अभाव है, 12:30 मुझे उसका लेक्चर मिलना अपनी यूनिवर्सिटी का देना है। तो अब मैं कैमरा बंद हो गया। अच्छा ठीक है, हमरा मैथिली में तो मातृभाषा है घर पे, लेकिन मैथिली क्लास में कहीं बजलो है नहीं, ठीक है बाजक चाहिए। लेकिन अंत में हम कंक्लूड करेंगे जे सेशन 7 डेज सेशन है, तकर गोल रमन सीवी रमन पहले पढ़े, एंड विद हिज आई कोट सीवी रमन ने क्या कहा उससे मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। आप उसको सोचिए। और एक विश्वास एंड मुखोपाध्याय की एक किताब लिखी है 1969 से प्रकाशित हुई है, उसी किताब में ये सीवी रमन का कोट। सीवी रमन ने कहा कि अनलेस द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर साइंस एंड इट्स फंडामेंटल इन्फ्लुएंस in the advancement of all knowledge are realized and acted upon, India cannot make headway in any direction and attain her place among the nations of the world. देखिए कितनी बड़ी बात सीवी रमन ने कहा क्या कि unless the real importance of pure science पे लोग रिसर्च कम करने लगे हैं क्योंकि वो कठिन है, अप्लाइड पर लोग ज्यादा करने लगे हैं। मछली को हम इंसेक्टिसाइड दे दिए, बहुत लिटरेचर है, यहाँ से कट किए वहां से पेस्ट किए, ये अप्लाइड रिसर्च का भी धूम मचा हुआ है। प्योर रिसर्च ऑफ एल्जाइमर इज एन अप्लाइड ऑफ न्यूरोलॉजी, एल्जाइमर्स डिजीज। प्योर साइंस क्या है? अनलेस यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, द नर्वस सिस्टम, यू कांट अंडरस्टैंड एल्जाइमर्स डिजीज। तो प्योर साइंस lays the foundation of applied science. तो उसने कहा कि जब तक हिंदुस्तान, unless the real importance of pure science and its fundamental influence in the advancement of knowledge are realized and acted upon, India cannot make headway in any direction
and attain her place among the nations of the world. अंत में मैं कहूंगा, there is only one solution for India's economic problems. Only one solution, and that is science, and more science, and still more science. Thank you. Thank you so much, sir. You elaborated the topic very well. Science is revered everywhere, and this message should be spread all over the society. No doubt, our country has a very rich heritage of science. So the sole aim of this mega festival is to take India one step forward. We all feel very energetic and encouraged by your words, sir. Thank you so much. अब अगला महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रसारण विज्ञान प्रसार नई दिल्ली से है, जेकर विषय थी भारतीय विज्ञानक क्रमिक इतिहास। एहि कार्यक्रमक प्रसारण के हमरा लोग देखब, सुनब, सुनब आ लाभान्वित होयब। आउ संवेद भ देखै छी भारतीय विज्ञानक क्रमिक इतिहास विषय पर ई कार्यक्रम। समय व्हाट्सएप पर बोल दीजिए के कारण मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो। गणेश जी अतिथि छै से सब मणिकांत साहब पढ़ल छै, बाकी प्रसारण कार्यक्रम अपने सब उपस्थित भए देखू। उनका गणेश जी ना, हाँ गणेश जी के व्हाट्सएप पर, गणेश जी को व्हाट्सएप वहां से करेंगे, हाँ शेयर कर देंगे। ठीक, टाइम धरी 5 शेयर कर दो पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट चला दीजिए ना। हाँ हाँ डायरेक्ट चलाइए, क्लैरिटी अच्छा है। और क्या हीट की वजह से कैमरा बंद हो रहा है बार-बार। हां इसको क्या आप जुगाड़ कीजिए ना सर, गर्मी हवा देना, पंखा चला दीजिए एक वाला, फैन चला दिएगा नहीं ये तो फैन भी चल जाएगा तो कुछ काम होगा हमको लगता है, देखिए ना तो के सामने थोड़ा ठंडा रहेगा, एक फैन या दो फैन चला देते हैं। हां द्वारा संयुक्त रूप से एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का शुभारंभ 22 फरवरी को किया जा रहा है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम भारत की वैज्ञानिक विरासत, प्रौद्योगिकी, कौशल को प्रदर्शित करने के साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि,
खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अभिनव समाधान खोजने की दिशा में एक प्रयास है। विज्ञान के इस महाआयोजन का समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्षों की वैज्ञानिक यात्रा को यादगार बनाने और भविष्य के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का यह प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी भारत सरकार की दूरदर्शी सोच को बल दे रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में हमें मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। कटिंग एज इनोवेशंस के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए 22 से 28 फरवरी तक चलने वाले विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत 75 स्थानों पर एक साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में एक मेगा एक्सपो और पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। 23 फरवरी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतिहास से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 24 फरवरी को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 75 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के तहत ऐसी प्रमुख खोज, नवाचार या आविष्कार को याद किया जाएगा जिसने वैश्विक विज्ञान या भारत के विकास में अपनी छाप छोड़ी है। 25 फरवरी को स्वदेशी और परंपरागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचार और आविष्कार विषय के अंतर्गत भारत की आत्मनिर्भरता में सहयोग करने वाले पारंपरिक ज्ञान प्रणाली पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 26 फरवरी को बदलते भारत के अधीन फिल्म, रंगमंच और साहित्य से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 27 फरवरी को भविष्य का भारत भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अगले 25 वर्ष के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 28 फरवरी को इस विज्ञान सप्ताह का समापन समारोह विज्ञान भवन में आयोजित होगा। कार्यक्रम की जानकारी www.vigyanpujyate.in पर उपलब्ध है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत माईगॉव पोर्टल के साथ मिलकर निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, कविता लेखन, पोस्टर, लघु फिल्म और ऑनलाइन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्विज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता चलाई गई थी। इन प्रतियोगिताओं में देश भर से बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एक प्रयास है 75 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का जश्न मनाकर युवाओं को प्रेरित करने का, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिबद्धता को मजबूत करने का, अगले 25 वर्ष के भविष्य की रणनीति तय कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयासों का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक संगठनों सहित हर भारतीय को उस दिशा में अग्रसर करने का। विज्ञान के इस महाआयोजन में शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भागीदार बन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित होने के इस अवसर का लाभ उठाएं और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम से जुड़ें। पूज्यते का शुभारंभ 22 फरवरी को किया जा रहा है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम भारत की वैज्ञानिक विरासत, प्रौद्योगिकी, कौशल को प्रदर्शित करने के साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अभिनव समाधान खोजने की दिशा में एक प्रयास है। विज्ञान के इस महाआयोजन का समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्षों की वैज्ञानिक यात्रा को यादगार बनाने और भविष्य के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का यह प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी भारत सरकार की दूरदर्शी सोच को बल दे रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में हमें मिलकर काम करना होगा।
नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। कटिंग एज इनोवेशंस के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए 22 से 28 फरवरी तक चलने वाले विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत 75 स्थानों पर एक साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में एक मेगा एक्सपो और पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। 23 फरवरी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतिहास से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 24 फरवरी को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 75 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के तहत ऐसी प्रमुख खोज, नवाचार या आविष्कार को याद किया जाएगा जिसने वैश्विक विज्ञान पैमाने पर ऊंचाई से गिरता रहता है। दरभंगा हाईवे पर एक विशेष शो लाए हैं। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन भगत। आज हम आपके लिए BCT यानी बालीपाड़ा चारद्वार तवांग हाईवे पर एक विशेष शो लाए हैं। ये 317 किलोमीटर लंबा है। ये मैदानी इलाकों से लेकर निचली पहाड़ियों और काफी ऊंचाई वाले इलाकों तक जाता है, जहां अभी हम मौजूद हैं। हम आपको सीमा सड़क संगठन के साथ इसकी रोमांचक यात्रा पर ले जाएंगे। इस हाईवे का निर्माण इसी संगठन ने किया है और इसके रखरखाव में ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग कर रहा है और मौसम से होने वाली सभी तरह की चुनौतियों से जूझते हुए वो अपने सबसे कठिन काम को अंजाम देते हैं। यानी यहाँ की जीवन रेखा मानी जाने वाली इन सड़कों को सीमाओं तक मौसम की सबसे कठिन परिस्थितियों में खुली रखते हैं। चलिए देखते हैं कि वे इस कठिन कार्य को कैसे करते हैं। This road is of very major significance to us. यह सड़क न केवल सैनिकों के लिए बल्कि इस क्षेत्र के नागरिकों की आवाजाही के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश का मुख्य मार्ग है और इस सड़क पर 2 प्रमुख टनल्स भी बनाई जा रही हैं, निजुपू और सेला टनल। सेला टनल का निर्माण लगभग 13,000 फीट और उससे ज्यादा ऊंचाई पर किया जा रहा है। इसी प्रकार निजुपू टनल है, यह कम ऊंचाई पर बन रही है, लेकिन ये दोनों टनल सैनिकों के आने जाने की दूरी को काफी कम कर देंगी। But these 2 tunnels will reduce the movement of the troops drastically on this axis. विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के पिछले एपिसोड में हमने जमा देने वाली परिस्थितियों के बीच 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनने वाली सेला टनल का बारीकी से अवलोकन किया था। इस एपिसोड में भी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में हमारी यात्रा जारी है। इसमें हम देखेंगे कि सीमा सड़क संगठन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग का फायदा कैसे उठा रहा है और कैसे बिल्कुल असंभव लगने वाले नए अलाइनमेंट पर पहाड़ी सड़कों को चौड़ा कर रहा है। BRO लगभग सभी IIT, विशेष रूप से दिल्ली, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी और मुंबई के साथ सड़क निर्माण की नवीनतम तकनीक पर सहायता ले रहा है। कई जगह हमने विशेष रूप से 10 किलोमीटर की प्लास्टिक रोड बनाई है। BCD रोड पर सड़कों का स्थायी कार्य किया है और नई तकनीक के सुरक्षात्मक कार्य जैसे जियोसेल, जियोवेब्स, सीमेंट की रोड आदि सभी तकनीकों का उपयोग किया गया है। All technologies have been used on this BCD road. हम स्लोप स्टेबलाइजेशन तथा टावर बनाने में चट्टानों के मलबे से होने वाली रुकावटों में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और ज्यादा ऊंचाई वाली बर्फ से ढकी सड़कों के लिए इंटरलॉकिंग सीमेंट ब्रिक्स जैसी नई सामग्रियों के उपयोग भी देखेंगे।
इस तरह की पहल आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने में एक लंबा सफर तय करती है। इससे न केवल सामरिक बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, बल्कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और ये पहल भारत को ज्यादा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी प्रेरित कर रही है। बीसीटी रोड हरे भरे जंगलों, ढलानों और पहाड़ की चोटियों से होता हुआ तवांग की ओर जाता है। पहाड़ियों के साथ चौड़ी घाटियां और पानी के चैनल हैं। यहाँ चट्टानों के टूटने, ढीली होने और अपक्षय के कारण चट्टानों के गिरने का खतरा बना रहता है। बीसीटी और इससे जुड़ी सड़कों पर कई जगह पहाड़ों की टूटी चट्टानें बिखरी रहती हैं, जिसकी वजह से भूवैज्ञानिक विशेषताएं, भारी बारिश और तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव, ज्यादा कमजोर चोटियों से पत्थर, मिट्टी और चट्टानों के टुकड़ों का मलबा अक्सर बड़े पैमाने पर ऊंचाई से गिरता रहता है। इससे वाहनों की आवाजाही में रुकावट आती है और यहाँ तक कि जान और माल का नुकसान भी होता है। Presently, my unit is taking care of this 88 kilometer of the BCT road. वर्तमान में मेरा काम इस बीसीटी रोड यानी बलीपारा चारद्वार तवांग के 88 किलोमीटर क्षेत्र की देखभाल करना है। ये रोड अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले यह 3.75 मीटर चौड़ाई का सिंगल लेन रोड था, जिसमें बहुत सारी ढलान थी। ये किसी वाहन के लिए ठीक नहीं थी। बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती थीं। अब सरकार ने बीआरओ को राष्ट्रीय राजमार्ग को डबल लेन में बदलने का जिम्मा सौंपा है। हमने इस चौड़ाई को 3.75 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर तक कर दिया है, जिससे सड़क की कनेक्टिविटी और यातायात के आवागमन में काफी हद तक सुधार हुआ है। Which has improved the connectivity and the trafficability of the road into such a great extent. चट्टानों को गिरने से बचाने के लिए प्रेस्ड वॉल्स और रिटेनिंग वॉल्स जैसे पारंपरिक तरीके प्रभावी नहीं होते। वे देर सवेर ढह ही जाते हैं। नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी से लाभ उठाकर बीआरओ के इंजीनियर्स ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के वैज्ञानिकों से पूर्वी हिमालय की चट्टानों के लिए उपयुक्त स्वदेशी डेब्री फ्लो बैरियर्स विकसित करने में मदद ली। We use this technique where we have fragile mountains. हम इस तकनीक का उपयोग नाजुक पहाड़ी ढलानों पर करते हैं, विशेषकर उन जगहों पर जहां से मिट्टी खिसकने की संभावना होती है, जैसे कि यहाँ पर चट्टानों की गुणवत्ता खराब है और संभावना है कि मानसून के दौरान जब पानी इन चट्टानों के अंदर जाएगा तो इससे भूस्खलन हो सकता है। There are chances of triggering of the slides. आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने इस तरह चट्टानों के गिरने से होने वाले खतरों को जानने के लिए इन पहाड़ी इलाकों का सर्वेक्षण और अध्ययन किया और उन्होंने डेब्री फ्लो बैरियर टेक्निक से इसका समाधान निकाला, जिसके तहत सड़कों पर सीधे गिरने वाले मलबे को समाहित करने के लिए कमजोर साइटों के ऊपर विशेष स्टील के तारों के जाल लगाए गए हैं। लेकिन ये कठिन और खतरनाक प्रक्रिया है, इसलिए ये काम विशेष उच्च प्रशिक्षित टीमें ही करती हैं। ये डेब्री फ्लो बैरियर्स को पहाड़ों पर लगाने के लिए सुरक्षा उपकरणों को पहनकर पहाड़ों पर अपना काम करती हैं। इसमें खतरा है, समय और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। Here we are using these specialized engineering techniques to stabilize the hill slopes of these fragile mountains at a massive scale. As you can see behind यहाँ हम me, इन विशेष तकनीकों का उपयोग बड़े पैमाने पर इन नाजुक पहाड़ों की पहाड़ी ढलानों को स्थिर बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऊपर चढ़कर जो लोग काम कर रहे हैं वे विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। ये पहाड़ी ढलानों पर चढ़ते हैं और फिर जैक हैमर्स का उपयोग करके ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग के बाद वे सीटी बोल्ट्स यानी कंटिन्यूसली थ्रेडेड बोल्ट्स का उपयोग करते हैं। इन बोल्ट्स का उपयोग ढलानों पर ड्रिल करने में किया जाता है और फिर स्टील की तारों से बने जाल को पूरी पहाड़ी ढलान के शीर्ष पर लगाया जाता है। फिर स्टील के तारों से बने जाल को इन सीटी बोल्ट्स के उपयोग से फिक्स कर दिया जाता है। steel grid wire mesh is laid over the top of the complete hill slope. These steel grid wire meshes are then fixed using these CT bolts. तो चट्टान गिरने की समस्या को हल करने के लिए डेब्री फ्लो बैरियर्स कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले चट्टान के अंदर 4 मीटर लंबा पाइप डाला जाता है।
फिर पाइप के ऊपर से सीमेंट मिश्रण डाला जाता है ताकि उस क्षेत्र में किसी भी दरार या खाली जगह को पाटा जा सके। फिर एक स्टील के तार से बने जाल को पूरी चट्टान के मुहाने पर लगाया जाता है और पाइप के ऊपर स्टील ग्रिड की मदद से इसे फिक्स किया जाता है। आखिर में जाली को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए ग्रिड को बोल्ट के साथ कसा जाता है। हम यहाँ पे रॉकफॉल का काम कर रहे हैं। ये पत्थर रुकाने का जो लूज पत्थर है सर, उसको रुकाने के लिए काम कर रहे हैं सर। जो यहाँ से गाड़ी जो चलता है उसका जो खतरा है सर, वो रोकने के लिए हम काम करते हैं सर। इसमें जाली जो लगाएंगे, पत्थर बाई चांस जो ऊपर से आएगा तो जाली के अंदर ही से नीचे आएगा, बाहर निकल के नहीं आएगा सर। पर्यावरण संबंधी बाधाओं और ढीली खड़ी चट्टानों पर काम करने में जान के जोखिम के बावजूद सीमा सड़क संगठन के विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी और इसके ठेकेदार पहाड़ की चट्टानों पर इन बड़े रिंग नेट्स और दोहरे मोड़ वाले षटकोणीय जाल लगाकर हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी अरुणाचल भूदृश्य अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में 7000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित इस विस्तार में समुद्री सतह से तलहटी की 50 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से लेकर 7000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के पहाड़ शामिल हैं। इस क्षेत्र में जलवायु विविधता है, जिसमें शुष्क क्षेत्र 1000 मिलीमीटर से कम और 5700 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत में तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट गोरीचन गर्व से खड़ी है और इसके ग्लेशियरों से कामेंग नदी बहती है, जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उत्तर पूर्व भारत के अन्य पहाड़ी भागों की तरह अरुणाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में नवीन और नाजुक पर्वत हैं, जिनमें अस्थिर ढलान और डूब क्षेत्र हैं, जिससे उनमें भूस्खलन का खतरा बना रहता है। भूगर्भीय रूप से भूस्खलन किसी ढलान की प्राकृतिक स्थिरता में गड़बड़ी के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान, मलबे या मिट्टी के द्रव्यमान में नीचे की तरफ गतिशीलता होती है, जो एक तरह से बड़े पैमाने पर प्रलयकारी है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मिट्टी और चट्टानें नीचे की तरफ गति करती हैं। ज्यादातर भूस्खलन कई कारकों की वजह से होते हैं। भारी बारिश, बर्फ गिरने और ज्वालामुखी विस्फोट से ढलानें अस्थिर हो सकती हैं और इनमें दरारें भी आ सकती हैं, जिनसे आखिरकार भूस्खलन पैदा होते हैं। हाल के वर्षों में पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन का एक प्रमुख कारण वनों की कटाई, खेती, सड़कों का निर्माण या चौड़ीकरण, मशीनों से निर्माण कंपन और अन्य मानवीय गतिविधियां रही हैं। भूस्खलन से जान माल, बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान होता है। वास्तव में ये पहाड़ों के लिए असामान्य नहीं है। चरम मॉनसून के दौरान अप्रैल से सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश बारिश से सराबोर रहता है या ऊंचाई पर भारी बर्फबारी होती है। बीसीटी रोड पर भूस्खलन का मतलब अक्सर कई दिनों के लिए सड़क ब्लॉक हो सकता है। मलबे को साफ करने और सड़कों को खोलने की जिम्मेदारी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इस चुनौती से बीआरओ ही निपटता है। आपातकालीन रूप से ऐसी स्थिति आती रहती है और उसे लगातार काम करना पड़ता है। बीआरओ उन तरीकों पर काम कर रहा है जिसमें अक्सर ढहने वाली ढलानों को लंबी अवधि तक स्थिर बनाया जा सकता है। बीआरओ के इंजीनियर और भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ जहां भूस्खलन की आशंका ज्यादा होती है, वहां पहाड़ के किनारों को सुरक्षित करने और स्थिर बनाने के लिए दीर्घकालीन समाधान खोजने पर काम कर रहे हैं। इसलिए अभी भूस्खलन वाले इलाकों की पहचान करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके पीछे विचार ये है कि दीवारों को सुदृढ़ बनाने के पारंपरिक तरीकों से हटकर ढलान संरक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाए।
इसके लिए ढलानों की रूपरेखा, उसकी ढाल और उसकी भूगर्भीय संरचना के संदर्भों के अध्ययन का संयोजन जरूरी है। साथ ही नई सामग्री का उपयोग करने तथा क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए तेजी से बढ़ने वाली घास और झाड़ियां लगाने के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के साथ भी तालमेल बैठाना होगा। भूस्खलन को नियंत्रित करने की आधुनिक तकनीकों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत के लगभग 30% भाग में पहाड़ हैं और कई क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना रहता है और इससे जानमाल और संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचता है। बीसीटी राजमार्ग पर ढलानों को कैसे सुदृढ़ किया जा रहा है, इसे देखने के लिए हम बीसीटी रोड पर लगभग 200 किलोमीटर दूर सांघे के लिए रवाना हुए। इस नाजुक पहाड़ी की ढलानों पर वर्षों से भूस्खलन हो रहा है। इसके ऊपर बने एक आर्मी ट्रांजिट कैंप पर भूस्खलन से ढह जाने का खतरा बना हुआ है। सांघे में ढलान का पूरा भार नीचे की ओर खिसकना शुरू हो गया, क्योंकि मिट्टी को जोड़कर रखने वाली और कटाव संरचनाएं कमजोर हो गई थीं। भूस्खलन का एक प्रमुख कारण ढलानों के जरिए पानी के निकास का भार और तीव्रता है, जिसे पोर वाटर प्रेशर भी कहा जाता है। ये मिट्टी या चट्टान के भीतर छिद्रों के बीच के अंतराल में भूजल का दबाव होता है। पानी और गुरुत्वाकर्षण की क्रिया एक शक्तिशाली घालमेल पैदा करती है, जो किसी ढलान की FOS यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अस्थिर करती है। Presently we are at location kilometer 209. हम अभी बीसीटी रोड पर खड़े हैं, जो तवांग जाने के लिए एक मुख्य मार्ग है। हम इस वक्त जहां खड़े हैं, यह एक लैंडस्लाइड पॉइंट है। यह क्षेत्र 2013 के बाद से लैंडस्लाइड के लिए जाना जाता है और यह बीसीटी रोड पर एक प्रमुख अवरोध बिंदु है। पारंपरिक पद्धति यहाँ सफल नहीं रही, इसलिए हमने यहाँ ढलान स्थिरीकरण तकनीक को अपनाया है। Slow stabilization technique here. इस पहाड़ी को स्थिर करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी समाधान की जरूरत थी, जो कि इस गंभीर समस्या का दीर्घकालीन समाधान प्रदान कर सके। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की परामर्श सेवाएं ली गईं। ढलान स्थिरीकरण तकनीकों का उद्देश्य किसी ढलान के सुरक्षा कारकों को एक स्वीकार्य पर्याप्त स्तर तक बढ़ाना है। ये विभिन्न सहारों के उपयोग से मिट्टी को स्थिर करने के यांत्रिक गुणों को बढ़ाकर किया जाता है। इनमें रॉक बोल्ट्स, जियोसिंथेटिक रीइंफोर्समेंट जैसे ट्री स्ट्रेस्ड एंकर्स शामिल हैं, जिन्हें पानी की निकासी के साथ जोड़ा जाता है। जहां पानी की नालियों का उपयोग चट्टानों में पानी के घुसने को कम करने और भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हमने मिट्टी में कटाव को नियंत्रित करने के लिए 3D जियोमैट्स का उपयोग किया है। यह स्टील के तारों के जाल के साथ अंतर्निहित है और इसे 32 mm डायोड रॉक बोल्ट्स के साथ जोड़ा जाता है, ताकि ढलान को ढहने से रोका जा सके। जियोमैट्स के फायदों में से एक ये भी है कि उन्हें सभी मौसमों में स्थापित करना आसान है। आइए देखते हैं कि इस तकनीक को ढलान पर कैसे लागू किया जाता है। पहला कदम साइट की तैयारी करना है, जहां मौजूदा वनस्पति, चट्टानों और मलबे को ढलान से हटा दिया जाता है। जियोमैट्स को ढलान की लंबाई से नीचे रखा गया है। फिर एंकर्स को ढलान पर जियोमैट को संभाले रखने के लिए तार की जाली के साथ रखा जाता है। इसके बाद पूरी ढलान पर जैविक मिट्टी को हाइड्रोलिक रूप से लगाया जाता है। हमने जैविक मृदा माध्यम का उपयोग किया है, जो घास के विकास में उपयोग किया जाता है, ताकि उनकी जड़ें स्थिर हो जाएं, जिससे मिट्टी भी स्थिर हो जाए। इससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है। इसलिए हमने इस जैविक मृदा माध्यम को हाइड्रोलिक रूप से लगाया है, जो कवक, फ्यूमिक एसिड और समुद्री खरपतवार का संयोजन है। इसलिए यह घास को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे घास को तेजी से विकसित होने में मदद मिलती है। सांघी स्लाइड पॉइंट अब सुरक्षित और स्थिर हो गया है। ये विशाल ढलान धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से BRO के प्रयासों से पुराने रूप में वापस आ रहा है। अगले कुछ वर्षों में ये पूरी तरह से वनस्पति से ढक जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण और अद्भुत उदाहरण है कि कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और साथ ही हमारे देश को विकास करने में मदद कर सकते हैं। हम सेला दर्रे वाला रास्ता अपनाकर तवांग की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कठोर जलवायु परिस्थितियों की विशेषता
मुख्य रूप से भारी हिमपात के रूप में सामने आती है। इन भागों में जिन सड़कों का निर्माण कष्ट सहकर किया गया है, वे चरम जलवायु परिस्थितियों को झेलती हैं। At present, we are at 13,000 feet. इस समय हम 13,000 फीट पर हैं और सर्दियों के दौरान ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ को हटाना हमारी मुख्य गतिविधि होती है। ये काम मैनुअल या यांत्रिक रूप से किया जा सकता है। यहाँ हम मैनुअल रूप से कर रहे हैं। बर्फ हटाने का काम रासायनिक और यांत्रिक तरीके से किया जा सकता है। यहाँ हम रासायनिक रूप से काम कर रहे हैं। इस काम के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन सामान्य नमक है। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। यह -18 डिग्री सेल्सियस तक पानी जमने वाले बिंदु को कम करता है। दूसरा पदार्थ जो हम उपयोग कर रहे हैं वह यूरिया है। यूरिया पानी के गलन बिंदु को भी कम कर देता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। और हम रेत जैसी निष्क्रिय करने वाली सामग्री का भी उपयोग कर रहे हैं। And we can also use inert material, that is sand. इन सड़कों के निर्माण और रखरखाव के दौरान बीआरओ के सामने कई चुनौतियों में से एक है संसाधन जुटाना। सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पत्थर की रोड़ियां, रेत, डामर और निर्माण के लिए भारी मशीनरी तथा सामग्री के परिवहन की आवश्यकता होती है। 0 से कम तापमान में इन सामग्रियों के परिवहन और लॉजिस्टिक की व्यवस्था करना वास्तव में एक अत्यंत कठिन प्रयास है। पत्थर की रोड़ियों को सड़क का आधार बनाने में उपयोग किया जाता है। इनकी बड़ी मात्रा में खरीद करना मुश्किल है, इसलिए बीआरओ सड़क निर्माण के लिए लंबे समय से स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों की तलाश में है। Our main issue in the entire इस पूरे प्रोजेक्ट AOR में हमारा मुख्य मुद्दा, और यदि आप कहें कि पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में रोड़ियों की कमी है जो सड़क की निचली परत और ऊपर के काले आवरण के लिए आवश्यक है। इसलिए अब हम सीमेंट बेस के उपयोग से नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं जिसमें काली सड़क के नीचे रोड़ियों की परतें कम हो जाती है और आप इसे सीमेंट के साथ स्थानीय मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। निचली परत बनाने के लिए सीमेंट में कुछ मिश्रण मिलाते हैं और उसके बाद ऊपर की काली परत की मोटाई भी कम हो जाती है। इसलिए हम जितनी रोड़ियों का उपयोग कर रहे हैं उसमें काफी हद तक कटौती हो जाती है। सीमेंट का बेस एक प्रकार की सीमेंट की मिट्टी है जिसमें स्थानीय मिट्टी और तैयार की गई रोड़ियों का मिश्रण होता है तथा सीमेंट और पानी की मानक मात्रा होती है जो एक मजबूत, टिकाऊ और ठंड प्रतिरोधी फर्श सामग्री बनाने के लिए संघनन और संसाधित होने के बाद कठोर हो जाती है। ये एक सीमेंटेड ठोस सामग्री है जो इस पर पड़ने वाले भार को ज्यादा जगह पर बांट देती है। सड़क निर्माण की इस तकनीक में सड़कों के उप आधार बनाने में रोड़ियों की आवश्यकता होती है और ये ठंड, बारिश और वसंत के मौसम से होने वाली क्षति के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होती है। लेकिन ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीआरओ के लिए शायद सबसे कठिन चुनौती है बर्फबारी का होना जो सड़कों पर जमा हो जाती है। निरंतर ठंड और हिम द्रवण की क्रिया से सड़क की परतें कमजोर होती हैं और फट जाती हैं। बर्फ साफ करने की प्रक्रिया में अक्सर बर्फ की परतें सड़क की सतह को फाड़ देती हैं। इसे दूर करने के लिए ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीआरओ ILCB यानी इंटरलिंक किए गए कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग करके सड़क निर्माण के लिए एक अपेक्षाकृत नई तकनीक का फायदा उठा रहा है। मेरा क्षेत्र 10,000 फीट से 16,000 फीट की ऊंचाई के बीच फैला है और इसमें बहुत सारे दर्रे जुड़ते हैं। यह बर्फ से ढके ऐसे क्षेत्र हैं जहां 6 महीने तक सर्दियां और 3 से 4 महीने बारिश का मौसम रहता है। इसलिए हम ILCB यानी इंटरलिंक्ड कंक्रीट ब्लॉक का उपयोग करके सड़क को पक्का करने में इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। ये सेना की गाड़ियों के साथ साथ बुलडोजर की हलचल को भी आसानी से झेल लेता है। दूसरी बात यह है कि इस पर बर्फ बहुत आसानी से पिघल जाती है। इंटरलॉकिंग ईंटों का उपयोग करने की निर्माण विधि को काफी पसंद किया जा रहा है क्योंकि ये निर्माण सामग्री की मात्रा, निर्माण की लागत और निर्माण में लगने वाले समय को कम कर देती है। तो आइए देखते हैं कि इस तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है। पहले साइट की पहचान की जाती है और मिट्टी को समतल किया जाता है। फिर सब बेस की पहला ग्रैन्युलर सब बेस रखा जाता है। ग्रैन्युलर सब बेस GSB की नींव में एक ऐसी परत है
जो जल निकासी परत की तरह काम करता है, जहां से पानी सड़क के अन्य परतों को नुकसान पहुंचाए बिना गुजर सकता है। फिर पानी युक्त मैकाडम की दूसरी लेयर रखी जाती है। ये बजरी और पानी से एक साथ गूंथी हुई रेडियों की परत होती है। ये सड़क को मजबूती प्रदान करती है। फिर रेत की तीसरी परत WBM पर डाली जाती है, जिस पर ब्लॉक लगाए जाते हैं और इंटरलॉक किया जाता है। फिर ब्लॉक के जोड़ों को ठीक सामग्री का उपयोग करके भरा जाता है। अंत में सड़क के दोनों किनारों पर अवरोध या कर्ब स्टोन्स लगाए जाते हैं। उचित अवरोधों के बिना फर्श के पत्थर अपनी जगह से हट सकते हैं। हम अभी 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हैं। ये सड़क हमें चीन की सीमा तक ले जाती है। ये काफी दूर दराज का इलाका है और ये सड़कें हमारे सैनिक अड्डों के लिए जीवन रेखा का काम करती हैं। आज का हमारा ये शो BCT राजमार्ग पर केंद्रित था, जिसका रखरखाव सीमा सड़क संगठन के लिए काफी मुश्किल काम है। सुरक्षा की इन जीवन रेखाओं को खुला रखने के लिए BRO विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के कौशल का भरपूर उपयोग कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये शो देखने में उतना ही मजा आया होगा जितना कि हमें विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड को बनाने में आया है। इसके साथ अर्जुन भगत को दें इजाजत। जय हिंद। ...21st century engineering marvels. Behind me is the Atal Tunnel at Rohtang, the longest tunnel above 10,000 feet in the Himalayas. मैं मानता हूं कि अटल टनल रोहतांग देशवासियों और खास तौर पर हिमाचल वासियों के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्नेह, सहयोग, प्रेम और उनके कंसर्न को दर्शाता है। लगभग 20 वर्ष पहले उन्होंने स्थानीय जनता की ज़रूरत को समझा और इस टनल का सपना देखा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन करके हिमाचल प्रदेश की जनता के सपनों और उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा किया है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी और 9 किलोमीटर से भी अधिक लंबी यह टनल न केवल सबसे लंबी बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है। टफेस्ट जियोलॉजीज और बीच में पड़ रहे लार्जेस्ट शियर जोन के कारण इसके निर्माण की राह कोई आसान नहीं थी, पर इन सभी मुश्किलों को पार करते हुए अटल टनल को पूरा कर हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने अपनी दृढ़ता और संकल्प को दर्शाया है। कठोर चट्टानों के 2 किलोमीटर नीचे इस टनल का होना स्वयं हमारे देश के टेक्निकल कॉम्पिटेंस का एक प्रमाण है। इस प्रोजेक्ट के अधिकांश कार्य हमारे अपने इंजीनियर्स द्वारा पूरे किए गए हैं। इसलिए अटल टनल रोहतांग का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के हमारे एस्पिरेशंस और हमारे इंजीनियर्स को नई स्किल्स से लैस करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं यह मानता हूं कि यह अटल टनल रोहतांग का हमारे देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस भी है। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में थेंग टनल का निर्माण किया है। 4 धाम एक्सिस पर उत्तराखंड में चंबा टनल पूरी हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में सेला और नेचपू टनल का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन सुरंगों का निर्माण हमारे देश की इन हाउस कैपेसिटी को भी दर्शाता है। अपनी इन क्षमताओं के चलते अब हम देश के बाहर भी टनल कंस्ट्रक्शंस का जिम्मा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस प्रकार यह मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड
की भी हमारी आकांक्षा को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। Atal Tunnel is a gold standard benchmark world over. It's a world-class work which will showcase India's engineering ability to work in extremely difficult terrain, both not only in terms of heights, the kind of rock strata and the variation in terms of the fragile work environment, terrain in which they have to work. I think BRO can truly be proud of its work when we look at Atal Tunnel. And in fact, I would say the nation is proud of the work which BRO has done. I would even say that nation is indebted to BRO and its employees for the work it has done. BRO employees sacrifice a lot when they work. They work in difficult conditions, dangerous conditions, and doing such difficult work in these conditions is really something which creates a model for all of us in terms of their dedication, their commitment to the cause of nation's development, and of course to provide strategic infrastructure for our nation's security. And to explain to us the complexities of the making of this tunnel, we have with us Lieutenant General Rajiv Chaudhary. He's a civil engineer, and incidentally, both General Chaudhary and I share an alumnus, the Indian Institute of Science, Bangalore. Thanks a lot for joining us, General. I salute you also for being here at this height of 10,062 feet, and you have made it. I'm quite impressed with that. Thanks a lot. General, why should India be proud of what we see behind us, the Atal Tunnel? Firstly, this is the longest tunnel what has been constructed in the world by any engineers. This is 9,000 meters long tunnel, above 10,000 feet. And for your information, the second tunnel in the world above 10,000 feet is only 2.72 kilometers in USA, Eisenhower Tunnel. You can understand the jump what India has taken over the technology over 10,000 feet in tunnels. So it's a major breakthrough, and this tunnel is not connecting the places as it will be connecting Lahaul-Spiti people. It is also connecting the people of Lahaul-Spiti which were cut off for approximately 6 months from the mainland. So we are connecting the culture, we are connecting people, we are connecting places. So you're joining hearts. Yes. So, and this tunnel has got a lot of strategic value and lot of socio-economic importance. The Border Roads Organization works in some of the other more difficult conditions. Tell me, from the deserts to the sea, where all and how difficult the conditions are. To Indra Point, which is the highest airfield we have. Highest airfield in Ladakh. Absolutely. And goes down below to Indra Point, which is the lowest point of our Indian subcontinent. Which is the southernmost point on Great Nicobar. Absolutely. And also from Thar Desert in the west to Arunachal Pradesh, which is the easternmost part of the country. So we are spread across the country. We are joining people and places, as I told you earlier, and we are joining cultures. How do you lead such a diverse pool of people? No, that is a very difficult question. I don't lead. I just facilitate people. Oh, lovely. I don't lead. I don't do anything. It is just
I do little things to increase and infuse that motivation. We see a lot of concrete here. What are these concrete This structures is here? basically to stabilize the hillside, which is very fragile. Okay. If you see the fall, it is nearly 90 degree. Okay. And these mountains, under the pressure of the snow and on its own pressure, they sometimes start crumbling and come down on the road in form of debris, so which blocks the traffic. So we do shotcreting, and this is called bolting. And those pipes you see, yeah, they're called weep holes. Okay. Okay. So that mountain, when it weeps, in the sense when the water gets seeped into the mountain side, it has to be given outlet. So they are the weep holes and the bolts and the shotcreting, basically to stabilize the mountain side. Lovely. Let's take a look at some of the other work. At the Atal Tunnel, General Rajiv Chaudhary gave us a broad overview. Now let's meet some of the key people who made the tunnel possible. We have with us Chief Engineer K.P. Purushothaman. He hails from Kerala but works at over 3,000 meters and made this tunnel. So Purushottam, how easy or difficult, and what are the peculiarities of this tunnel? Yeah, this is one of the most difficult tunnel, I would like to say, in the world. And this is having the record of the longest highway tunnel above 10,000 feet altitude. This tunnel is having all the modern facilities which a highway tunnel is required to have. So we have got the salient features. I would like to say length of the tunnel is 9 kilometers, and the levels on both sides, north portal and south portal, is 3060 meter and 3071 meters respectively. And by constructing this tunnel, we are saving a length of 46 kilometer distance of the road. Let's also talk to Brigadier Baghi. Brigadier Baghi, there are challenges on the south portal, there are challenges on the north portal. What was the big challenge on the north portal? The biggest challenge on the north portal was connecting the tunnel's north portal to the main axis, that is the Manali-Leh axis. So for which we had to construct 100-meter bridge, which was the biggest challenge in the time-bound manner approach, and the 100-meter bridge, which was to be made in the least time frame, that was almost 3 to 4 months. I think that was the biggest feat achieved by the Project Deepak and the task force of 38 task force. India is blessed to have officers like you. Colonel Umashankar, the tunnel is one bit, but reaching the tunnel and going out of the tunnel, what was your key role? See, our role was to provide connectivity to both ends of the tunnel, especially at the north portal. North portal, there was no connectivity. Earlier, it was connected through a Bailey bridge, which was for class 40 capacity. So we had to enhance the capacity to class 70. So our main role was to provide that class 70 connectivity to tunnel and to connect that tunnel to the national highway. So what does class 70 mean? That is 70 ton load it can take on. Meaning it should be the bridge should be able to carry a 70 ton, and that is largely for tanks. roughly, yes. So you are providing strategic connectivity. Strategic connectivity to the tunnel to the main national highway 3, that is Manali-Leh highway. That was our main role. Wonderful. Thanks a lot and God bless you, sir. Now let's go inside the Atal tunnel itself, the 21st century engineering marvel. Now we are inside the Rohtang tunnel, as it was called. Subsequently, it was named after visionary Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, who used to love Kullu Manali as the Atal tunnel. General Chaudhary, what is the larger vision of the Border Road Organization and of the nation for connecting India? If you see, last 60 years, we have been working in 12 states, and now, of course, 4 more UTs, where Union Territories, where we have been connecting the most difficult places in rough weather conditions and bringing people together. Our vision is there to make it faster. There are number of more such projects which are being integrated by the government, seeing our expertise on the border areas, difficult terrain, inhospitable weather conditions. So there are
projects like Bharatmala project, SARDP project. What is SARTP, sir? That is Special Accelerated Road Development Projects. Late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee gave the concept of the golden quadrilateral. Absolutely. Now, Prime Minister Narendra Modi, in his own way, how is he helping connect India? Now, if you see the vision of late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, it was golden quadrilateral, which accelerated the growth of the country, increasing the trade. A lot of freight moves on those roads today. And also the connectivity from the east to west corridor, north to south corridor. Now, present Prime Minister, Honorable Narendra Modi, is connecting the borders through the Bharatmala project. All starting from Gujarat, Rajasthan, Punjab, these three UTs which have been created, Jammu, Valley and Ladakh, then Himachal Pradesh, Uttarakhand, and spread all along to the eastern states. So it's a huge project where number of roads have been given to border roads because other agencies have not got that kind of expertise to reach those areas which are far-flung areas. Let's now, from having looked at your vision, let's take a look at one of the most challenging parts of making of the Atal Tunnel, which is the Seri Nala challenge. Let's go, sir. We are inside the Atal Tunnel, and above me is the notorious Seri Nala. General Chaudhary, how did you and your team tame this Seri Nala? It looks so tame just now. You see, when the tunnel was being made, it was known that there is a Seri Nala, but the quantum of water it was carrying along with it and the muck hitting the tunnel alignment was not really known because it was below the surface. And geostrata is very complex down below the ground. So thereafter we exposed that Seri Nala and did lot of technical analysis, and we came to know approximately 8,400 liters per minute water was hitting the tunnel alignment. 8,400 liters? Yeah. On an average, we consume between 3 and 7 liters of water. So that's the number. And you cannot understate the power of water. It is so strong, it can take away anything along with it. So immediately we had to find the technical solution to that force of water which was coming and hitting the tunnel alignment. So what we did lot of channelizing of that water along the tunnel. For that, there was a proper drain. You can see this drain, which is the approximately now this water has been channelized and 6,000 liters per minute is coming through this drain, and other water has been stopped using the short treating of the sides of the tunnels where it was seeping and leaking through the sides also. So it was making gradually the sides weaker. So that has been stopped by a lot of waterproofing treatments, lot of waterproofing layers have been put. There have been pipes laid all along the tunnel in this section which will take this water and drain that water into the proper pipes which have been laid here. So if I can summarize, essentially you put a river under the tunnel also. Absolutely. So we have given that way, proper way to the water which was hitting the tunnel in different sections. So all that water now is passing through this drain. Sir, in so many tunnels I have visited, there is always water seeping from somewhere or the other. This is a very dry tunnel. Is it new? And how long will this tunnel last? Now that is a very important question, and that is also a very technical question. World over, wherever we make tunnels in the mountains, because mountains have got their capillaries, wherever the water will flow, it will flow through the mountains, subsurface and on the surface. Okay? So it is bound to hit the tunnels whenever we dig the tunnels in the mountains. However, today we are in 21st century where we have got a lot of effective solutions to this draining of this water in a proper channel. And what you asked me
how long this tunnel will last. I would say on paper 100 years. That is the nominal life. Nominal life, but it will go for 200 years and beyond. So Which your is- generations, maybe 5-6 generations will see. It depends on these officers how well they maintain. Yeah. Now So let's go and it's going see- to stay. Now let's go and see. You have a very special part of the tunnel, which is an escape tunnel, which is right below the tunnel. Correct? Yeah. Let's go and see that, sir. General Chaudhary, where are we? This seems like a smaller tunnel. Yeah, we are in the escape tunnel. In case of any eventuality accident in the main tunnel, and people have to be evacuated because of some fire reasons or accident, so there is a tunnel below the tunnel, and this is 3.6 meter wide and 2.25 meters high, and this is all along the tunnel, and there are 18 entry points in the tunnel where you can escape and be safe. When does one use it? When does one use it? In that eventuality will not come, but we also plan for all the options. You see, in case of fire or in case of some kind of accident within the tunnel, and people have to be taken to safe place. So this is the passage which we use to take them out of the tunnel. Normally, it is on the side of the tunnel. Why Yeah. is it below the tunnel? So that is it safe? That is, yes, that is very safe. That is the unique feature, structural feature of this tunnel, that there are 4 levels of this tunnel. Now we are standing at the 2nd level. What you see here, this is the lowest level. This is the drain, what I explained you there, where all the water, which is coming from the sides, is being channelized. Half of this water goes on the north side, and half of the water goes on the south side. This is the 2nd level we are standing, escape tunnel. On top is the tunnel, and above the tunnel is also the ventilation shaft, where all the gases or polluted air, which is created due to the passage of the vehicles, that is collected and thrown out of the tunnel. And you also have ducts where you carry some cables? Yeah, there are the ducts on the sides of the tunnel. All your communication cables, your electric cables, any other cables which are related to the services within the tunnel, they are taken, they are integrated, they are taken out of the tunnel, and there are also electric cables which are going to the Lahore Spiti area for their electricity requirements. So there are a huge number of services which had to be planned and integrated within the tunnel. Let's take a little look at the escape tunnel a little more. Yes. We have now come into the scenic Lahore Spiti Valley. 4 decades ago, when I crossed the Rohtang tunnel, it would have been impossible to stand here in December. The temperature right now is minus 15 degrees centigrade, General. Absolutely. Both of us are braving the cold. Yeah, every one of us, every one of us. So we are here in the North Portal. What happens in winter when there was no tunnel at this point? When there is no tunnel, at this place where we are standing, during the winters, there was approximately 30 to 40 feet of snow accumulated. So you can well imagine what is the importance of So this. high. So high. And South Portal, the accumulation of snow was approximately 6 to 10 feet. So this place is really chilling. Let's now meet some of the people who were involved in the making of the tunnel and some of the locals who have benefited from the tunnel. आपका क्या नाम है? रुद्राम जी। रुद्राम जी। रुद्राम। रुद्राम जी। आप इसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इसमें रहे हैं बनाने में? इसको बनाते तो लगे हुए, मैं तो साइड में रहता हूँ ना सर। साइड में रहते हैं आप? जी, साइड अच्छा। में था ही रोड में, मैंने ये रोड कटिंग किया सन 86 से। 86 से आप हैं? जी सर। तो हमें बहुत फक्र है आपके ऊपर कि आपने लगातार, कितनी उम्र हो गई है? अब तो 60-70 में पहुँच गए सर। 60-70? 70 में पहुँच 70 में आप 70 साल में इतने फिट है और एकदम -15 डिग्री में खड़े हैं। तो ये टनल आने से आपको कुछ लगता है कि जो लाहौल स्पीति के लोग हैं और उधर के जो गांव हैं उनसे कुछ फायदा होगा? बहुत ही फायदा होगा सर। बहुत फायदा होगा? अब 6 महीने तो घर में रहते थे। अच्छा। फिर अपने और तांग होकर आना है। अब तो डेली आना जाना, राशन पानी में नाली चला रहे। ओके सुरेंद्र, आप ये बताएं कि इस टनल के बनने से आपको क्या लगता है कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है, आपके रिलेटिव्स को, बच्चों को कैसे आपको फ़ायदा हुआ है?
फायदा तो बहुत हो जाए हमारे। सबसे पहली बात तो हमारे को फसल जो हम मंडी तक पहुंचाते हैं उसके कैरेज कम हो गए हैं। बच्चे आते जाते रहते हैं अब। उनके हाँ जी, उनके पढ़ाई लिखाई में हाँ जी, एक लड़का कोई मेरा फ़ायदा स्कूल है? में, एक कुल्लू में पढ़ता है। अच्छा अच्छा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो ये अपनी विकास की जो सोच है उनकी, उसमें कई सारी टनल्स बनेंगी देश में। तो उसके बनने से आपको लगता है कि ये सारा जो यहाँ का एरिया है जो नेग्लेक्टेड था वो सब इकट्ठा होगा और देश के साथ में जो मेनलैंड है हमारा उससे जुड़ेगा? आर्थिक स्थिति में तो बहुत सुधार आएगा। बहुत सुधार आएगा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है रुलदू, बहुत अच्छा है। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। 70 साल में भी आप इतने फिट हैं। बहुत धन्यवाद आपसे बात। जनरल चौधरी, we are in Lahaul and Spiti, very cold out here. How much more work do you have further? I quantify the work because there's no limit to work. We have been working for 60 years on the borders, but I can certainly tell you the progress of work is going to accelerate. The momentum what we have achieved in last few years, it is going to double every year, or at least if not double every year, every 2 years, because the kind of planning which has been done by our Honorable Prime Minister to connect all the places on the borders through various schemes, that is going to keep us busy. And the number of tunnels what we are going to make to connect remote places, like we are also planning Shinkunla here to connect another road to Leh. Then we are also planning Jozila. So there are a number of tunnels going to come, and I don't think so there is going to be any end to this. Both of us have red noses now because of the cold. Delight speaking to you. India is very proud of you and of your men. Keep working hard, and I'm sure the country will see many more roads being connected and many more hearts being connected. मैं यही कहना चाहूँगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी आर्म फोर्सेस के लिए सीमाई इलाकों में रोड्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण और उनका रख रखाव करके देश की सुरक्षा और अखंडता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उनमें से अनेक इलाके तो क्लाइमेट और टोपोग्राफी की दृष्टि से दुनिया के सर्वाधिक कठिन इलाके हैं। हाल के दिनों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टाइम और स्पेस दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे आया था। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से देश की उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के बाद देश अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स के लिए लेटेस्ट कटिंग एज एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर देख रहा है। मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सभी कर्मियों को तहे दिल बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, जिनकी निरंतर समर्पण और बलिदान के कारण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आज इस ऊंचाई पर है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। We have done several reforms in the functioning of BRO which has enabled it to grow fast. Today, BRO is using the latest technologies and one of the latest construction equipment required for building in difficult terrain areas. We have strengthened the capabilities of our employees who are working in high altitude areas by providing them special winter clothing. That has elongated the period in which BRO can function. Today, BRO is extensively using digital technologies, which has enabled better project management and improved monitoring. BRO has also shown tremendous amount of resilience to do work. Recently, for example, the Jozila tunnel which connects to Leh from Srinagar was kept open up to December 31st, which is a record in itself. Typically, otherwise, this road used to be previously closed late in October or early November at best. These capabilities has enabled BRO to stretch the period in which in difficult terrain, lot of snow, 20-30 feet of snow, BRO is able to work. One more important step that has been taken has been with respect to
increased budgetary allocation. Government has been supporting BRO with increased budgetary allocation, and to further leverage that, we have given enhanced delegation of financial powers to DG BRO and other officers of BRO. So all these steps put together has enabled, much greater leverage and much greater efficiency in the functioning of BRO. From this scenic Lahaul and Spiti Valley with the north portal of the Atal Tunnel, trust me, in December, in deep winter, it would have been impossible to come here. Only the Atal Tunnel has made it possible. Keep watching India Science.
2016 से अपने खेतों में खूबसूरत फूलों वाले लैवेंडर की खेती शुरू की है। डिस्ट्रिक्ट डोडा के ही बंदों को और किश्तवाड़ या जो भी ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर जो रहते हैं उनको लैवेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए, लैवेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। और लैवेंडर जो है इस वक्त हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। करीब 2500 मीटर की हाइट पर आप इसका देखेंगे कितनी फुल ब्लूमिंग में है ये पूरी की पूरी क्रॉप। और ये एक ऐसी क्रॉप है जो यहाँ के फार्मर्स का भविष्य बदल सकती है। जैसा कि अरोमा मिशन का हमारा लक्ष्य है किसानों की आय को दुगने से ज़्यादा बढ़ाना। विगत कुछ साल से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के चकोटधार के किसान दर्शन लाल भी जंगली गेंदा यानी वाइल्ड मैरीगोल्ड की खेती बड़े उत्साह से कर रहे हैं। जहां मेरी मक्की 15 कुंटल निकलती है, ये वहां 30-35 कुंटल निकलता है। रेट बराबर जा रहा है, मक्की 1400 हुई, ये 1500 है। सुगंध और औषधीय गुणों से परिपूर्ण हल्दी तो हमेशा से भारतीय खानपान का अभिन्न हिस्सा रही है, मगर गुणकारी हल्दी के पत्तों से बड़े स्तर पर तेल निकालने के लिए प्रयास हाल ही में शुरू हुए हैं। और ऐसा हो रहा है क्योंकि देश भर के किसान एक सार्थक बदलाव, एक मिशन का हिस्सा बन रहे हैं, जिसके तहत किसान अपने खेतों में ऐसी फसल लगा रहे हैं जिनसे औषधीय गुणों से युक्त सुगंधित तेल तैयार किया जाता है। इस मिशन का नाम है अरोमा मिशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, अरोमा यानी सुगंध। ये सुगंध हमारे आम जीवन का अभिन्न हिस्सा है। साबुन, तेल, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, दवाइयां, खाद्य सामग्री, परफ्यूम्स, हम में से हर व्यक्ति इन वस्तुओं का उपयोग रोज हर दिन करते हैं। खुशबू के बगैर हम रोजमर्रा की इन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। सुबह जब हम उठते हैं और हम ब्रश करते हैं तो वहीं से ही एसेंशियल ऑयल का रोल शुरू हो जाता है। अगर आपके टूथपेस्ट में मिंटी स्मेल ना हो, वो जो फ्रेशनेस आती है जो कि पुदीने के तेल में होती है, तो उससे जो है हमारा ब्रश करते हैं और हमें बड़ी सूदिंग सी बड़ी अच्छी स्मेल मिलती है। फिर हम अगर स्नान करने जाते हैं और साबुन में खुशबू ना हो तो भी हम नहीं चल सकते हैं। अब सवाल है, हमारी जिंदगी की तमाम जरूरी चीजों में खुशबू कहां से आती है? इसके पीछे है अरोमा मिशन की दूरदर्शी सोच और देश के किसानों की मेहनत। सगंध पौध यानी अरोमा क्रॉप्स की खेती से इंडस्ट्री को बेशकीमती सुगंधित प्राकृतिक तेल मिलता है, जो अलग अलग माध्यमों से हमारी और आपकी जिंदगियों में सुगंध पहुंचाता है और पहुंचती हैं खुशियां अरोमा क्रॉप्स की खेती करने वाले किसानों के घर तक। बंदर वगैरह जैसे जमीन खाली रहती थी हमारी, बंदर खा जाते थे, मक्की को बंदर खा जाते थे। जैसे कि फिर हमने गेंदा शुरू कर दिया, जंगली गेंदा बीजना। ये IHBT पालमपुर वाले ने ऐसा बताया कि अरे खेती खाली क्यों है ये ज़मीन। हमने कहा बंदर खाते हैं, क्या करना है इसमें। फिर उन्होंने बीज बाज दिया, फिर हमने इसका जो तो बीज फेंका ज़मीन में और काफ़ी फसल आने लगी। ये एरोमेटिक जो प्लांट्स है, इससे हमें यही फ़ायदा दिखाई दिया कि मक्की और धान जो गेहूं से ये 3-4 गुना ज़्यादा है। सगंध पौध यानी अरोमा क्रॉप्स की खेती का रकबा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत जल्द ही देश की इंडस्ट्री की एसेंशियल ऑयल की जरूरत भी हिंदुस्तान के खेतों में उपजे अरोमा क्रॉप से पूरी हो जाएगी और कुछ साल बाद प्राकृतिक खुशबूदार तेल की ग्लोबल डिमांड पूरी करने में भी भारत बड़ा भागीदार होगा। आज से करीब 30 साल पहले हमारा देश मेंथोल का आयात करता था और पिछले 20 साल से हमारे सीमैप के कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिंट ऑयल प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बने हुए हैं। दुनिया का जो नेचुरल मेंथोल टोटल प्रोड्यूस होता है उसका 80% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। मेंथा को छोड़ के हम लोग और एटलीस्ट 4-5 क्रॉप में इंडिया को नंबर 1 बना लें, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। इससे हमारे किसान भाइयों को भी बहुत फ़ायदा होगा और हम लोग भी
जो इंपोर्ट करते हैं आज बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, इसके जगह में हम लोग हो सकता है कि एक्सपोर्ट भी करने लगे। CSIR लैब IIIM जम्मू के वैज्ञानिकों की दो टीमें सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर जम्मू से और कश्मीर से डोडा जिले के भदरवा पहुंची हैं, ताकि किसानों में लैवेंडर के पौधे मुफ्त बांट सकें। मकसद ये कि कश्मीर की तर्ज पर जम्मू क्षेत्र की ये चिनाब वैली भी एक दिन लैवेंडर वैली बनकर विश्व पटल पर स्थापित हो सके और यहाँ के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल जाए। हिस्टोरिकली जो हम पिछले 15-20 साल से लैवेंडर कश्मीर वैली में कर रहे थे IIIM, और 4-5 साल पहले हमने इसको सोचा कि क्यों ना हम इसको जम्मू में ले आएँ, क्योंकि वेदर एक सा है, बर्फ़ चाहिए इसको, बर्फ़ यहाँ भी पड़ती है, अल्टीट्यूड भी वही है। तो यहाँ पर जब हमने लैवेंडर इंट्रोड्यूस किया तो जो पिकअप हुआ फार्मर्स के अंदर वो बहुत रैपिडली हुआ, कश्मीर से भी ज़्यादा तेज़ी से हुआ, और जो ऑयल प्रोड्यूस हुआ वो एक्चुअली सुपीरियर क्वालिटी का ऑयल प्रोड्यूस हुआ। तो जो वैल्यू है 10-11 हज़ार रुपये तक फार्मर्स को इसकी वैल्यू मिल रही है। जम्मू क्षेत्र की चिनाब वैली से करीब 500 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के मंडी के चकोटधार के किसान भी सगंध पौध यानी अरोमा क्रॉप्स की खेती से खासे उत्साहित हैं। जब हमारा गेंदा ना इसमें मेहनत करना हमने, ना तो इसको बंदर देखना है ना तो सूर देखना है। ये एक्चुअली 15 क्विंटल जहाँ मक्की निकलती है ये हमारा 30-40 क्विंटल निकलता है। आवश्यकता पड़ने पर IHBT की तरफ से ऐसे मोबाइल डिस्टिलेशन यूनिट्स हार्वेस्टिंग सीजन में किसानों के बीच पहुंचा दिए जाते हैं, ताकि किसान अपनी तैयार फसल डीलर या बिचौलिए को देने की बजाय इसका तेल निकालकर सीधे बाजार में बेचें और बेहतर मुनाफा कमाकर खुद की और देश की आर्थिक तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। ये छोटे डिस्टिलेशन यूनिट हैं और किसान के छोटे छोटे जो क्लस्टर्स होते हैं जिसमें 15 से 20 किसान होते हैं, और हम उनको उन्हीं के जो उनकी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं उनके तहत हम उन्हीं के फील्ड में इनको डिस्टिलेशन यूनिट को एस्टेब्लिश करते हैं और उनको हम पूरी प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि वो अपना जो फसलों का तेल है उसको वो डिस्टिल कर सकें और उसको खुद अपना तेल तैयार कर सकें और वैल्यू एडिशन कर सकें अपनी फसल के लिए। अरोमा मिशन की सफलता के पीछे CSIR के सभी पार्टिसिपेटिंग लैब्स के वैज्ञानिकों का निरंतर प्रयास है। हमारी 5 प्रयोगशालाएं हैं। एक जोरहाट में है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कैटर करती है, दूसरा एक जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, वो मिलकर काम कर रही है, एक पालमपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी है, और 2 प्रयोगशालाएं, एक हमारी प्रयोगशाला, एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये 5 प्रयोगशालाएं मिल करके मिशन मोड में किसानों की बेहतरी के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए एरोमेटिक क्रॉप्स का डिप्लॉयमेंट, उसकी खेती को प्रमोट कर रहे हैं। लक्ष्य रखा गया है कि 3 साल में पूरे देश में कम से कम 6000 हेक्टेयर नई जमीन में अरोमा क्रॉप्स यानी सगंध पौधों की खेती शुरू हो जानी चाहिए, और अभी तक की उपलब्धियां बेहद उत्साहजनक हैं। कहीं लेमन ग्रास की खेती लहलहा रही है तो कहीं पामा रोजा की, कहीं मिंट की फसल लगाई गई है तो कहीं वेटिवर यानी खस की। अरोमा मिशन के तहत कुल 17 अरोमा क्रॉप्स हैं जिनकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरोमा क्रॉप का चयन इस तरह से किया गया है कि सभी प्रमुख जलवायु क्षेत्रों के लिए कोई ना कोई अरोमा क्रॉप मौजूद हो। हमारी जो एरोमेटिक क्रॉप्स हैं, अगर पानी कम है तब भी अच्छा फ़ायदा देंगी। फ्लड की सिचुएशन है, नदी का किनारा है, वहाँ के लिए हमारी क्रॉप्स हैं, वो भी फ़ायदा देंगी। हाई एल्टीट्यूड पे, हिल्स पे, जहाँ पर कि जानवरों का बड़ा प्रकोप है, वहाँ पर हमारे पास क्रॉप्स हैं जो कल्टिवेट कर सकते हैं। जंगली गेंदा है, लेवेंडर जो बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रॉप है, तो वो हमारी जम्मू की लैब है, वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट, रेनफॉल इज डिफरेंट, ये जो सब पूरा डाइवर्सिटी है हमारा, उसमें भी हमारा डाइवर्स एरोमेटिक प्लांट्स बढ़ते हैं। सो ये हमारा फायदा है।
ध्यान इसका भी रखा गया है कि किसानों को कम लागत में अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा तेल देने वाले अरोमा क्रॉप्स की किस्म ही बांटी जाएं। लेवेंडर जो कि एक एरोमेटिक प्लांट है, एरोमेटिक का मतलब है ये जो लेवेंडर का पौधा है इसको हम काश्त करेंगे तो इससे हमें जो फ्लावर्स आएंगे, फूल आएंगे, उस फूल का हम तेल निकालते हैं, जो ऑलरेडी हमने आपको एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर बताया है। मैं आपको इस लेवेंडर का लगाने का तरीका बताता हूँ। ये जो पौधा है इसमें ये 1 साल का पौधा है, इसमें नीचे जड़ है, रूट है। इसको आप लगाएंगे, थोड़ा सा आधे फुट का गड्ढा खोद के नीचे लगाना है, ऊपर से मिट्टी डालनी है और 2-3 बार इसको हफ्ते 10 दिन के अंदर पानी देते रहना है। आप में से ही अगर हम अभी यहाँ ही पे देखेंगे 3-4 फार्मर जिनको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, जिन्होंने 2 कनाल से स्टार्ट किया है, 3 कनाल से स्टार्ट किया है और आज 50 कनाल 100 कनाल तक भी उन्होंने काश्त बढ़ा दी है। लेकिन मेन एम और ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका यही रहेगा कि आपकी इनकम बढ़ जाए। लीफ ऑयल के लिए हल्दी या करक्यूमा की कौन सी किस्म सबसे बेहतर रहेगी, ये जानने के लिए पूरे देश से 38 तरह की हल्दी की पौध NBRI लखनऊ की नर्सरी में लगाई गई। तो CSIR NBRI ने जो केसरी नाम की किस्म विकसित करके किसानों के बीच एरोमा मिशन में हम लोग ले जा रहे हैं, उसमें ये गुण है, इसकी उपज अच्छी है, इसकी पत्तियों का जो तेल है उसके लिए जो उसके रासायनिक संगठन है उसके हिसाब से हमने इंडस्ट्री से नेगोशिएट करके उसका एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि इस एरोमा मिशन के अंतर्गत जो किसान भाई केसरी खेती उगा करके उसकी पत्ती का तेल निकालेंगे उसकी बिक्री सुनिश्चित है। दुनिया की अरोमा इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है, लेकिन एसेंशियल ऑयल की सप्लाई पूरी नहीं होने की वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की अरोमा इंडस्ट्री कृत्रिम और सेमी कृत्रिम पदार्थों का इस्तेमाल करने लगी है। लेकिन उनकी मंजिल और आखिरी चॉइस अब भी यही है, शुद्ध प्राकृतिक फूलों, पत्तों, जड़ों से तैयार होने वाली एसेंशियल ऑयल। इसका काफ़ी बड़ा डिमांड हिंदुस्तान में और विदेशों में है, जो कि अभी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। तो चूँकि इसकी डिमांड बढ़ रही है और उसका हिंदुस्तान में एक कल्टीवेशन एरिया बहुत है, यहाँ फार्मिंग बहुत है, छोटे और बड़े मिला के बहुत किसान हैं यहाँ पर। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा एक मूव शुरू किया है अरोमा मिशन। जो मोस्ट प्रेशियस क्रॉप्स हैं जैसे लेवेंडर, क्लेरिसेज, जेरेनियम, रोजमेरी, ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है इनकी, और जितनी डिमांड इंडिया से है उसका हम 1% भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो ये बहुत हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। जैसे लेवेंडर यहाँ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी आज कीमत फार्मर को 10,000 रुपये पर लीटर मिल रही है। जो फार्मर पर एकड़ 10-12 हज़ार 15,000 रुपये कमाता था, आज वो ईजिली 1 लाख 1.5 लाख रुपये कमा रहा है। और बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो आपने फील्ड में जाके देखा होगा। तो हमने इस प्रोग्राम के तहत इनको तैयार करना है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देना है इनको। हर फार्मर को हम लोग 1 एकड़ के लिए प्लांटिंग मटेरियल फ्री दे रहे हैं। 40-50 फार्मर का जो क्लस्टर है उसमें एक डिस्टिलेशन यूनिट लगा के दे रहे हैं, 2 टन 1 टन का। और उसके साथ साथ हम बाईबैक गारंटी का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया की एसेंशियल ऑयल मार्केट में फ्रांस के ग्रास शहर का दबदबा है। करीब 3000 साल से हजारों किस्म की प्राकृतिक खुशबू दुनिया में बिखेरने वाले फ्रांस के ग्रास शहर को दुनिया का परफ्यूम कैपिटल कहा जाता है। यहाँ मुख्यतः गुलाब और जैस्मिन से बनने वाले फ्रेंच परफ्यूम्स दुनिया भर में मशहूर हैं। ग्रास दुनिया का परफ्यूम कैपिटल है तो उत्तर प्रदेश का शहर कन्नौज हिंदुस्तान का परफ्यूम कैपिटल। फ्रांस के ग्रास शहर की तरह यहाँ भी सुबह होते ही बागों से ताजे फूल तोड़कर प्रोडक्शन यूनिट्स तक लाए जाते हैं और पारंपरिक पद्धति से डिस्टिलेशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शुद्ध एसेंशियल ऑयल तैयार कर लिया जाता है। कन्नौज का इत्र उद्योग भी 5000 साल पुराना है। यहाँ 200 से ज्यादा इत्र की फैक्ट्रियां हैं। आबादी का करीब 80% हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से सिर्फ इत्र उद्योग से जुड़ा है। कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में अच्छे इसकी खपत है
मिडल ईस्ट एक अच्छी मार्केट है जहाँ पे हमारे टाइप के जो रॉ मटेरियल्स हैं जिनके लिए फ्रेग्रेंसेस बनते हैं वो वहाँ पे बहुत प्रेफर किए जाते हैं मिडल ईस्ट में। केंद्र सरकार के सहयोग से CSIR के प्रतिष्ठित लैब्स द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना अरोमा मिशन के लिए भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे अरोमा क्रॉप्स हों या उससे निकले एसेंशियल ऑयल या खुशबूदार तेल से बने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इनकी गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बिंदु पर विशेष ध्यान रखा जाता है। सीमैप लखनऊ ने डिस्टिलेशन यानी आसवन के लिए कई उन्नत डिजाइन तैयार कर उसका मास प्रोडक्शन कराया है ताकि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से छोटी या बड़ी उपयुक्त डिस्टिलेशन यूनिट्स दी जा सकें। इस क्रॉप में स्टेम, लीफ और फ्लावर तीनों में इसमें ऑयल होता है, ऑयल कंटेंट होती है। तो इसको हम 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच, 1 फीट जैसा भी, स्टेम अगर मोटा ज़्यादा है तो उसको 1 फीट छोड़ देते हैं, वरना हार्वेस्ट करके एज इट इज़ उसको इस टैंक में भर देते हैं। फिर नीचे से आग जलाते हैं। आग जलाने पे इसमें वही पानी वाला सिस्टम बॉयल होता है और ऑयल जो होता है पानी के साथ वेपर अप होता है। वेपर अप होने के साथ जो है आगे कंडेंसर लगा हुआ है, वहाँ पे हम कंडेंस कर लेते हैं। फिर नीचे फनल लगे हुए हैं जिसमें से सेपरेट कर लेते हैं ऑयल को अलग और वाटर को अलग। पारंपरिक हाइड्रो बेस्ड भभका आसवन इकाई भी इस वक्त काफी इस्तेमाल में है, खासकर इत्र नगरी कन्नौज में। लेकिन CSIR लैब्स के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित आसवन इकाइयों की खूबी ये है कि इनमें तेल की रिकवरी 10 से 12% अधिक होती है। 5 से 6 घंटे की जगह 3 से 4 घंटे में तेल निकल आता है। 20 से 30% तक ईंधन की बचत हो जाती है। टिकाऊ, रख रखाव में आसान होने के साथ ये 200 किलो से लेकर 2000 किलो की क्षमता में उपलब्ध है। किसान जो नॉर्मल डिस्टिलेशन यूनिट लगाता है उसकी तुलना में जो हमारी डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं उसमें 15 से 20% ऑयल की यील्ड बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हर एक स्टेप पे अगर हम 15% 20% की इंक्रीज़ कर सकें तो टोटल मिला के 50 से 60% की इंक्रीज़ हो जाती है। तो हर एक जो लैब है वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, इम्प्रूव्ड एग्रो टेक्नोलॉजीज़, इम्प्रूव्ड डिस्टिलेशन यूनिट्स ये किसानों को अवेलेबल करा रही हैं, जिससे कि वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अधिक से अधिक बढ़ सके। ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए, खरा उतरने के लिए ये भी जरूरी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परिस्थितियों में तैयार तेल की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सर्टिफाइड हो। इसलिए अरोमा मिशन से जुड़ी एजेंसियों में एक से एक अत्याधुनिक लैब्स तैयार किए गए हैं। यहाँ उच्च स्तर की गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री मशीन लगाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल फ्रांस के ग्रास शहर के उन्नत लैब्स में भी होता है। ये मशीन हर प्रकार के एसेंशियल ऑयल के घटकों का प्रतिशत बताने के साथ उनकी अरोमा प्रोफाइल भी तैयार कर देती है। इस जंगली गेंदे के तेल से हमने 2 मॉलिक्यूल्स जो करीब 50% जंगली गेंदे के तेल में होते हैं वो हमने सेपरेट किए हैं। इनमें से एक ऑसिमीन है और दूसरा डाईहाइड्रोटेजिटोन है। डाईहाइड्रोटेजिटोन जो है हमारे घरों के जो गेंदे होते हैं उन गेंदों के अंदर जो खुशबू होती है उस खुशबू का होता है। अगर आप देखें तो तीनों को आप देख करके ही बता सकते हैं कि तीनों अलग हैं, लेकिन जो ये टेजिटस मैन्यूटा का ऑयल है उसके अंदर से ये 2 मॉलिक्यूल्स हमने निकाले हैं इनकी गुणवत्ता पहचानने के लिए। अरोमा मिशन के तहत एक कोशिश तो ये है कि किसान अच्छी गुणवत्ता वाले प्राकृतिक तेलों का उत्पादन करें और दूसरी कोशिश ये हो रही है कि इन तेलों से कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाएं ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिले, तेलों की डिमांड भी बढ़े। IIIM जम्मू के लैब्स में अरोमा किट्स के साथ मस्कीटो रिपेलेंट्स तैयार किए गए हैं, तो NBRI लखनऊ के लैब्स में हैंड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। 2 प्रोडक्ट NBRI ने डेवलप किए हैं। एक अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर है जो डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट एरोमेटिक फ्लेवर में अवेलेबल है, डेवलप किया है। दूसरा है फ्लोर क्लीनर, और ये प्रोडक्ट केवल एंटी माइक्रोबियल और फ्लोर क्लीनर का ही काम नहीं करता है, इसमें विशेष फीचर्स भी हैं, जैसे इंसेक्ट रिपेलेंट एक्टिविटी भी है इसमें। किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं, वहीं इंडस्ट्री के पुराने दिग्गज भी अपने तरीके से
देश के इस खुशबू कारोबार को आगे ले जाने में बखूबी योगदान दे रहे हैं। चंदौसी की हिंदुस्तान मिंट एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देश की उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जो अमेरिका से लेकर कई देशों को एसेंशियल ऑयल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रही है। चंदौसी स्थित हिंदुस्तान मिंट की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट में एक तरफ मेंथा ऑयल के घटक तेलों को अलग किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ 96% तक शुद्ध तेल से बने क्रिस्टल्स को एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका हिंदुस्तान में मेंथा ऑयल का इस समय जो प्रोडक्शन है वो करीब 45,000 टन मेंथा ऑयल पूरे इंडिया में बनता है। इसके 45,000 टन में करीब 37,000 टन के फिनिश प्रोडक्ट बनकर विदेश को चले जाते हैं। उसी तरह एग्जॉटिक एसेंशियल ऑयल से लेकर फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निर्यात कारोबार में जुटी साहिबाबाद की अल्ट्रा इंटरनेशनल कंपनी ने भी इस मकाम को हासिल करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। किसानों की मेहनत से देश की मिट्टी में जो खुशबू उपज रही है वो हिंदुस्तान मिंट और अल्ट्रा इंटरनेशनल जैसी देश की बड़ी कंपनियों की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग यूनिट से गुजरकर नई शक्ल, नए अंदाज में पूरी दुनिया में पहुंच रही है। जो फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स हमारे जो एक्सपोर्ट मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है। यूएस में जाता है, यूरोप में जाता है हमारा, मिडिल ईस्ट में जाता है, एशियन कंट्रीज में जाता है। इत्र नगरी कन्नौज में भी कई पीढ़ियों से इत्र कारोबार से जुड़े उद्यमी बताते हैं कि अरोमा मिशन उनके लिए भी अच्छा है। बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है एक सरकार का। किसान अगर मोटिवेट होता है ये चीज़ें उगाने के लिए तो वी गॉट इमेंस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। मैं आपको बताऊं, तुलसी हम लोग इतने साल से कह रहे हैं, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, पर इस तरह का मैसिव प्रोडक्शन या कल्टिवेशन ऑफ तुलसी नहीं हुआ है जो पिछले 10 या 15 साल में हुआ है। अरोमा मिशन की पूरी योजना में आशंका सिर्फ एक बात को लेकर है, आने वाले कुछ सालों में ओवर सप्लाई की स्थिति तो नहीं हो जाएगी। ओवर सप्लाई की स्थिति में एसेंशियल ऑयल्स की कीमत गिरी और किसानों का मुनाफा गिरने लगा तो क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगले 20-25 साल तक इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल मिनिमम 20% है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इस वक्त इंडिया से लेवेंडर ऑयल की डिमांड है 40,000 किलो। हम टोटल प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम 3,000 किलो। तो 3,000 से 40,000 में पहुंचने में आप सोचिए कितना एरिया हमें कवर करना पड़ेगा और कितनी ग्रोथ है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर आदमी टूथपेस्ट भी करता है, च्युइंगम भी इस्तेमाल करता है, मेडिसिन भी खाता है, एरोमाथेरेपी के ऑयल्स भी यूज करता है। तो मतलब आप ये समझिए कि सुबह उठने से लेके, टॉयलेट से लेके, धूप बत्ती, अगरबत्ती, स्प्रे, परफ्यूम हर आदमी को ना शाम तक चाहिए ही चाहिए। तो इसके डिमांड आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी। साफ है, देश में अरोमा क्रॉप्स की खेती बढ़ रही है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एसेंशियल ऑयल से लेकर इनके फिनिश प्रोडक्ट्स की डिमांड भी हर साल लगातार बढ़ रही है। यानी कम से कम 1 से 1.5 दशक तक तो चिंता की कोई बात नहीं है। उन्नति की सुगंधित फसल देने वाली अरोमा क्रॉप्स की खेती से देश के किसान महत्वाकांक्षी कारोबार का हिस्सा बन रहे हैं और अपने साथ साथ देश का भविष्य संवारने में भी योगदान दे रहे हैं।
The Government of India has advanced the target for 20% ethanol blending in petrol to 2025 from 2030. The roadmap proposes a gradual rollout of ethanol blended fuel to achieve E10 fuel supply by April 2022 and phased rollout of E20 from April 2023 to April 2025. This important measure is aimed at reducing India's oil import bill and carbon dioxide pollution, as well as improving India's energy security. Currently, 8.5% of ethanol is blended with petrol in India. India imported some 198 million tons of crude oil in 2020-2021, with a net import cost of about $63 billion. It is estimated that the E20 program can save the country $4 billion or rupees 30,000 crores per annum. Last year alone, oil companies procured ethanol worth rupees 21,000 crores, a move which benefits the farmers of the country as well as the sugar manufacturing industry. The government also plans to encourage the use of water-sparing crops such as maize to produce ethanol, as well as the production of ethanol from non-food feedstock. To increase production of fuel-grade ethanol and to achieve blending targets, the government has allowed use of surplus stocks of maize and rice with the Food Corporation of India for production of ethanol. Other measures to make ethanol production more cost-effective is the reduction of the GST rate from 18% to 5% on ethanol meant for blending under the Ethanol Blended Petrol Program. In biofuel usage, India set a very ambitious target many years ago of trying to get to 20% blending of ethanol in petrol and biodiesel in diesel. However, that has taken a while to mature. And then in 2018, with a transformational new policy, both the deployment of biofuels and the research into new biofuels has gained momentum. Today, we are blending close to 10% ethanol on an average across the country. Biodiesel blending is still very low, it's less than 1%, but it will hopefully pick up with a lot of new initiatives being taken. So in this episode of Science for a Self-Reliant India, we will look at how ethanol is manufactured and the scientific processes involved in the production of biofuels. Our India Science team also shows you how the sugar industry, along with India's petroleum companies, are gearing up to meet this ambitious target of increasing ethanol production by nearly 150% in such a short time frame. This and much more on this episode of Science for a Self-Reliant India, only on India Science. India is the second most populous country in the world, and to meet its rapidly increasing energy demands, it has to procure over 80% of its petroleum-based requirement through imports, making it the third largest importer of crude oil after China and the USA. According to the Petroleum Planning and Analysis Cell, which is the data keeper of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, the country imported 270 million metric tons of crude oil, valuing $120 billion in 2019-2020. And this accounts for nearly 5% of the world's total oil consumption. The energy demand in our country is rising due to an expanding economy, growing population, increasing urbanization, evolving lifestyles, and rising spending power. This is resulting in a further increase of vehicles, which in turn increase the demand for transportation fuels. Higher consumption of fossil fuels leads to higher greenhouse gas emissions, particularly carbon dioxide, which significantly contributes to global warming. And as India aims to become a $5 trillion economy by 2025, achieving energy security and transitioning to a thriving low-carbon economy are goals which need to be achieved. To
To address these twin problems, some serious attempts have been made in the last few years in the form of scaling up biofuel production and blending it with petrol and diesel. Domestic biofuels also provide a strategic opportunity to the country as it reduces the nation's dependence on imported fossil fuels. In addition, when utilized with appropriate care, biofuels can be environmentally friendly and are also sustainable energy sources. They can also help generate employment, doubling farmers' incomes and promote waste-to-wealth generation. India has set an ambitious target of blending 20% ethanol in petrol by 2025. In fact, the Government of India has advanced the target for 20% ethanol blending in petrol to the year 2025 from 2030. This fuel type is also called E20. This new initiative is also part of measures to improve energy security and self-sufficiency of the nation. The roadmap proposes a gradual rollout of ethanol blended fuels to achieve E10 fuel supply by April 2022 and phased rollout of E20 from April 2023 to April 2025. Currently, 8.5% of ethanol is blended with petrol in India. The National Biofuel Policy 2018 has brought about revolutionary changes in the biofuel production priorities of the country, as well as expanding the scope of using a range of renewable natural sources for the production of biofuels. To incentivize the production of ethanol, the government has reduced the goods and services tax rate to 5% from 18% on ethanol meant for blending under the Ethanol Blended Petrol program. The Government of India has also notified the oil marketing companies to procure ethanol from domestic sources. To increase production of fuel-grade ethanol and to achieve blending targets, the government has also allowed use of maize and rice stored with the Food Corporation of India for production of ethanol. The extra consumption of surplus food grains would ultimately benefit the farmers as they will get better prices for their produce and assured buyers. And this will also increase the income of farmers across the country. The biofuel policy which came out in 2018 was truly transformational. It took major steps forward from the old biofuel policy of 2009, moved away from focusing solely on ethanol and biodiesel, and moved into the next generation fuels. The policy broadly says that it will increase biofuel availability. Instead of trying to cover everything about biofuels, it focuses on the most important thing, the supply chain. Improve ethanol and biodiesel blending across the country, ethanol in petrol, biodiesel in diesel, and realistic targets of 20% of ethanol and 5% of biodiesel by 2030 had been set in 2018. Now, what has happened is with the great success of the ethanol policy, it has been brought forward, the ethanol blending program has been brought forward to 20% by 2025 instead of 2030, 5 years forward, which is transformational and ambitious. This is simply the game changer that we were hoping for. And I think in the next 3 to 10 years, you will see big changes. Biofuels are not a recent discovery. The trans-esterification of vegetable oils has been widely known and employed since the 19th century. In fact, the process currently in use for making biofuels from biomass is the same inherited from the past. Liquid biofuels for transport have been used since the early days of the automobile industry. Ethanol's first use was to power an engine in 1826, and in 1876, Nicholas Otto, the German inventor of the modern four-cycle internal combustion engine, used ethanol to power an early engine. In 1898, another German inventor, Rudolf Diesel, used peanut oil in the first demonstration of his compression ignition or diesel engine at the World's Exhibition in Paris. Vegetable oils were used in diesel engines until the 1920s, when an alteration was made to the engine, enabling it to use a residue of petroleum currently known as diesel fuel.
ethanol was first blended with gasoline for use as an octane booster in the 1920s and 1930s and was in high demand during World War II because of fuel shortages. So what are biofuels? A biofuel is a kind of liquid fuel derived from biological material such as trees, agricultural waste, crops or grass. Since such feedstock material can be replenished readily, biofuel is considered to be a source of renewable energy, unlike fossil fuels such as petroleum, coal and natural gas. Biofuel functions similarly to non-renewable fossil fuels. Both burn when ignited and in turn release energy that can be used to power cars or heat homes. The main difference between them is that biofuels can be grown indefinitely and generally cause less damage to the planet. Biofuels are used globally as they contain no sulfur and produce low carbon monoxide and toxic emissions. The most common biofuels are ethanol and biodiesel. Ethanol is one of the principal biofuels. Ethanol is ethyl alcohol having chemical formula of C2H5OH. It can be produced from sugarcane, maize, wheat, beetroot, etc., which are high in starch content. In India, ethanol is mainly produced from sugarcane molasses by the fermentation process. Ethanol can be mixed with gasoline to form different blends such as E5, E10 and E20, in which E denotes ethanol and the number denotes the percentage of ethanol to be blended with petrol. So E20 means that the fuel will comprise of 20% ethanol and 80% petrol. Ethanol is considered to be one of the most suitable alternative blending transportation fuels due to its better fuel quality, higher octane number and environmental benefits. The second most common liquid biofuel is biodiesel, which is made primarily from oily plants such as soybean and to a lesser extent from other oily sources such as waste cooking oil from restaurants, which is used in deep frying, etc. Biodiesel has found greatest acceptance in Europe and it is used in diesel engines and usually blended with diesel fuel in various percentages. There are other biofuels also, like methane gas and biogas, which can be derived from the decomposition of biomass in the absence of oxygen. So let's see how ethanol is manufactured. The biomass or plant material is first broken down in the milling process into a form of flour or fibers. Then water is added to make it into a slurry. The slurry then goes for the fermentation process. Yeast is added into the slurry. The enzymes found in yeast are the natural catalysts and breaks sugar or glucose from plant material like sugarcane, corn and maize into ethanol and carbon dioxide. This typically takes place at temperatures of around 30 degrees Celsius. The product of the fermentation process is only 10 to 15% ethanol. It is then selectively evaporated and condensed in a process called distillation. This process produces 95% pure ethanol. This is then transported to oil manufacturing companies for blending in with petrol. 90% of the world's ethanol is made using the fermentation process. Ethanol is one of the principal biofuels used as a fuel for internal combustion engines like cars, either alone or in combination with other fuels. Ethanol is increasingly used as an oxygenate additive for standard petrol and provides high quality, high octane for exceptional engine performance and reduced emissions. The higher ratio allows for an engine to extract more energy from the combustion process due to better thermal efficiency. Higher compression ratios allow the same combustion temperatures to be achieved with less fuel. Ethanol has been used in cars since Henry Ford designed his 1908 Model T car to operate on alcohol. Ethanol is the highest performance fuel on the market and keeps today's high compression engines running smoothly because the ethanol molecule contains oxygen, which allows the engine to completely combust the fuel, resulting in reduced vehicular emissions
such as hydrocarbons, carbon monoxide and particulate matter. Ethanol has a higher octane rating of 113, which means it increases the efficiency of the engine considerably. The Saraswati Sugar Mills at Yamunanagar in Haryana has installed a plant for commercial production of ethanol from the byproduct of sugar called molasses, which they get from processing the sugarcane. While the operations of this plant are yet to start, our India Science team was given exclusive access to this new ethanol production facility to get a better understanding of the processes involved in the large-scale commercial production of ethanol. The process starts from the collection of molasses in the storage tanks. This plant has 6 storage tanks that can store around 12,500 tons of molasses. Molasses is then transferred to the yeast vessels where the yeast is added and the mixture is then heated at 100 degrees Celsius for 30 hours. In this process, the starch is broken down into glucose by enzymes in the yeast. The mixture is then transferred to the fermentation tanks. There are 4 fermentation tanks at the Saraswati Sugar Mills. Here in the fermentation tanks, the temperature is maintained at around 30 degrees Celsius for 96 to 102 hours. During this process, the sugar catalyst converts into ethyl alcohol and carbon dioxide. The extracted ethyl alcohol then goes to the distillation section where it is heated between 80 to 100 degrees Celsius and is passed through 19 screening plates. After this process, 45% pure ethanol is extracted. This 45% pure ethanol is then sent to the rectifier section where it passes through 72 screening plates and again heated at 70 to 80 degrees Celsius. After this process, we get 94% to 95% pure ethanol. The liquid then goes to the molecular sieve, which absorbs the water and other impurities from ethanol, and then 98 to 99% pure ethanol is extracted. This final product is then transported to oil marketing companies for blending it with petrol before being supplied to petrol pumps. Factories now have the flexibility to, depending upon ethanol pricing and depending upon sugar pricing, to decide how much sugar they want to produce and how much ethanol they want to produce. That is, factories which have ethanol plants. This will help the farmers, because when there is a glut of sugar in the market, there is too much sugar in the market, the prices of sugar are falling, factories will divert the sugar cane, will produce less sugar and more ethanol, thereby reducing the sugar available in the market and increasing its price. So this has a tremendous benefit on the economy, and today the government is also encouraging making ethanol from broken or food grains which cannot be used for human consumption. So ethanol has a great future. It will provide employment, it will save foreign exchange and help India become Atmanirbhar. The Government of India is also encouraging initiatives on the supply side of ethanol for achieving the E20 targets. The government is providing financial support for second generation or 2G ethanol production. The first generation ethanol biofuel is produced from food crops such as sugarcane, corn, maize, etc. Whereas second generation cellulosic ethanol is derived from low value biomass that possesses a high cellulose content, including wood chips, crop residues and municipal waste. Cellulosic ethanol is commonly made from sugarcane bagasse, that is a waste product from sugarcane processing. The thrust to use this alternative fuel is being given to advanced biofuels such as 2G ethanol, compressed biogas and used cooking oil-based biodiesel, etc., which can be sourced from waste such as crop residues, biomass and industrial waste that are all abundantly available in the country.
public sector oil marketing and refining companies like Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited and Indian Oil Corporation Limited have planned to set up 12 second-generation ethanol biorefineries in 11 states across the country to increase the production of ethanol. So Atmanirbharta is not about technology alone. It is, like I said, about carbon atoms. We import roughly 350 million tons of carbon atoms for fuel every year. And you know how much we throw away as a country? We throw away more than 500 million tons. So if we just learn to collect all our waste streams which contain carbon and deploy them into fuel or use them as alternatives to fuel, we will make a huge change. India uses a lot of PNG, CNG, piped and compressed natural gas and also LPG. I believe that biogas, which is now being spurred by the Satat scheme of the government, where 5,000 biogas plants are to be set up, is the next big wave. Out of these 350 million tons of carbon atoms, almost half could come from biogas if properly captured. We hear every year about this parali being burnt, in the fields and causing pollution. Since it's being burnt, it's a fuel. So there is again a big movement, and we are seeing a lot of positive policy steps in that direction to incentivize use of this as fuel instead of coal for thermal power plants and for heat. So the more we are able to include biomass-based briquettes and pellets in thermal power plants, in boilers, in furnaces and kilns, the more Atmanirbhar we will become. To meet the 5-year advanced target of blending 20% ethanol to petrol and to roll it out across the country as E20 fuel by 2025, India will require some 9 billion litres of ethanol, of which 7.5 billion litres will be for motor fuel and 1.5 billion litres for industrial use. That's about 6.3 billion litres more than currently produced. This massive step by the Government of India is multi-pronged, as it seeks to provide an impetus to Indian farmers by buying more produce from them. At the same time, it creates more jobs as more ethanol factories are set up. The blending of ethanol to petrol also reduces our dependence on expensive and fluctuating crude oil imports. Plus, the E20 fuel will help to fight climate change by reducing emissions of carbon dioxide. So, in a nutshell, this initiative of the government to leverage science and technology to produce large-scale ethanol is a major step towards India's growth story and our mission for self-reliance. That's all in this episode of Science for a Self-Reliant India, only on India Science.
as and when required. Take the example of your smart car. Markets today are flooded with smart systems that can understand our needs and provide services as and when required. Take the example of your smart car interacting with you while parking, or your smart devices at home sensing your presence and providing you information like the room temperature as you enter your home. These are powered by cyber physical systems, which is a new class of engineered system that integrate computation and physical processes. It encompasses technology areas of cybernetics, mechatronics, design, embedded systems, Internet of Things, artificial intelligence, and much more. Some of the fields that are already reaping the benefits of CPS are medical monitoring, process control systems, robotic systems, and automatic pilot avionics. Though useful and available, we still do not fully understand why cyber-physical systems are and how they are useful to us. So today, we embark on a journey to understand and explore the world that is cyber-physical systems. Let's begin with its origin. Dr. Helen Gill, who specializes in computer and information science and engineering at the National Science Foundation in the United States of America, coined the term cyber physical systems as it emerged in 2006. Cyber physical systems, this is all of future. This is about convergence of technologies, communication, computing, decision making, perception, and autonomous action. So when you have all of these technologies together, you have digital components, which is communication, computing, decision making through artificial intelligence. And then you also have the machine or the physical part, which is related to perception, gathering data, and arms that would give it action. So perception to action, and this is all of your future. So examples are manufacturing in Industry 4.0, where you have intelligent machines that do self-diagnosis. They also do the decision-making, fault diagnosis. Then you have autonomous vehicles going deep under the ocean, exploring there, going up in the space, and even small things like pilotless cars. Let's break it down. CPS is about the intersection, not the union, of the physical and the cyber. Cyberspace is the notional environment in which communication over computer networks occurs. It combines engineering models and methods from mechanical, environmental, civil, electrical, biomedical, chemical, aeronautical, and industrial engineering with models and methods of computer sciences. By using a combination of machines, sensory devices, embedded computational intelligence, and various communication mechanisms, CPS monitor physical elements with computer-based algorithms tied to the internet. This means they are capable of independently functioning based on their physical surroundings. Before we delve deeper into the science of cyber-physical systems, let's get a broader understanding of the fields likely to benefit from this new cyber revolution. Cyber-physical systems have the potential to transform distribution of electricity by integrating the behavior and actions of all users connected to it. The benefits of a seamless intelligent system would include self-automation and seamlessly balancing power supply due to varying energy requirements of customers across regions. Integrating renewable power sources, reduction of losses, and enhanced safety. Some other areas where cyber info systems are likely to have a major impact are smart water networks to reduce leakage,
better groundwater management, just to name a few. So now that we have a better idea of its practical benefits, let's dive in. CPS is often associated with the term cyberspace, but the roots of the term are older and deeper. It would be more accurate to view the terms cyberspace and cyber-physical systems as stemming from the same root, cybernetics, rather than viewing one as being derived from the other. So, to understand CPS and its objectives, we should also understand the role of cyberspace and cybernetics. Norbert Wiener, an American mathematician, philosopher and professor of mathematics at the Massachusetts Institute of Technology, coined the term cybernetics during the World War II. Wiener pioneered the technology for automatic aiming and firing of anti-aircraft guns. Although the mechanism he used did not involve digital computers, the principles involved were similar to those used today in computer-based feedback control systems, which is a conjunction of physical processes, computation and communication. To understand the practical applications of cyber-physical systems and research being carried out at the Indian Institute of Technology, Delhi, we met Professor S.K. Saha and his team of researchers in the Department of Mechanical Engineering. Cyber-physical system includes robotics, the IoT, Internet of Things, the smart manufacturing. This is required in India in order to improve the quality of the life in the villages as well as in the urban places. Through robotics, telemedicines, I can inquire, a doctor sitting in the city can inquire on almost in a live mode to a patient there, and if in case certain emergencies is required, immediately the person can be brought in, or even more advanced, if we have the robots doing certain tasks, maybe assisting to do something, people to move from here and there. So then robots can also help doing things. So the quality of the city life can be also exported to the villages and other remote places. Cyber-physical systems are heralded as the next paradigm shift in technology that can exponentially spur growth and development. CPS are intelligent, autonomous, and efficient cyber-physical systems expected to drive innovation in sectors as diverse as agriculture, water, energy, transportation, infrastructure, security, health, and manufacturing. Given this potential and India's focus on technology, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi launched the National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems in 2018. It is being implemented by the Department of Science and Technology, Government of India, at a total outlay of Rs 3,660 crores over 5 years. 15 technology innovation hubs or nodal centers are spearheading the research activities. The mission is mandated to coordinate and build linkages with research institutes and labs in India as well as internationally. Collaborations with industry will help deliver commercial technology and products to build a vibrant innovation ecosystem by providing a reliable platform for technology-based startups and entrepreneurs, thus fostering research innovation, world-class technology and product development. In the initial stage, the identification of the host institutes, establishment of TAH and as well as the TBIs is the first target for us. We have almost we completed that particular phase. The next phase, in fact, we will be working on these advanced technologies and connecting to the international collaboration, and also we want to bring the industry partners. Under the mission, each hub will create a proximal technology business incubator or link with existing TBIs. All the hubs will work in a distributed model in the sense that all the incubates may not necessarily be physically located in the TBI,
but may avail the services at their own location. Interdisciplinary approach is the focus of the mission. Hubs have to work together for delivering technologies and products. Scientific Advisory Committee and Inter-Ministerial Coordination Committee will ensure the cooperation and working together of hubs. A coordination committee chaired by Secretary DST and comprising members of all heads of hubs will be created so as to ensure better outcomes of the research activities for development of collaborative solutions. So this is not one technology that's coming in between, but we are having the array of technologies. Therefore, the technology innovation hubs will specialize in one of these foundational technologies, develop what you call the required technologies, and work along with the other hubs so that the final deployable technology will be made available to the users. Therefore, the realization of this mission will be through these 25 technology innovation hubs. One of the approved proposals focuses on the theme of human-robot collaboration or cobots. Taking the lead in this feat, Indian Institute of Technology Delhi has envisioned a world-class technical resource center with competencies in foundational research, complex system design and vibrant application-focused innovation. They are especially focusing on the fields of medical, agriculture and smart manufacturing. Under this Technology Innovation Hub for Cobotics, we have proposed 4 major areas. The number 1 is the medical robotics, the second one is agriculture and disaster management, the third is the defense robotics, and the fourth is the Industry 4.0 factory for smart manufacturing. But I can give another example. For the COVID, we are working on teleoperation of a robot for ultrasonography. Now COVID patients are there and doctors do not want to go very close to them. So a robot hand will do the ultrasonography and the doctor will be sitting remotely behind. So working on that kind of technology, and then similarly in a COVID patients area, we are trying to deploy robots, mobile robots, which will take the food, medicines and talk to the doctors over the internet or over the Bluetooth or Wi-Fi. Similarly, for the smart manufacturing, for the small industries, they do not want to have very expensive solutions, fully automatic. So if I have a mobile robot now which can do things, but with the assistance of the human being, so even the medium scale industries should be able to adopt this kind of technologies. The mission aims to create robustly productive and sustainable hubs. The development mechanism will be a bottom-up revenue model in which the initiation of the hub is by government support through the National Mission of Interdisciplinary Cyber-Physical Systems for developing capabilities and gradual build-up of resource generation in the later years of the project period. When we have these 25 technology innovation hubs, we also have along with them the 25 technology business incubators. The TBI will have infrastructure, will have the mentoring capacity, the industry collaborations and the live problems. So therefore, that is an aggregating point where the research is getting translated into a product and as well as the churning out of the startups. The mission has multiple objectives and encompasses knowledge generation, technology or product development and commercialization, human resource development and skill development, innovation, entrepreneurship and startup ecosystem, and international collaborations. The selected TIHs have prepared and submitted their dream proposal for groundbreaking innovation plans. The Indian Institute of Science, Bengaluru has an ambitious vision of making robots, drone innovations, data sets of artificial intelligence and automated guided vehicle research. We visit Professor Bhardwaj Amratur, Professor in the Electrical Communication Engineering Department at IISc Bengaluru, and understand from him and his team the practical rollout of cyber-physical systems and their wide applications.
So we are focusing on multiple different innovations. One is the area of mobility. With 40% of the people living in cities, and as you know, our cities are so congested, traffic is such a problem. How do we solve this problem? One way of solving this problem is to go vertical. And the skies. The Class G airspace, which is the airspace up to 400 feet from the ground level, that airspace is free. How can we construct roadways, or what we are calling skyways here, so that we can have drones actually fly around safely and securely in this airspace? Technical Associate of Robotics at IISc, Aditya Verma Sagi, works closely with Professor Sharma in developing futuristic machines. He demonstrates to us the different technologies based on intelligent systems. Basically, this robot was developed here at IISc in our lab, and we are trying to explore reinforcement learning, machine learning approaches. For example, what is the equivalent of a traffic junction in the sky? How do we create equivalent of roads in the sky? As you know, most of these drones will be flying autonomously. There won't be a pilot in them. These will be small drones. How do you manage all these drones so that they don't collide with each other, they don't collide with other people? And many of these are problems which right now no one in the world has solutions to. So this is a great opportunity for us in India to actually develop these technologies. And hopefully these technologies will go out into the industry as new startups. The government's objective is to foster and give an impetus to the domain of cyber-physical systems in India's leading technological institutions, and to develop a range of super-intelligent machines that have the capability to analyze data and solve complex problems. These innovation hubs will serve as incubator centers, with the technologies they develop to be scaled up at the commercial and industrial level. We have to be totally future ready, because this is going to have impact which is significant on everything we do, whether it's about the skills, it's about education, it's about the nature of jobs, it's about every sector. So if you're looking at health, you're looking at these new diagnostics, you're looking at telemedicine, delivery of health services, you're looking at agriculture, transport, energy networks, water networks, wherever you need to optimize things, wherever you want them to be intelligent. So you're going to have cyber physical systems working there. The global impact is going to be so substantial, both in terms of jobs that we need, that we need to develop, and the skills we need to develop, which is why mission has such a big emphasis on education, on training, on skills, as much as also producing new knowledge, as well as consuming new knowledge to convert that into new opportunities. Using these technologies, we want to create new opportunities, deliver services which cannot be delivered now with the old technology, which means you basically expand the applications, you expand reaching out to larger segments of society. So all of that is going to happen in this particular mission. The mission aims to create a strong foundation and a seamless ecosystem for CPS technologies by coordinating and integrating nationwide efforts encompassing knowledge generation, technology and product development, innovation and commercialization. Scientific giants of India like the Indian Institute of Technologies, Indian Institute of Science, Indian Institute of Science Education and Research, and Science and Engineering Research Board are taking the lead in realizing this Herculean task. Being part of CPS mission, the coordinating institutes function in a network mode with multiple forward and backward linkages with each other. The first phase of NMICPS focuses on establishing innovation hubs based on 6 technology verticals, including artificial intelligence and machine learning. Now, AI is the ability of a computer program or a machine to think and learn.
while machine learning is an application of artificial intelligence. Second up is technologies for Internet of Things and Everything, sensors, actuators and control. IoT is a technological concept in which daily life objects are equipped with electronic components, software and sensors and are connected to the internet and to each other. These objects act in an intelligent and sensorial way and collect and transmit data. Next is data banks, data services and data analytics, which includes a pool of information on a particular subject or group of related subjects stored and used via a
जो बच्चे लेकर उनको क्वेश्चन कीजिए। ये तो लोकल एग्जाम है, सबसे टफ नहीं है, ये तो सबसे टफ नहीं है। जो लेकर दिल्ली में काम करता है, अपना काम करता है। देखिए हमारे आप हमको जानते हैं, गणेश वहाँ काम करिएगा लाइव ये लाइव के लिए हम उसको बताएं तो लेता है, बाकी अपने वीडियोग्राफी के लिए। कॉलेज के पीछे जो क्वेश्चन पेपर के पीछे जो बॉर्डर बना है उसके ऊपर आप अपना नाम, क्लास, आप अपना नाम, क्लास, कर दिए सर लाइव सिस्टम धोखा दे देगा। कर नहीं रहेंगे तो लैपटॉप छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ने वाले हैं, हमको लगता है कि सामान छोड़ के जाएंगे, नहीं ऐसा बंद होकर रखूंगा बस। हमको पता नहीं तरीका ऐसा बहुत बराबर है, खाली बता दो गड़बड़ नहीं हो, हम अकेला फंसे नहीं, सो प्रोग्राम को डर लगता है, काम फंसेगा नहीं मालूम, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ फोन तो है, गड़बड़ाए नहीं, पर सिस्टम बता दो बस हम कंप्लीट कराए। दो दिन ऑफिस स्टार्ट करवाएं, फिर स्टार्ट करिए। बताओगे भी बुझाता नहीं है, स्टार्ट जब करेगा ना यूट्यूब चला रहे हैं आप, यूट्यूब चला रहे हैं मालूम है, लेकिन कैसे करते हैं नहीं मालूम। इसमें हमारा पेज फटाफट मारेगा, इतना इतना फास्ट है, वो बहुत फास्ट है, हमारा बड़ा बहुत तेज है इसमें। सर हमारा पेज है ना बड़ा वाला बहुत तेज है, वहीं से बैठे बैठे करेगा। आप इंजीनियर है तो बेटी को वैसा बनाए हैं, बड़ा बेटी है साइंस कॉलेज का स्टूडेंट है, जो ऑनर्स कर रहा है, उसको बस कुछ नहीं लगता है सब बहुत नॉलेज। हम उससे पूछते हैं, हमको नहीं है, मेरा हार्डवेयर फील्ड है, आपको पता है हम यूनिवर्सिटी के हार्डवेयर इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर हम प्रिंटर हुआ, फोटोकॉपी मशीन हुआ, कंप्यूटर हुआ, इस तरह का चीज बना देते हैं, आपके सामने बैठे खोलेंगे बना देते हैं, हमारे में वो टैलेंट है। ये पूछिएगा तो हमसे नहीं होगा, सॉफ्टवेयर वाला काम बता देगा कर लेगा। हाँ ऐसा क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप लोग कैसे कर ले रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा मिक्सर हम चलाए हुए हैं, बहुत एक्सपेंसिव जगह है, प्रोडक्ट की बात हो ये सब पूरा बताते हैं आपको। अमेरिकन कंपनी है, उसको बोलते हैं एल्टेक लैंसिंग, आप ये ब्रांड देखिएगा गूगल में, एल्टेक लैंसिंग मीडिया कॉर्पोरेशन। हाँ ठीक है ना, हाँ एक्रोमीडिया कॉर्पोरेशन का इक्विपमेंट यूएस का, पूरा यूएस सप्लाई है, पूरा यूएस इतना इक्विपमेंट्स है, मतलब मिलियन का सामान समझ आपको मिलेगा। एक्रोमीडिया कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम अभी तिजोरी कहाँ है, यहाँ पर कहाँ छोड़ा गया, बनाया गया अभी कोई बात ठीक।
12 minutes more. 12 minutes more. Only 8 minutes more. 8 मिनट और है उनके पास. If there is any revision of the question, don't worry. Evaluation will be made on the basis of 24 questions only. So don't worry. पाँच पंद्रह मैक्सिमम टाइमिंग शुरू होता है उस हिसाब से पाँच बजे तक खत्म कर पाते हैं पाँच कल तक वही सेम है कल भी वही से प्रोसेस 45 10 बजे से शुरू हो जाता है हाँ लास्ट में ये आपका 28 का जो है 28 को दोपहर में चला सकता है 1:15 हाँ 1 बजे फिनिश धन्यवाद किया सब 1 बजे स्टार वितरण है 10 बजे समापन समारोह 11:15 से 2 घंटा का समापन समारोह का आप यूनिवर्सिटी में आते हैं आपको देखना है
हाँ वही देखे हैं आपको देखे हैं अब ये लोग का तो जाता है हाँ बड़ा बड़ा प्रोग्राम हाँ सब अपना इसमें जो लगता है जो जुबली में एंड रिपीटेड वंस अगेन सभी प्रतिभागीगण क्वेश्चन पेपर के पीछे अपना नाम, कॉलेज का नाम और क्लास ये मेंशन करना ना भूलें। अपना नाम, कॉलेज का नाम और क्लास ये मेंशन करना ना भूलें। बताए रहिएगा तब ना हमारा कॉलेज में भी होता है तो बुलवाएंगे और नंबर बता दीजिए अपना मोबाइल नंबर भी डाल दें, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर भी डाल दें। स्कूल कॉलेज सब है ना वो भी बोलिए नंबर 88 लगा देते हैं बात सब चलिए मिल जाएगा और खरा थार करने वाला भी होगा हाँ पूरा रखेंगे हम समझ गए हाँ हाँ इस तरीके से खराब हो अब ये समय सीमा समाप्त होने के बाद जब आप इसे कॉपी कलेक्ट कर लिया जाए कोई भी प्रतिभागी कहीं नहीं जाएगा। फाइनल रिजल्ट अभी जो राउंड हुआ है रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद ही आप यहाँ से जाएंगे। इसलिए जो जहाँ है अपनी सीट पर बने रहेंगे। Two minutes more. 2 minutes और। रिपोर्टर दोनों चाहिए
सभी लोग चेक कर लें, सभी प्रतिभागी का चेक कर लें, किसी का नाम, कॉलेज का नाम और क्लास। ये चीजें छूटे छूट ना पाए। साथ ही आप अपना मोबाइल नंबर भी नोट करें। यहाँ पर हम आपकी दोबारा आपका समय अब समाप्त होता है। Stop writing. सभी प्रतिभागीगण अपनी सीट पर बैठे रहेंगे और अपने रिजल्ट का वेट करेंगे। समझेंगे ना कैसा भी रहो यार, उसमें कैसा बड़ा मुश्किल वो वर्चुअली रहेंगे पेपर है क्या कल्चर का मतलब सीडीआर आएगा आईसीआर मेंस का पेपर ग्रीन हो गया इन पास क्या होगा इसमें बड़ा अफसर बन जाओगे क्या होगा इतना टेक्नीशियन अफसर कहाँ सेंट्रल में देते रहते हैं ये वही तो क्या आपको मंत्र ले लीजिए और प्रोग्राम नाम पूछेगा लेके रखेगा उसी टाइम भेजेगा हाँ No, there is no negative part. There is no negative part. no negative
नहीं होता है तो पोस्टर प्ले करके छोड़ दिया पीछे, उस कैमरा को बंद कर दिया, उसका हम निकालना यूट्यूब पर जो अभी खोले थे ना, हाँ वही उसी को डिस्प्ले पर करके छोड़ दीजिए, हम लोग ये बंद कर सकते हैं। इसको हमने दो और कॉलम मिक्स लगाया, ये 48 में अभी स्टार्ट होने वाला है। इन 48 में का जो काम होता है वो ये होता है कि हम इस टाइम को ऑटोमेटिक किया, हम ये 48 बना, जैसे अभी हम बोले एक्सटेंशन देखिए, एक्सटेंशन बंद है, एक्सटेंशन तब कहां से आ रहा है आप? हाँ लैपटॉप में साउंड आ रहा है। तो समझ गए कहाँ जा रहा है।
it is not only with the other world, which fascinated us, of course, and which is the basis of what we call religion. It is not that we were always only obsessed with only political development, the other world processes, but which did us, of course, and religion. And we have always seen it is not that we were always only obsessed with only political development, the other world processes, changes in our tools of production, tools of communication, of course, and which today we have always seen. It is not that we were always only with, we have always been concerned about other world processes, our changes in our tools, our existence as humans, which us, of course, and which today we have always struggled to know about that we were always only with, we have always been concerned about other world processes, we are trying to recover our changes in our, but this has been part of our existence as humans, which us, of course, and which today we have always struggled to know about that we are always only about our relationship about other world processes, we are trying to recover nature, changes in society, but this has been part of our relationship about our ancient literature, trying to recover nature, changes in society, will come, but this has been part of our several words in both classical literature, classical language like Sanskrit, our about our ancient literature, and in ordinary nature, changes in society will come, but this has been part of our several words in both our about our ancient literature, and in both our about our ancient language and dialects, numerous words which talk about or which refer to what you may like to call reason. Our about our ancient language and dialects, numerous words which talk about or you may like to call reason. Our about our ancient language and dialects, numerous words which talk about or you may like to call our about our ancient language and dialects, numerous words which talk about or similarly you come across you may like to call our Anuman, inference, Anvikshaki, investigation, and of course Pramana, which is proof. You don't have to look to Bacon and Descartes only to find out the emphasis on experimental knowledge. We had always put emphasis on experiment. Sushruta talks about experiment on the dissection of the dead body and the knowledge to be gained out of it. It's another thing that with passage of time, we forgot many of the prescriptions which our ancestors had given. Things do change. It's such a long process, long historical process. So lots of superstition also crept in, lot of what you call infirmities also crept in. But this should not blind us from the bright spots which our ancestors displayed from time to time. Well, for example, medical knowledge begins with magic everywhere else, in Greek civilization also.
You have incantations in Atharveda. But we didn't stop at incantations. From the mantras, gradually through centuries of development, a proper medical knowledge corpus emerged. Buddhists also contributed to it. Jivaka is known as one of our very early physicians, and it's very well documented. Gradually, by 2nd century Common Era, before Common Era, you have, a codification of medical knowledge, which later gave birth to the famous treatises like Charak Samhita and Sushruta Samhita. Later, every generation, every century, you find numerous nighantus, tikas, tippanis written on this. Till recent past, it has been an ongoing process. We kept on arguing about what was handed over by our ancestors, discussing. There was some addition, some subtraction to knowledge. It continued. In astronomy also, fascinated us. And there are so many texts that come. You can always reel out names, very well known names like Aryabhatta, Varahamihir, Bhaskara 1, Bhaskara 2, and so forth, numerous. Later, Nilkantha, many others. And we need not always look, the point which I am trying to make here, that along with looking at the text, we should also think about the context in which those texts were written. Context is no less important than the text. So, for example, when Varahamihir is working, or when Bhagavatta is writing, we need to know the context in which they lived. Brahmagupta, a great astronomer, in his Brahmasputa Siddhanta, he knew why a particular eclipse takes place, solar or lunar. He knew the reason. But by that time, Puranas had become very strong traditions. And he withdraws himself by saying that since it is written in the Purana that it's Rahu and Ketu does it, it must be correct. So our brilliant thinkers, even though they knew that certain facts were scientific facts, they sometimes withdrew because of the power of tradition and culture. Puranas are still being revered, we know. Composed sometime during 3rd AD to 6th AD, they are very powerful presentation of human thought, human ingenuity, written in a fascinating style stories. So you have so many Puranas which have acquired the status of what you may call canonical knowledge. So you have some kind of a tension here between what you call canonical knowledge and what is scientific knowledge. It is not that only in India we witnessed it. It was there in Europe, it was there everywhere. When the society changes, there would be some spark. There would be some friction, some spark. And it happened. Galileo had to recount. Many others they faced. Darwinism probably is still a hypothesis for Vatican. And it is not considered as a truth by many faithful Bible followers. So it happens. But the real beauty is that our scientists, our forefathers, our thinkers
they continued to put forward their views. And we had very distinct scientific traditions in our philosophy, for example, Sankhya and Vaisheshika. In Buddhism also, very, very powerfully expressed. And if this is not scientific temper, what else scientific temper is? You don't have to look into very recent past to talk about scientific temper. It has been there for ages. Since we are Homo sapiens, the moment we grew as Homo sapiens, reason was there. Emphasis on reason was there. Faith, of course, existed. Even blind faith today we have. It has always been there. But rationality was also a very important component of human thought and human progress. This is what makes scientific journey. This is what makes the journey of science, or history of science, very, very fascinating. And we need to learn from it. You don't have to do a lot of chest thumping to claim that you had everything. It was there. And, you know, it was recognized by others also. A century later, Al-Biruni visits India. He spends 2-3 years. He studies Sanskrit. He is familiar with our mathematical tradition, with our astronomical tradition. He doesn't agree with Brahmagupta. He says where Barahamir goes wrong. And very critically, and at the same time, like a friend, sympathetic also, looks at Indian scientific tradition in his Kitab al-Hind. You may have seen it. Al-Biruni is very important, famous. And he says that, you know, here the ratnas, the gems are mixed with cow dung. You have to shift. You have to winnow the grain from the chaff. Ratnas are there. Gems are there. They're still there. But then we have lots of cobwebs at the same time. We need to distinguish. We need to separate. And of course, go for the gems. Not everybody finds gems, you know. If you take a dip in the ocean, it's not that you will get pearl all the time. You get pebbles, mostly. But even if one gets 1 or 2 pearl, justifies his life, his century, his existence, his generation. Isn't it? We had people. Even in medieval time, which is considered as, unfortunately, as dark or whatever it is, politically difficult and so forth, I would consider a lot of work was done. And there was a lot of intermingling. There was something called Indo-Islamic astronomy. In terms of medicine, our Vaidyas and Hakims, they learned from each other. So we had the Nadi Pariksha. Mutra Pariksha comes from Unani medicine. Many things happen. And you have numerous examples, numerous texts being written. Some of the Persian words entered Sanskrit and Sanskrit words entered Persian language. So you have a text in 18th century called Hikmat Prakasha. That shows that collaboration was going on. It was there. We need to learn from that and we need to go. However, we missed certain things. Had we not missed it, probably we would have been an independent nation for a long time. We missed certain things because we couldn't match for some reason or the other. And history is not a history of apology, no. It happened. It had to happen. It lay in the logic of history that certain things like scientific revolution took place in Western Europe or industrial revolution took place in that part of the world. It could have happened here also. But what we had was a bhakti movement. Right from 9th century, Adi Shankara, down till today it's going on, you know. I don't have to tell you what bhakti is. I have no disputes with it. No, absolutely nothing. But science is science. Even science ki bhi bhakti theek nahi. Don't be blindfolded by what science says. No, no, no. Scientism would be equally bad.
equally bad. So here we had a huge tradition. We recently had the statue of Ramanujacharya, many others coming up, whatever, so many temples, so many things. But in the process we missed the significance of glass. We didn't make this. And it is this glass technology which gave us microscope. Today we all work on microscope. It is this glass technology which gave us telescope. It is this glass technology, extension of that, which today you find in satellites, and how my talk is being heard all around the country, all over the world probably. This revolution in telecommunication is not because of a marble chip or a stone chip. It's another kind of chip. And a society which played with stone and marble had to pay the price. Taj Mahal was not enough. Taj Mahal is beautiful, no doubt about it. But Taj Mahal doesn't make you, within quote, modern. Doesn't empower ordinary people. It's a great artifact, it's a great handicraft, beauty tools, aesthetics. But it doesn't empower ordinary people, which a mobile does. Ordinary people. That's a huge difference. The result was that society which played with stones and marbles, with temples, maqbaras, Taj Mahal, etc., went down in 18th century. A nation, small seafaring nations like the Dutch, the Dane, the Portuguese, the Spaniards, they come over through a new route, sea route. They didn't come from Khyber. From the sea route, captured us. Not only us, 80% of the world was colonized. This colonization would not have been possible without certain scientific advances like gunpowder, compass, printing press, and so forth, paper. All this made it possible. It all came from China. But the Chinese mandarins, they didn't realize its significance. They were too bureaucratic. When it went to Europe, it created a renaissance. In India, our own Brahminical community, the powerful priestly class, was too busy with social reform, with bhakti and so forth. The problem was that most of us became otherworldly. Paralok, Ihlok said life before death was somehow discounted. It was life after death which becomes powerful. This is what you find in Holy Quran, in Quran and everywhere. So Indo-Islamic society, in that sense, had a different trajectory altogether. Look at even late 17th century, early 18th century, we had a brilliant scholar prince called Raja Jai Singh. In Delhi you have his Jantar Mantar, Jaipur, absolutely brilliant. Lays the foundation of a modern city. He had scientific temper. He knew what science was, but unfortunately he was not aware of Copernican revolution, which had taken place a century before. He was not aware of Galileo. He remained rooted in Indo-Islamic astronomical tradition of Jis, Panchang. So in Samarkand, in 14th century, there was a great Ulugh Beg astronomer who had produced Jiz-e-Ulugh Khani. Almost similar Jiz was prepared under his. Jai Singh was so ahead of his time, he had created virtually a school of astronomers in Jaipur. He invited astronomers from different parts. Vidyadhar, Jagannath Samrat, many others. But no royal school of royal institution could emerge of astronomy. While in London you have a Royal Society, you know, Fellowship of the Royal Society is considered the highest scientific recognition, probably more than a Nobel Prize. We couldn't develop that.
It is the British who 1784 established the Asiatic Society in Kolkata for, of course, their own purposes. But look at the logo of the Asiatic Society. People do not look at it. It's very significant. William Jones at that time said that the scope of the Asiatic Society would be to cover anything that occurs in nature and anything that is performed by humans, by man. Anything that occurs in nature means right from solar flame to the tiny microbe in the ocean bed. Everything. And whatever is performed by humans. We perform so many things. Art, aesthetics, science, society, many things. Economy, all this is part of our human activity. This comes under that canopy of Asiatic Society. It's still existing, but not, of course, in its former glory, which we. However, the beginning was made much late. And that is why this period is considered as the beginning of modern times in India, modernity in India. You have Raja Ram Mohan Roy, who talked about why modern science and literature should be taught to the Indians. We had our traditions, no doubt about it, but some of them in 19th century we started forgetting. And there emerged what you may call a kind of different science. You may call it colonial science. Science which was made to serve the colonial purposes. After all, colonialism was no philanthropy. What is wrong in it? Colonialism is a machine of war. Colonialism was domination. When A tells B that you know nothing about yourself, I know you better than you know yourself, and I give you better knowledge. So this is what Macaulay said. So introduced English. This is what the missionaries said. My God is superior to your God. My knowledge is superior to... Unless this was done, how could they establish their power? That's how they established their power. It lay in the forces of history. I don't mind it. Quite fine, they did it. But our people also reacted. They were not dumb and deaf. They put up their own show. Ram Mohan Roy comes up. He comes out with his own Brahmo Samaj, which is a synthetic, synthesis of different kinds of knowledge systems. Later, Dayanand Saraswati, Vivekananda, probably the most modern epitome of modernity you find in him. There, reason, religion both come together in Vivekananda. Many such people were there. Mahendralal Sarkar, who established the Indian Association for Cultivation of Science in 1876. And I consider the establishment of the Indian Association for Cultivation of Science in Kolkata no less significant as the establishment of Indian National Congress 9 years later, in 1885. It was a cultural response. We wanted to do good science. We wanted to come up with our own identity, scientific identity, and we did succeed. Within 30 years, you have a J.C. Bose, you have Pramathanath Bose, you have Praful Chand Ray, later you have Meghnad Shah, Satyen, huge names. They are still inspiring us. They are like comets. They came. I wish those comets come back again. We need more such people. In fact, I'm very often asked that colonial India produced such stars. In independent India, we don't find them. Why? I'm at a loss to explain. Maybe because science has undergone such change. The nature of science, the culture of science has undergone such a drastic change that today it is not possible to have one Jagdish Chandra Basu, who worked on his own little machine in his own way, who manufactured. Things have changed. However, this should not be taken as an alibi. I believe that for some reason, good or bad, our science activities have become little bureaucratized. I'm trying to put it very mildly, humbly. It is scientocracy which has taken over us. And it is as bad as, we find in bureaucracy.
Similarly, technology has overtaken us. Technology and science are two sides of the same coin. But we should not be obsessed with technology all the time, sir. One rocket here, another rocket there has significance for communication purposes, for strategic, summary purposes. Fine, I'm happy with that. But we need cutting-edge fundamental knowledge at the same time. This little RNA virus has shown us how fragile our society and economy had been. We lost so many people. We could have prevented it. We did prevent it gradually with the coming of the vaccines. We produced those vaccines. There's no doubt about it. We were capable. But we don't have to lower our guard. Basic science, my final argument, and I stop here, would be that basic science is no less significant, no less important than applied science or science for strategic purposes. We need to try to, and basic science cannot be done in a few years. It will be very difficult to have another Satyen Bose. As I told you, Team C. Amarjeet Kumar, CM College, Darbhanga, CM College. Amarjeet Kumar, Mohammad Arman, CM Science College. Team C. Mohammad Arman, C. Shubhkant Yadav, MS College. Shubhkant Yadav, College. Purushottam Raj, Purushottam Raj. Team E. Chanda Kumari, BTech, second semester. Chanda Kumari, BTech, second semester. Mohammad Miraj Alam, your college Rosa. Come on stage. Aman Kumar Jha, come on the stage. Aman Kumar Jha.
I request our judge for quiz competition, Professor R.P. Singh sir, sir, please come on stage. Please. Iya kan yang mendadak. I will disqualify him. 2 minutes order of law. हेलो सबको एक बात बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के स्तर पर सर सब माइक ऊपर आवाज नहीं आ रहा है यहाँ सिस्टम में। 75,000 प्रोग्राम पूरा आप है तो क्या और हमें काफी सकते हैं क्या मैं आपके सामने 5 मिनट से मैं प्रश्न पूछूंगा, ये जवाब देंगे ऑप्शन का फैसला और मैं यहाँ कर रहा हूँ राज्य राज्य उनको हटा दो, इनका हो गया हो गया उनका स्टेज पर जाते हैं और जो बाद में भी सर मांग देंगे एडिटिंग के लिए तो कहाँ से ऑडियो दूंगा, इसमें बहुत लाइट है। आपको पता है कि पोडियम पोडियम पे शिफ्ट करूंगा पोडियम के लिए बोल ही नहीं भाई साहब, थोड़ा मेहनत कीजिए ना, बहुत देखना एक लाइन के जवाब देना है, ऐसे सवाल किनारे रख देते हैं आपके राष्ट्रीय मंडल में प्राप्त एक सवाल उसका एक वाक्य से जवाब आना है इनके पास नहीं लगा देंगे इनके पास सब है व्यवस्था। अच्छा है तो एक नंबर पे दीजिए लगा दीजिए माथा को घूम गया आए ना क्या वो परीक्षा देखिए दीजिए ना अभी एक इनको दीजिए ना, मेरे सारा बोलिए उससे पहले अपनी तरफ से एक कहानी सुना और इस कहानी के माध्यम से आपको इशारा बीच में सेंटर में जाना आपको इसमें नहीं लगेगा और जो दर्शक मोटा है इसमें पार्टिसिपेंट से ज्यादा होना इस कंटेस्ट का पहला शर्त है ये तो चुप रहेंगे आप दर्शक श्रोता से ज्यादा हेलो ये वो दे दिया चालू हेलो एक से बोलना दे नहीं वे नहीं पढ़ी एक कहानी आऊंगी अरब तक तो जैसे आप हाईवे बना हुआ है तो उन दिनों रात रात वहाँ के लोकल जो
राठी का गाड़ी लगती है राठी में बीच में बोलते रहे और नमाज अदा नाम करते हैं भक्त माटे प्रार्थना बात प्रधानमंत्री मंत्री बहुत नाम करते हैं वही मंत्र मान ये हो सकता है तो मुद्दा भी आता है इसमें नहीं आएगा इससे नहीं आएगा थोड़ा देख सेंटर पकड़ जाओ सेंटर और बीच में सेंटर ले सेंटर बस नीचे कर दीजिए कर ली है सर लगा दीजिए फायदा नहीं है भाई जब पीछे मुड़कर देखा क्या देखते वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के रखें आगे आगे सेना और उसके पीछे 10 का तोहफा किनारे हो गए उसको बढ़ाइए ऑडियो और बढ़ाइए उसको वहीं पर माइक वाले वॉल्यूम में बढ़ाइए देखा इधर उधर है एक नजर आया बोलना नहीं तो आया कहा बताओ बराबर क्या पता है और जरा गलती चलते चलते शाम हो काफी की तरफ नाम वापस किया काफी तो बिना फिर बेकार या हम सब आया नवाज पता क्या जब नवाज आना होगा इस पर चढ़ाइया तो देते हो समझ में सुन तो लिया थोड़ा तो देख लिया हम तो मांगे आने की करने के पुराने के लिए तो विज्ञान का एक प्रथम नियम है विज्ञान जो बातें सुनिए समझिए और समझना ही पड़ेगा आपके लिए प्रश्न मैंने बहुत ही हल्के चुने बहुत भारी सबको कॉलर माइक देना पड़ेगा अब रहने दो बहुत भारी जवाब जरा वो घूमते रहेंगे ना वायरलेस होगा तब वायरलेस कलर में था पास नहीं करेंगे एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको हम पास करेंगे लेकिन प्रारंभ यहाँ से होगा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा जवाब नहीं देंगे क्वेश्चन तो पांचों समय 5 राउंड पहला राउंड आपके साथ में हम और पहले में नहीं सारा केवल सुनिएगा समझने की कोशिश सवाल जवाब का समाप्त होना आपको 30 सेकंड जवाब सवाल समाप्त करिएगा तब आप उसके पास में होगा शायद बंद कर हो गया बड़ी रंगीन मिजाज है आपने हेलो सर हो जाएगा सवाल जरूरत से ज्यादा हल्का है इसलिए जरूरत से ज्यादा भारी सारा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसको दुनिया के बड़े बड़े नहीं सवाल ज्ञान का ऐसा प्रश्न है तो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट ज्यादा सही जवाब देते हैं साइंस वाले साहित्य वाले वाणिज्य वाले कलाकार
जो बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, उसको साइंस से कोई मतलब नहीं। लेकिन इस प्रश्न का ज्यादा सही जवाब वही है। विज्ञान पढ़ने वाले की प्रतिशत मात्रा बहुत कम है। इस सवाल का सही जवाब है अगला सवाल आपसे संबंधित है वाटर, जल। जल हम लोगों के शरीर में 70% पानी है। आपके शरीर में अलग अलग अंग हैं, कुल संख्या अनुसार 79 अंग हैं। मैं 4 अंग का नाम माइक दे दीजिए, मदद कीजिए माइक। बहुत सारा अंग है। समझ जाए कि शरीर के किस अंग में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। सवाल समझ लीजिए, आपके शरीर के 79 अंग हैं। सबसे ज्यादा पानी इस अंग में है। मैं बाकी के साइंस पढ़ने वालों ने कम सही जवाब दिया, आर्ट्स पढ़ने वालों ने ज्यादा सही जवाब दिया। अब आपका क्वेश्चन हो सेकंड के अंदर जवाब अंग का नाम फलाने अंग में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। ताली बजाओ, सही जवाब। हजार लड़कों में से एक सही जवाब देने वाला है। हजारों जगह सवाल पूछ सकते, हजारों जगह सवाल पूछ सकते। पानी सभी पीते हैं, पौधों में ज्यादा है, अंदर में कम। छोटा बच्चा को कम है, ज्यादा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। मेल्स के बॉडी सर थोड़ा माइक ऊपर करके दो। कम है और सबसे ज्यादा है। तो साइंस नहीं पढ़ा उसने ज्यादा सही जवाब दिया, तो उन विद्यार्थियों में चला गया जो साइंस पढ़ते सही जवाब। सर ये लाइव चला था, माइक ऊपर करके रखिए सर, नहीं तो वहां सुनाई नहीं देगा जिसके लिए आप कर रहे हैं प्रोग्राम। हाँ सर आपका सवाल इससे भी हल और 99% साइंस के विद्यार्थी इसमें गलत जवाब देते हैं। यह आंकड़ा इस छोटे से प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1% देता है। तो दूसरा सवाल है पदार्थ का नाम मैं वस्तु समान तो जगत दिखता है आपसे प्रश्न आधा जवाब मैं आपको देता हूँ। पदार्थ 3 प्रकार के पदार्थ 3 प्रकार के आपको तीनों का नाम very simple question साइंस की पढ़ाई में सबसे पहला चैप्टर पदार्थ है फिजिक्स में यही से शुरू होगा। आप बोलिए नहीं सही में बैठ कर बोलेंगे सही रहेगा। मीटर का मीटर वाइड क्या जवाब है आप मीटर वाइड जवाब सही ऐसे पूछा ही नहीं जा सकता, कैसे पूछा गया आपके टेस्ट के लिए मैं बताता हूं नमूना जांच आप सकता
सर ये तो सर को सेटिंग करा कर नहीं चल बेकार हो रहा है। जाके बोलिए ना सर। बीच में प्रोसीजर दिए चलिए हाँ ठीक है। हाँ भाई इधर बैठ जाइए। माइक का नीचे अरे भैया नीचे कर देना है खाली वही रहने दो। मेरे पास 20 किलो सोना है। बस नाम से युवा सोने का मात्रा बता रहा है कि वजन बता रहा है। इस तरह से मैं आपको एक मेरी रेट और आपको ये नहीं है भारत में पढ़ने वाले साइंस के विद्यार्थियों का स्तर क्या है, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या तो क्वेश्चन बात भी नहीं करेगा, मौका देखते हैं आपको नंबर नहीं मिलेगा। बोलिए तो मास वजन कितना होगा? 20 से 1 से गुना करेगा वह उसका वजन होगा। चेक करिए मैं चेक कर लिया राजी चेक करिए चेक कीजिए ना। नहीं है वॉल्यूम बढ़ेंगे उसमें वॉल्यूम ऊपर लेकर वॉल्यूम होगा इसमें मस्सी का वॉल्यूम होगा क्या हेलो 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 वॉल्यूम बढ़ेंगे होगी हेलो हेलो अब सही ये सही व्यवस्था है वो तो जान छूट गया सही यही चलेगा। समय के द्वारा नाम मिला समय में बनाना है और सिंपल सवाल
ये करता हूँ मैं जवाब देता हूँ। क्या समय में इसको नाप सकते हैं? दूरी बताना है लेकिन नापना है समय। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 8 मिनट 20 तो दूरी बता रहे हैं, दूरी समय में बता रहे हैं। Distance is measured in time in respect to light year. चलिए अब प्रार्थना कितना सवाल आ सवाल अच्छा है। सबने नाम सुना होगा एनिमेशन फिल्म, एनिमेशन फिल्म क्यों कहते हैं उसको एनिमेशन फिल्म? Why make animation film? कार्टून फिल्म भी करते हैं, उसमें कब चलेगा, टेबुल बात करेगा आपसे, मिकी माउस डोनाल्ड डक बड़ा तरह का खेल दिखाता है, ऐसा कोई बात होता है। उसका फिल्म का नाम है एनिमेशन फिल्म। उसका नाम हम एक लाइव के आपको देंगे 20 सेकंड के बाद। उसको एनिमेशन फिल्म क्यों कहा जाता है? और आजकल दुनिया भर में इसका डिमांड है। आप उसमें कैरियर चुन सकते हैं, कंप्यूटर सीख करके एनिमेशन फिल्म का बाजार उनका शाहरुख खान से 1000 गुना बढ़ा। सारे दुनिया में कार्टून फिल्म बन रहे हैं और लोगों की कमी है उसमें, अकलमंद और हुनरमंद नहीं। और आपने कार्टून फिल्म का नाम सुना? डोनाल्ड डक को देखा है, टेलीविजन पर देता है, हाँ छोटा भीम देता है, कोई आदमी तो नहीं छोटा। ऐसे फिल्म को एनिमेशन फिल्म का तो क्यों कहा जाता है? शाहरुख खान का कोई फिल्म है, उसको तो दूसरा फिल्म नहीं कहते, उसका नाम एनिमेशन फिल्म क्यों? नहीं एनिमेशन क्यों? नहीं आपका जवाब नहीं हो रहा। एनिमेशन फिल्म इस जो सप्ताह मनाया जा रहा है उसका एक पर्पस है साइंस इन एक्शन। लोगों के बीच इस बात का प्रचार करना कि विज्ञान केवल रॉकेट और मिसाइलें में नहीं है, हर जगह विज्ञान छिपा हुआ है। आपके शरीर में विज्ञान है, यहाँ विज्ञान है, तो इसको पॉपुलर करना है, लोग आम आसान में इसको समझ जाए, तो उद्देश्य है। तो कोई जवाब दे सकते हैं? जो जवाब दे सकते हैं हाथ उठाइए। तो माइक क्योंकि उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके 6D में दिखाया जाता है, 6 डायमेंशन ग्राफिकली। ग्राफ माने कितना फोटो भी तो लिखना है कैमरा से। ठीक है, कोशिश किया थोड़ा हल्का सा छोटा सा साइज है। जैसे इतना बड़ा पंखा है तो उसमें लटकाने के लिए वो पिन लगाना पड़ता है, उसके बिना उसके गिरने का खतरा। तो ये पिन है, उसका पिन है। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले जानते हो कि कहीं कुछ कंप्यूटर में आपको प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत आएगा हेल्प, एक आ जाएगा हो जाएगा कि हेल्प कर दिया। अब पूछेगा आपसे कि एनिमेट करके दिखा दें, और पूछेगा इस सॉल्यूशन का हल एनिमेट करके हम आपको दिखा दें, तो एनिमेट करके दिखा दें। एनिमेट आप समझिएगा, नहीं समझिएगा तो बाकी आदमी क्या बताता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। एनिमेट का शाब्दिक अर्थ होता है सजीव,
एनिमल में भी जानवर होता है। यहाँ हमने एनिमेट इनएनिमेट दो दुनिया और दोनों के बीच में अब तीसरी दुनिया तो मरे हुए की दुनिया अब बहुत खूबसूरत सजीव और निर्जीव के बीच जो एक बड़ी दुनिया है वह मूर्तों की दुनिया है। तो लेकिन इतनी आवश्यक, इतना प्यारा, इतना अच्छा केवल खराब नहीं। आपका पैर में जो जूता है आपके खाए जो खाना रखा हुआ चावल दाल सब्जी सबको घूस घूस के मार के बराम निकाल के खा वो डेढ़ वर्ष है, वह मरी हुई दुनिया है और आपको प्राण देता है। एनिमेशन से मुझको क्या कहा कि उसको सजीव जैसा में बात करता है, सवाल करता है, छोटा भाई लड्डू खाता है, तो ये कैसे हो गया? has been injected by trick photography. Therefore, it is known as animation film. कार्टून फिल्म भी करते हैं, लेकिन हमारे कई सभी बच्चे एक बार कभी कार्टून नहीं। तो वही बात है, आप सुनते तो हैं, समझते नहीं। वह है कार्टन, जिसमें समान आपका उसको कार्टन कहते हैं। यह है कार्टून जिसमें व्यंग भी बनता है। चलिए, पांचों टीम में किसी टीम ने आने स्कोर किया, कोई ऐसा टीम हुआ ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। टीम ए फर्स्ट राउंड के बाद टीम ए का स्कोर है 5 मार्क्स, टीम बी का स्कोर 0 मार्क्स, टीम सी 0 मार्क्स, टीम डी 5 मार्क्स और टीम ई 0 मार्क्स। कम से कम इतना तो कहोगे कि सवाल में बहुत भाग नहीं हुआ, लेकिन आप गलती कर रहे हैं। तो साइंस अगर पढ़ते हैं अपने देश में अंग्रेजों ने जब अपना राज्य स्थापित कर लिया, इंडिया कंपनी के बाद तो उसको नौकर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, उसको इंजीनियर कहते हैं, उसको क्लर्क कहते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम लाया तो हमको डॉक्टर इंजीनियर भी करते, टीम बनाया। अंग्रेज विज्ञान के बदौलत सारी दुनिया पर टीम बनाई, टीम भेजा उसने कि जाओ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर। पूरा इंडिया में घूमा और पूरे जगह से 10 से 15 लड़के को उसने और स्टडी ऑफ साइंस एंड मेडिकल इंजीनियर रिटन टेस्ट किया, उसमें से लिखा आया आप बचाओ आप आपको तो बात ये हो गया वाली परीक्षा में आपको डॉक्टर बनाएंगे आपको, तो आपका सेंस एक्यूरेट होना चाहिए, आप परफेक्ट होना चाहिए। चलिए ताकि जो मैं करूंगा सबको आगे रिजल्ट करना है। मैं आपके सामने कुछ करूंगा, आप देखिए उसको, अब देखने के बाद आइए सब आपने रिपीट कीजिए, तब हम समझेंगे आप कहाँ कंसंट्रेटेड है। किया उसने नाले का कचरा और only fire this is it। जब वो पहला लाइन से आते हैं नहीं पढ़े, हम जस्ट आइडिया ही उसमें से सिर्फ 3 पास, तो पहला है दूसरा ऐसे को प्रयोग किया। तब तक क्या था कि इस उंगली पर दुआता था
Aí são liquid tipo. Do आता था भी समझ लो, जो आया नहीं समझ लो, और अपना ठीक से समझ गए, तो क्या हुआ? तो पहले कब क्या आपको यहाँ को ठीक करके रखो, सारा बड़ा पेशेंट आएगा, हम पूरा पेशेंट आएगा, उसमें करे तो आधा मर जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। आज भी बहुत पेशेंट कहते हैं और एक देखा चला जाता है, नहीं बाहर होगा, तो पेशेंट तो मर जाएगा। तो इनके लिए जो सवाल आ रहा है साइंस का ही सवाल आ रहा है आपसे, क्या बिना किसी उपकरण के इस्तेमाल दिन में अभी को पहलिया आसमान के तारों को देखा बिना किसी उपकरण का इस्तेमाल करें आप किस सेकंड समाज में कीजिएगा थोड़ा ये देखो हाँ एक मिनट बताइएगा उसको तो माइनस करते हैं तो वैसे भी दिन में तारे कितना मुहावरा है सवाल भाई भाई पूछेंगे तो वैसे ही दिन में तारा दिखता है नहीं फनी दस्तार में आप उसके अलावा आपको देखिए तो सवाल नहीं हो क्या मैंने पूछा दिन में तारा the question includes in that sun is not physical पूरा सुना दिन में बहुत आसान है it's very hot हमने फिर कोई इसका इस्तेमाल करता हल्का सा तार तो नहीं हो तो प्रश्न को यही खत्म करते हैं आप जवाब दीजिए अपना जवाब नहीं है गलत है क्या होता है मैंने नहीं दिया उत्तर लेकिन जवाब कुछ करना है पानी के गहरे कुएं में खली को बहुत देखिए सब आना दस्ता बस यही है लेकिन दुनिया भर के आकाश विज्ञानी इस बात से चिंतित हैं जब से दुनिया में कोरोना शुरू हुआ है आसमान में तारों की संख्या अप्रत्याशित रूप से कम दिखाई पड़ रही है अगर आप समाधि जरा देखिए बच्चा कितने तारे आपको बहुत कम सारी दुनिया का जिंदगी खोल रहा है कहाँ आ गए चलिए हम अगले पूछे नेक्स्ट आप है The question is common and simple. दरगाह के काम की चीज है संसार के किसी भी उम्र के किसी भी सेक्स के किसी भी प्रोफेशन के स्वस्थ मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर क्या ऐसे होना के जवाब सेकंड कॉल चाहे समय क्यों देता है जरा ठीक से अभी भी गलती हो रही है सवाल यही है संसार में कोई भी आदमी है अगर स्वस्थ है तो हर व्यक्ति का वही टेम्परेचर होगा और साइंस टेम्परेचर ठीक नहीं मानता है इसको नहीं मानता ओरल और बतिए जानता मुर्गी का टेम्परेचर उसको लेना है तो लेने गाय का टेम्परेचर लेना है तो वहां ये नहीं कर और ये वो भाई टेम्परेचर आई मीन योर ओरल टेम्परेचर नॉर्मल आदमी का क्या होता है ना ये भाई का कोई दोष अरे साइंटिस्ट रिसर्च आपने थर्मामीटर से जाता है करके अपना रुका उसमें क्या नहीं फिर से सवाल क्या सेल्सियस से जाता है शिक्षक होंगे वो तो चाहिए सर फॉरेनहाइट नहीं फॉरेनहाइट सही जवाब लगभग नहीं करे नहीं हम लोग सुनो सवाल का एक खत्म हो रहा है
टेम्परेचर था। तो हम लोग जिस थर्मोमीटर लगाते हैं वो सेल्सियस नहीं है, वो फारेनहाइट, और उसमें एक जगह तीर का चिन्ह लगा हुआ। थर्मोमीटर देखिएगा 94 से शुरू हो जाएगा, 107 आपसे ऊपर उसमें स्केल नहीं, क्योंकि आप टेम्परेचर के बाद ऊपर है। और 94 से हम आपको बात बिल्कुल नहीं, हमें तो डिस्क्वालीफाई होकर चले। तो उसमें एक एरो लगा हुआ, अगर उस एरो पर आ रहा है उससे अगर एक पॉइंट बढ़ गया तो आपको गड़बड़, नीचे घट गया होगा, डॉक्टर के यहाँ जरूर जाइए, हल्का ये क्या है, इसलिए मैंने सवाल को रखा। व्हाट इज दैट नॉर्मल टेम्परेचर इन विच यू मेजर? सवाल का नंबर नहीं मिलेगा, कोशिश करेगा, बोलो। तुम्हारा 98.6 फॉर्मेट बोल होता है, उसमें से किसी का सब जवाब गलत होगा, तो मारे जाइए। 98.4 वही पर क्यों लगा? The normal temperature, oral temperature of a healthy man, whosoever it is, किसी भी देश का हो, किसी भी उम्र का हो, 98.4 पर होना है। अगर 98.5 है तो आप चेकअप करवाइए, उसको सस्ते में नहीं छोड़िए। और 98.3 है, 3 बार जांचिए, 3 बार में आपको कम मिल रहा है, तो हल्के में तो किस सवाल का है आप तुम्हारे पास? यह हो गया तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर लिंक देना भूल साइंस में शब्द है LTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब उसका नाम बदलते हो गया है STP। 1982 से इसको इंटरनेशनल यूनियन ने करेक्ट कर इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सवाल आपसे ये है, नॉर्मल टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, नॉर्मल प्रेशर का वैल्यू क्या है? आप किसी भी फिजिक्स के सवाल में करिएगा, NPT एक्सिस नॉर्मल टेम्परेचर, विज्ञान उसको मान करके गैस, सॉलिड, लिक्विड सब पर तरह का निशान, तो किस टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर का और किस प्रेशर को नॉर्मल प्रेशर का? कहीं प्रेशर कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम है, कहीं ज्यादा है। लेकिन साइंस का एक्सपेरिमेंट करना है तो एक बेस लाइन को करना है, इस टेम्परेचर पर हम मानिए कुत्ता गाँव इतना टेम्परेचर ले आए, कितना बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ा तो कितना हो गया, लेकिन नॉर्मल NPT, what is the value of normal temperature? हम आपके तरफ आगे बोलते, ठीक है, बोलो सवाल पूछिए, तुम्हारा ही सवाल है, सवाल तुम्हारा है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? किसको करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, किसको करते हैं नॉर्मल? बाकी हो गया समय का, अच्छा यही मांग रहे हैं इनके लिए नया सवाल। 0 degree normal temperature and 1 atmospheric pressure is normal pressure. 82 के बाद चेंज हुआ है, आगे 0 से ऊपर सर लिंक भेज दी, तो 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री पकड़ लेकर जाम का डिस्टर्ब करके कर दो। अब आ गया मैसेज कर दो जरूर, हमें मैसेज मिलेंगे देखिए जैसे सब लोग के चलते रहते, यही के लिए पूछ रहे थे, यही
एक शब्द है साइंस में लुब्रिकेंट। इंजन में तेल डालते हैं, पहले फोन किया था, हम जब भी फ्री हुआ उसको तेल डाल करके गीला लुब्रिकेंट। आपको सॉलिड लुब्रिकेंट का नाम बताओ। यू हैव टू नेम। हम लोग जानते हैं तेल लिक्विड है, चक्का जाम हो गया है तो उसमें मोबिल का डाल दीजिए, चक्का चल जाएगा। सॉलिड लुब्रिकेंट का नाम बताना। हम बताएं आपको, एगो को नहीं भेजिएगा, किसी को भेज दीजिएगा, एक लोग को नहीं भेजिएगा। नहीं सर को बता भी दीजिएगा, ऐसे भी नहीं। प्रिंसिपल सर को मेल कर दीजिए आप, मेल करने के सिर्फ ओनली फॉर उसमें स्ट्रिक्ट क्लिक कर दीजिए, इसमें ओनली फॉर एड फॉर इनोवेशन से ओनली फॉर प्रिंसिपल एंड फैकल्टी मेंबर्स, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो मेल हम आपको दे दिए हैं, देख लीजिए। हाँ सर जी को बता दीजिएगा। नंबर नहीं है, इसलिए 24 है। ताली बजा दीजिए। और डायमंड वैसे तो खराब है, लेकिन सॉलिड लुब्रिकेंट एक मेटल भी इस्तेमाल होता है, मॉलिक्यूल उसका भी इस्तेमाल होता है। सॉलिड है। आगे चलो, अब सवाल आपसे। सवाल बहुत ही हल्का है, लेकिन जवाब होश में लीजिए। जिनसे सवाल है, इस दुनिया में, इस कमरे में ऐसा क्या है तो वेटलेस है और वुडलेस। आई रिपीट, ऐसे पक्ष से जवाब दीजिएगा तो फिर गलतियां पड़ेगी। इस कमरे में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या है तो जगह नहीं सकता और उसका कुछ वजन भी नहीं, वजन नहीं। वो यहाँ है, बाहर भी है, पूरे आसमान में है। वेटलेस एंड फॉर्मूलेस कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड। करता सब है, समझने की चेष्टा करता नहीं है तो साइंस को चरमराते हैं। जवाब दीजिए, समय है, चलो। जवाब आ रहा है ऑक्सीजन। बताओ, अगर आपको हवा करना है तो जवाब करो, ऑक्सीजन करना है तो अभी जवाब करो। अब तुम्हारा संयोग है, तुमसे पूछते इसमें लाइट है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, साउंड है, सब है, हर जगह से कहा। ये क्या रोशनी आपको कुर्सी से हटा रहा नहीं था, ये जगह नहीं सकता। आपके शरीर में प्राण नहीं और आपका फीलिंग्स है, कुछ देर के बाद विकसित करते हैं। भगवान है, अब से खाइए की तरफ तो उससे पूछिए अगर तुमको बुद्धि है ना, जरा बुद्धि दिखाओ, तुमको कितना है पैसा, बुद्धि दिखा दो, हमको भगवान दिखा दो। अगला सवाल करो, फिर आ गया संजोग से हल्का ही सवाल बाकी है। सवाल वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है। यहाँ तो समझ रहे हैं, तुमको समझ के जवाब दो। What is difference between atmosphere and environment? जवाब ठीक से सुन लीजिए। What is difference between atmosphere and environment? सेकंड राउंड के बाद जो स्कोर है
Oh, second round class 2. Team A 5 marks, Team B 0 marks, Team C 0 marks, Team D 5 marks, Team D 0 marks. हाँ, क्योंकि दिल्ली से आप मोट रोड से नहीं आते, तो 3 राउंड में खर्चा हो जाता है। ये 3 राउंड और में जो बात करता है, एक गाना को देखने की जरूरत नहीं है, 50 गाना देख लिया बात कर क्या होना है। अब कितना जवाब अरे आपको एक जवाब सकते हैं, परफेक्ट जवाब नहीं। जवाब सुनिए एक मौका आपको और देते हैं, 1/4 नंबर का 8, 1/4 नंबर 5 से 1 नंबर 108 और इसको मैं पास कर दूंगा। ये आप गलती तीसरा राउंड नहीं कर, आपको एक मौका नंबर मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है तीसरा राउंड कर रहा है, इसमें मैं पास समय कम है। This is atmosphere, this is environment. दूसरा ट्राई नहीं भरपाई नहीं करना। If you can ignore, you can play. Otherwise, don't take left. बोलोगे उत्तर दोबारा नहीं बताएंगे, atmosphere के पास not good. आपका जवाब सही जवाब से नहीं आ रहा, सिंपल जवाब है। वो पीछे बैठा हुआ विद्यार्थी में से कोई जवाब दे तो सही जवाब देगा, मैं पर्सनल 100 रुपया इनाम दूंगा। अरे सही बात विद्यार्थी से आना चाहिए, 1 लाख में जवाब नहीं क्या रामायण का सुना क्या सीता कितनी है ऐसा होता है तब आपको 1 लाख में जवाब है। Air around us is atmosphere, everything around us is around. और नहीं ना मानता जबरदस्ती विधानसभा नहीं धारा उठाना यहाँ नहीं करता। सारे श्रोता बोल रहे हैं कि आप बात एक करके बात मतलब देने के लिए राजी हुए तो भी राजी नहीं, सीधे बोलिए जय सवाल इज नॉट करेक्ट आंसर। Correct answer is air around us. Everything around us. सजीव हो, निर्जीव हो, जंगल हो, और कुछ भी है चलिए आगे सवाल हो गया ना। ओके, एक आपसे हम उस क्वेश्चन को पास कर देते ना, जवाब तो नहीं दे सकते, सब आपके तुम्हारा तब तो हो गया। आप उसको ना और उसको बोले तो चूंकि टाई हो गया है, अगर आपका प्रधानमंत्री है डिसिप्लिन नहीं है देखने दीजिए, पहले अनंत गुजरात में होता है टीचर का गुस्सा सहेगा नहीं। हम मोदी जी को सुनना चाहिए,
चलिए अंतिम राउंड करके फाइनल रिजल्ट निकाल देना है। मैथमेटिक्स है कुछ मौका है। हमारे देश में एक वैज्ञानिक हुए थे रामानुजन, वह कम उम्र में टीबी हो गया। इंग्लैंड का जो हेड था तो हॉस्पिटल में पौने 5 तक चलेगा। 5 मिनट समय आधा पौन घंटा को लेके नुक्कड़ नाटक 1729। जब आपको रामायण किया तो विश्व में कोई दे नहीं सकता, आप तक कटा भी नहीं। आप दूसरा नंबर वो नहीं किया, इसलिए उस नंबर का नाम ही हो गया रामानुजन। 1729 जवाब क्या दिया, 1 सेकंड के अंदर जवाब क्या हुआ? नो सर, दिस इज वेरी इतना इंटरेस्टिंग नंबर नहीं है राज्य because it can be represented by some total of each of two different numbers. चाय पीजिए बैठे राज्य उसका सलूशन निकाल दिया। जवाब दिया 1729 बराबर है 1 क्यूब प्लस 12 नहीं 1729 बराबर है डालेंगे सीधे आ जाएगा। उससे करा कि बीच में बंद हो जाता है बोला वो आ जाए उसमें वहाँ नहीं जाएगा तो जाएगा। उसमें 18 के आसपास ठीक है यही यहाँ के लिए बोलो इधर हो गया। वो लड़का भी है बाकी हम खुद क्या ऑफिस में देते करने केक का जमा करते जमा है मिल जाएगा कंप्यूटर लैंग्वेज का अल्फाबेट क्या बन जाता सब बन तो बोले तो कब जा करके बात करते हम तो हमारे 1 तारीख बाद फ्री थे। जिनसे सवाल है कि हिंदी अल्फाबेट में है देवनागरी लिपि, अंग्रेजी में रोमन लिपि, तो कंप्यूटर की भाषा हमारी आपको तो नहीं है। हम आप उसको बोलते हैं कि और नरेंद्र को आपके आवाज को चेंज करता है आपकी भाषा में नरेंद्र बन जाता है, तो उसकी भाषा का वर्तमान जैसे हमारे वर्तमान में बहुत था रोमन में एबीसीडी, उसके वर्तमान के अक्षर क्या है? ये प्रोग्राम है बेटा इधर कंप्यूटर में क्या 01
उसके बाद भी नहीं समझेगा। अल्लाह को कब दिए तो सुन लिया, बात को बोल दिया, नहीं हुआ तो जो भी किया उससे भक्त ही है जो कदे रखते ही है, जहाँ फैसला करना है उससे क्या होगा। चलिए हम आगे हम बात जा रहा है सर इसमें। चलिए आपसे चलना ठीक है। दूसरा सवाल है कि इसका नियम किसी चीज को गरम कीजिएगा तो ठंडा कीजिएगा तो सिकुड़ेगा। लाइव एडिट नहीं होता है। इसका एक अपवाद ऑडियो बंद कर दें तो फिजिक्स के नियम नहीं उसको गरम होगा ठंडा कीजिएगा। There is only one exception. ऐसा बात हो रहा है अनम्यूट कर दे रहे हैं इसी से ठंडा हो रहा है। चलिए होगा उसको हम कर देंगे समय समय देखिए नहीं आपसे होगा नहीं आपसे होगा किसी से जवाब नहीं और तुम्हारा क्या हमें बजट से रखना है। ये सवाल चला जाता है इतना इम्पोर्टेंट है चलो हर पढ़े लिखे को समझना चाहिए। वो हम हटा देंगे हम जो हट जाएगा जाएगा नहीं जाएगा अभी जाएगा बाद में कर लेगा। और मैंने हिंट दे दिया संसार के एक एक व्यक्ति को जवाब आना चाहिए तुम भी करते हो क्योंकि वह मानना था मुझे ऐसे देखना your scheme type law physics 11 मिनट आपका कैमरा नमक there's no problem अब ये एक सवाल ये कितना पूरा मेडिकल साइंस किसी को पूछना है ताकि दवाई में हमें ऐसा आंकड़ा आ रहा है कि हम मनुष्य अपना इतना दूर के लिए पूरा खर्च करते हैं तो क्या पूरे शरीर के लिए खर्च ये वर्ल्ड का आंकड़ा सवाल किसका भी नहीं था। चलो अगला सवाल हो गया आखिरी बात भी करने का तमीज नहीं है सर। क्या लग रहा है ऐसा आदमी सब मत कर चलो फिर आया हाँ this is a very very important question follow not follow ये करते हैं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं गंगा का पानी डिकम्पोज नहीं करता अच्छा दुकाना से ले अल्लाह साहब पूरा माथा लेकिन गर्म ना दे रहे और यही गुण आगे जमजम के पानी में भी वहाँ जो जाते हैं जमजम का लाते हैं तो जब अपने घर में बरसों रखते हैं और वो कंपोज नहीं करता तो इससे सवाल है
ऐसा क्या है जो गंगा का पानी निकल नहीं कर रहा? कोई गलती हो, निकलना पानी से निकल जाता है। अब बोलिए नहीं नहीं ट्राई करने के लिए आपने बात की वो भी नहीं है, जो है वो तुम जानता है लेकिन कौन नहीं करता। आप क्या करिए, इधर चलो ना माथा लगाया, हम देश ने माथा लगाया, क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो रीजन तुमको दे मौका है, तुमको रिजल्ट किया, तुम समय मत उसका वही जवाब है जो 2 साल में सारी दुनिया में तबाह किया हुआ वायरस। इट इज वायरस बैक्टीरियोफेज उसका नाम है, वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। वो संसार के सभी बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। और कोरोना ने वायरस ने इतना बीमारी किया है आपको, उससे 100 गुना मदद की है इंसान के उसने जिंदा रहने में। संसार की जितनी नदियां हैं, जितने समुद्र हैं, उसके पानी का वायरस ने धूप और कोरोना से अब धूप से उसको डालू मत कीजिए, उससे बड़ी मदद आप क्यों कर रहा है? अगर वे वायरस समाप्त हो जाए तो क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ द वर्ल्ड में खत्म हो जाए। अपने आप को चलिए बात से What is difference between hypersonic and supersonic aeroplane? कहता है कि ये सुपरसोनिक है और ये दो है। हाइपरसोनिक कोशिश करो समझ कितना पता है। अब खर्चा हो सकता है तो इसको अपने 4 राउंड के बाद से नेक्स्ट कंपटीशन के जो विनर है टीम ए टीम बी रनर्स अप है और विनर टीम ए। केशव जी था 4-5 को ऑप्शन दिए नहीं दिए हुआ था। अरे 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 सर आराम से
मैं किधर पड़ा? बस सभी प्रतिभागीगण, हमारे जजेस, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्विज कंपटीशन, इट्स टाइम फॉर आप स्थानीय कलाकार द्वारा विज्ञान संचालक लोकेन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन है। आप सब अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिया। आप देखो जागरूकता कार्यक्रम। नहीं लास्ट Why then, in the twilight of his life, does he look back now? तीन को लगा दीजिए आप। The young Raman was curious by nature. He wanted to know more about everything that he saw and heard. For the rest of his life, this curiosity, combined with an inherent love for nature, drove him to study her many facets. Even at the age of 82, he was exploring new vistas as actively as he did as a child. For him, science had always been the key to understanding the workings of the world around him. Fascinated, he mastered such classics as Ganot's physics. There is a story that late one night, despite high fever, he refused to sleep till his father, a science lecturer, fetched a Leyden jar from his college and showed him how it worked. See, a large amount of charge is accumulated at the bottom. You connect this to the electrode, it gets discharged. Apriya, there's a spark. Raman was born near Tiruchirappalli in Tamil Nadu in 1888. From there the family moved to the coastal town of Visakhapatnam when he was 4 years old. The sun, the sea, nature in all its primordial beauty here must have first stirred the young boy. He began to ask questions. His father encouraged his curiosity.
As Raman's thirst for knowledge grew, he was spurred to take science up seriously in later years. When light falls normally on a rectangular aperture, one gets a series of dark and bright bands symmetrically arranged around the slit's image. What if I hold the aperture inclined to the incident light? The diffraction bands are sensibly symmetrical when the incidence is moderate and asymmetrical when it approaches 90 degrees. The minima in this case are of course given by the usual equation. A cos theta minus cos phi is equal to plus minus n lambda. What are you doing now? Connected. म्यूजिक बजाएंगे हाँ बजाएंगे अभी इनसे बात करेंगे because by the job is not stable.
हाँ ऑन होगा अंदर वाला वो दोनों बंद कर देता आज हमारे पहले प्रस्तुति आइए देखते हैं क्या विचार हम सबको तैयार है ये नाटक मधुर संगीत मधुरता के क्या लिखती है हम करती है हम लोग आखिर इनको तो करती है कि ऐसे नहीं हो लेकिन इतने मधुरता के नहीं करेगा हम और तुम ना तो कहीं माधुर्य में खड़ा हो बेटा कोई देखिए बनी कान में पड़े तो मुंडा हम सब बनी के ना प्रयोग करें जब मूल प्रकृति में बजाय खाने अगले दिन सबके दो नाम आए यही ध्वनि के ऊपर मत करना यही ठंडा के ऊपर मत करना तो चलो देखिए शायद नाटक हो
लोग तो बता तो देते लोग तो पहली और न जाने की तो हमरा सबको कहते जल्दी है पर गंतव्य पे पहुंचे पर अंकाले अंतर छोड़े से खाली शंका की एक तो उत्तर करने से नहीं था अरे जल्दी तो और एक तकलीफ देना शुरू कर दिया हाँ कहाँ तक प्रसन्नता में तरह जगह से नहीं काटा मुदा तुम लोग तो सोचे चाहिए कि हमारी प्रसन्नता है आनंद ये तो समाधान निश्चय है हर बेर हर चीज के लिए रिस्क करते हैं समाज के अपने सोचो करते ठीक है पुनः CLC में लगता है उसको मिलता है DOT मिलता है DOT TLC मिलता है भी सेट
ईश्वर तो स्वयं कहे तो मनुष्य के कार्य से मनुष्य सोचो अहाँ के पूजा करते केकरो घर के बात हो केकरो बाल बच्चा केकरो माथा में दुखा केकरो ब्रेन हेमरेज करा दे फायदा है फायदा है और ये मतलब हम सब के माध्यम गुना ये अरे है मधुर हो आवाज मधुर हो साथ बंद कर की नहीं ये को है हो गया बंद कर दो ना फिर लाइव नहीं चाहिए लाइव डे ऑफ फिल्मिंग खत्म होगा डे ऑफ फिल्मिंग होगा सेंटर से बोल दीजिए सेंटर से मैडम बोल दीजिए चल रहा है ये चल रहा है एक मिनट एक इसको सेंटर कर दीजिए इसको और घिसकाना पड़ेगा ना पोडियम घिसका दीजिएगा सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आज दूसरा सत्र समाप्त होता है। कल फिर हम 10 बजे तीसरे दिन की शुरुआत करेंगे। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता कार्यक्रम संघ आजुक सत्रक समाप्ति के घोषणा होते कल हम सब पुनः 10 बजे एते तेसर दिन के कार्यक्रम में उपस्थित है अहाँ सब आदमी ससमय आबि जाउ। धन्यवाद। एहि कार्यक्रम में ज्वाइनिंग टाइम है 9:45 आ कार्यक्रम जे है 10 बजे से एकदम टाइमली शुरू हो जाए।